As per our online session startups, આપણે હંમેશા initial phase માં we request each and every one of you to go unmute and start your video. And if you want, we would understand that there is some issue with the video camera or network. So मैसेज में आप नहीं लिखोगे तो चलेगा. बाकी सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपना वीडियो ऑन कर दीजिए फटाफट एंड प्लीज गो अनम्यूट. थैंक यू ध्रुव, थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू श्रेयस, थैंक यू गौरव. जितने भी लोग हैं प्लीज अपने वीडियो ऑन कर दीजिए. और थैंक यू दीप भाई. Fair. Okay. So, see, as you all know, we generally begin with our 7-day victory sharing. Now, आज हम लोग कुछ यूनिक करने वाले हैं. आज हम थोड़ा सा कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं. So, आपको वही 7-day विक्ट्री शेयर करना है या लास्ट 2-3-4 दिन में क्या आपने डिसाइड किया था और क्या कर पाए वही शेयर करना है. बट ओनली थिंग इज दैट आप लोगों को थोड़ा सा अलग वे में आज करना है. सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सो एग्जांपल ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी इच्छा तो बहुत थी कि मैं इस हफ्ते ये चीजें कर पाता, पर हुई नहीं. और अब मुझे लग रहा है कि मुझे इन चीजों को, इन टास्क को कंप्लीट करना है. तो आप अपना जो 7 डे या 4 डे का विक्ट्री है वो किसी ना किसी मूवी की एनालॉजी दे करके शेयर करोगे. लाइक मैंने जैसे अभी बोला कि मुझे बहुत कुछ करना था पर मैं नहीं कर पाया. तो अगर मुझसे कोई पूछता है, शनि पूछता है या दीप भाई पूछते हैं कि अंकित हाउ वाज योर लास्ट 4 days और हाउ वाज योर लास्ट 7 days, so I would say सर वो दिल चाहता है जैसा रहा. कि दिल चाहता बहुत है पर हो नहीं पाया. या तो someone would say कि somehow I was under very much pressure and I thought कि let me kind of release myself and do whatever I want to. तो मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के इसके पीछे लग गया, either on a personal front or a professional front. और मैंने पूरा एंजॉय किया इस वीक को, अचीव भी बहुत किया. तो मैं कहूँगा माई दिस वीक वाज लाइक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. एंड उसके बाद देन यू हैव टू से व्हाट यू डिड. सो इस तरीके से मतलब शोले, कुछ भी नाम दे सकते हो, राम तेरी गंगा मैली, any name of any movie which resembles your last week or last 4 days, and let's try to be as funny, as creative as possible, and let us see हम कैसे कर सकते हैं. It's not only restricted to हिंदी movies. आप गुजराती या तो इंग्लिश मूवी भी बोल सकते हो सकता है. अगर हमें उसका पता नहीं है तो आपको अपनी वीक का और मूवी का दोनों का कंटेक्स्ट समझाना पड़ेगा. But let's try and do this. I think it'll be great fun. So shall we begin like that? Have you all understood what is to be done? समझ गए हो ना? अच्छा, good. गौरव अभी से हंस रहा है, उसको 2-3 मूवी के नाम याद आ गए. ठीक है. So who will go first? I'll go. हाँ, चलो आकांक्षा. So my movie is Mission Impossible. Because, the tasks that I select, I always write down are too heavy for me. So I think my tasks are always like Mission Impossible and they never get achieved 100%. So that is the way it is. So okay. Yeah, so I could achieve around 40-50% of what, 50% I think, yes, of what was this thing. And I would like to say that exercise that was given last time also I tried to do, not to do and yes to do and must to do. So that also helped me. So that is super.
So, Akanksha, see, generally, whenever we are meeting in PDPU mentoring program, we are here to learn, right? So, with a very um, uh, curious mindset, I would like to share, or I would like to request you that if you can be a little bit more precise and if you can be a little bit give detail as to कि जैसे yes to do, must to do, not to do, इसने इन चीजों ने आपको हेल्प की, बट कैसे, अगर वो आप बता पाओ तो that would be a point of learning for all of us. Yeah, so जैसे not to do जो है, so I have this habit of going through the news or current events, so it becomes more frequent than necessary. So that it so back of the mind में जब भी हम लोग लिखते हैं तो वो ऐसे at the back of the mind रहता है कि ये not to do में से है, so then वो reduce हो जाता है उसका frequency, so that way it helps. और मस्ट टू डू और यस टू डू में, मस्ट टू डू में तो मोस्टली यही था कि देयर वाज वन डेडलाइन, लाइक आई हैड टू गिव वन कोटेशन टू वन कस्टमर, तो वो मस्ट टू डू में था. और यस टू डू में जो भी मुझे डे का जो लिखना है वो दैट आई यूज्ड टू राइट डाउन, सो दैट मोस्टली मींस मुझे हेल्प एंड टीडी में ज्यादा हुआ है. और ये दोनों में तो जो लोग गोल्स लिखते हैं रोज के, तो एटलीस्ट डेली एक ट्रैक रहता है वैसा, सो आई कुड डू इट फॉर अनदर 1 or 2 days only, not much, but still it helped. Yeah, and I believe, Akanksha, you could very specifically understand the difference between what should fall under yes to do and what should fall under must to do, because Payank sir ने last time बहुत specific and in depth समय बिताया था उसके ऊपर कि जनरली हम कहाँ गलती करते हैं. मस्ट टू, जो यस टू डू में आना चाहिए वो मस्ट टू डू में लिखते हैं, एंड देन आवर एंटायर वीक और आवर एंटायर मंथ और आवर एंटायर थिंग goes for a toss, right? So I hope you must have considered that. Yeah, so I considered it, लेकिन इतना I think I will need some practice for वो see, while you were sharing this ना, आपके facial expressions और body language से मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि आपको बेनिफिट नॉट टू डू ने किया है. यस टू डू और मस्ट टू डू भी उतना ही कर सकता था अगर आपने उसको पूरी तरीके से समझ के लिखा होता. तो ये मैं रीड कर पाया आपके फेशियल एक्सप्रेशन से. आप मुझे पोस्टल टिकट से ज्यादा बड़े नहीं दिख रहे हो, फिर भी मैं ये रीड कर पाया. ये मैं बहुत ही कुछ चीजों को दिमाग में रख करके मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूँ. तो जब मेरा सेशन आएगा तो हम इस पे बात करेंगे. या सो गुड, वेरी गुड आकांक्षा, बट आवर कॉम्प्लीमेंट्स टू यू. You know that there are few startups, there are few people, let me say, rather than startups, there are few people, few members in which we are being able to see considerable progress. So we are very happy for all of you and our compliments to each one of you. Chale, who will go next? Acha, Akanksha, you choose who should be speaking next. I just saw Divya Raj, so maybe he can. Yeah, so Divya Raj, yeah, you can go next. दिव्य राज, आप थोड़ा लेट ज्वाइन हुए हो, तो आकांक्षा आपको उनको समझाना पड़ेगा कि 7-day विक्ट्री या 4-day विक्ट्री कैसे शेयर करना है. So you know or you don't know, so it is, you have to actually choose the name of a movie which will represent what you have done. For example, I chose the name of Mission Impossible because मेरे टास्क जो थे वो बहुत ज्यादा थे, तो वो हो नहीं पाए, so it is like a Mission Impossible. And सर ने 2 एग्जांपल्स दिए हैं, लाइक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा या दिल चाहता है. So if you have you became carefree and you chose what you wanted to do, तो उसमें आप चूज कर सकते हो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. मतलब ये चॉइसेस मैं नहीं दे रही हूँ, तुमको खुद को चूज करना है. ये एग्जांपल्स हैं इस तरह. So Divyaraj, you got it? Sir, after let someone speak, then after I will go. Okay. So Divyaraj, you only choose who should go next. उसके बाद तो आपकी बारी आने ही वाली है. श्रेयस भाई. Yeah. So Shreyas, are you ready? Hello. Yeah, go ahead.
Sir, the week was like fast and furious. आया गया पता नहीं चला कि क्या हुआ. Superb. Okay. सैटरडे को yes to do, must to do, not to do लिखा. हाँ. आई ब्लिंक किया और आ गया वेडनेसडे. Okay. सही बात है. Superb. Very honest. Very honest. Yes. You know. So sometimes, see, I tell you, sometimes, you know, we have to be ready and we have to be gentle with ourselves, fair with ourselves, कि ऐसे भी होता है. And if this happens, you know, don't take any punitive actions or give punitive command to yourself, but take it easy. कि भाई ठीक है, चलो, I have to, you know, cover the gap or cover whatever is left. बट अपने आप को उसके लिए सजा मत देना कि भाई ये कैसे ऐसे हो ही कैसे सकता है, मुझे तो हर वीक जो लिखा है वही अकम्प्लिश करना है, यही करना है. सो डोंट गिव दैट बर्डन टू योरसेल्फ, as very rightly and honestly shared by श्रेयस. या सो दिव्यराज, अब आप रेडी हो? Yes, sir. Yes, sir. या दिव्यराज, गो अहेड. And one ground rule is that everybody has to be as funny and as open as they can, because हमको ये 20 मिनट को आज बहुत enjoy करना है. Okay, sir. Sir, it was like कि मतलब मैं जो कुछ कर रहा था उस पे नेक्स्ट, मतलब जो हमारी सब चल रहा था प्रोसेस, उसमें नेक्स्ट क्या होगा ना, वो बहुत ही बड़ा सस्पेंस बोल सकते हो या इतना. तो पहले मूवी गुप्त सस्पेंस है ना इसके लिए. गुप्त जैसा ही था, मतलब या तो पहेली फिर देन सब मतलब हॉरर टाइप जैसा, क्योंकि नेक्स्ट क्या होने वाला था वो एकदम डरावना था कि आगे क्या नेवर नो कि क्या हो पाएगा या क्या हम करेंगे. सो इट वाज लाइक दैट गुप्त मूवी. ओके, ठीक है. सुपर्ब. एंड व्हाट स्पेसिफिकली हैपेंड इन योर वीक? सर, the happening was like whenever the speech and everything that we given to the our faculty and all that, so वहाँ पे हमारे लिए बहुत सारी जो नई चीजें थी और हमारे सामने बहुत कुछ हुआ, तो वो बहुत स्पेसिफिक हुआ, तो उसके लिए हम आगे काम कर रहे हैं अभी. अच्छा. हाँ. सो काफी अलग अलग वो आईना महल की सफर कर ली क्या? हाँ सर, मतलब अलग अलग टाइप के आईने दिखा दिए सबने. हाँ कि देखो भैया ऐसे लग रहे हो आप, अभी ऐसा है आपका, है ना? बस ऐसा ही हुआ. Okay, good. I could read that through your facial expressions. Yes. कि क्या किस हालातों से गुजरा है ये इंसान. बहुत. Okay. So you know, दिव्यराज जब शेयर कर रहे थे तब काफी सारे न्यू जॉइनीज आई कुड सी. तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ बिफोर आई आस्क श्रेयस टू चूज द नेक्स्ट पर्सन. बट मैं एक बता दूं कि आज का जो हमारा 7-day विक्ट्री या 4-day विक्ट्री वाला जो शेयरिंग है, वो हम इस तरीके से कर रहे हैं कि आपको जो आपका वीक जिस तरीके से गया है उसको किसी एक मूवी की सिमिली देनी है पहले. कि यू नो यू हैव टू डिफाइन इट विथ अ मूवी. कि भाई किसी ने बोला इट वाज फास्ट एंड फ्यूरियस, किसी ने बोला इट वाज मिशन इम्पॉसिबल, किसी ने बोला इट वाज लाइक गुप्त, या किसी ने बोला इट वाज लाइक पहेली. तो देन यू हैव टू टेल अबाउट हाउ द वीक वाज एंड व्हाई डू यू से इट इज लाइक दैट मूवी, है ना? एंड यू हैव टू बी एज क्रिएटिव, एज फनी एंड एंजॉय द मोमेंट. या सो श्रेयस, आप बताओ अब कौन शेयर करेगा? दृष्टि मैम आप कर लो. दृष्टि मैम आप कर लो, चलो. frankly speaking, मेरा ना पूरा week it was more or less like ये जवानी है दीवानी. So Okay. it was in a different frame of mind. I have never missed traveling this bad जितना मैंने ये पूरे हफ्ते में मिस किया है. So you know, I always have this
गोल के मेरा बर्थडे वीक या बर्थडे मंथ जब भी होगा, यू नो माय आई विल बी ट्रैवलिंग टू अ प्लेस और आई हैव ऑलरेडी थॉट मुझे क्या करना है. सो अगेन आई वाज इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड कि इस बार भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी एंड आई वाज स्कैर्ड कि लॉकडाउन आ जाएगा और ये होगा वो होगा, आई हैव टू स्टे होम. सो it was that, and again the second part of it, I was working, I was enjoying my work. I uske jaisa feel tha. I was missing my camera and I was missing traveling because I love to do photography as well. So professionally, keeping aside, personally, this was the entire feeling for this particular week that I had. And personal pe, if I have to say, professionally, if I have to say, Shani, okay, professionally, if I have to say, I've achieved around 90 plus percentage of my task. I don't have a movie relevant for it, but 90% of my task have been done for professional level. Super, super. Okay, so who should go next, Drashti? Shani bhai. I know. Okay. So my last week was like Rocket Singh, Salesman of the Year. So this week we tried to reach 80 plus cold storages in this week. So in the first phase, from our kind of learned stuff for a sales process, so we reached to them and we are now trying to convert them into a business. So that, because of that reason, Rocket Singh, we tried first time. We never tried to call, have a cold call or that kind of emails previously or that kind of marketing strategy. But we tried first time and I personally loved it. So that is why the Rocket Singh, the Salesman of the Year was like a last week. I am able to achieve around 60% of the task which had in the personal and professional life both. Missing some of the moments because of the lockdown. I'm not able to visit some of the offices, government offices, as well as the other stuff. But so it was 60% average kind of a week Okay. compared to the last week. Okay, superb, Sharvia. But this is getting interesting, you know. People are coming with the name of the movies that, you know, we have never expected. So I think this is working. And I'm sure every one of you are enjoying. Like I can see smiles on almost everybody's face while the movie name, and they are eager to hear कि इसके मुंह से कौन सा movie निकलेगा. Good. So अब आप बताओ किसको choose करना है? Who should go next? Prakash Wagasi. Yes, Prakash ji. Hello. Yeah. Yeah. I think it's like my not this week, but I think my week like Chak De India. Yeah. So Okay. almost I can complete all my task. My task is not related to mostly sales, but it's similar. We can generate a sales. Okay. So like we have to create a content, this type of contents, or we have to create some of the news. So this type of content I have created, and I have a few meetings in the last week that I'm waiting for the one of the from the last month. So I have completed with some of my the partners. So this is like Chak De India. Super. So Prakash, do you have a team? Yes, I have a very small team, but effectively we can manage it. Yeah. तो क्या आपने उनको बोला ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता? ऐसा आपने बोला? Okay, ठीक है. So who should go next, Prakash? बताओ अब कौन? Who should be the next person? Tanmay. Yeah, Tanmay, please can you share your last week's? Sir, Tanmay he's Tanmay not here. is not there. Yeah, Sir, Tanmay he's not there. well. Deep. That is why he haven't come. That's right. Deep. Okay, go ahead. કેમ છો અંકિતભાઈ મજામાં? બસ એકદમ મજામાં. તમે કહો સાહેબ. બસ જો ને હું રિતિક રોશનને બહુ એડમાયર કરું છું, one of my favorite actor. Okay. તો એની બે મૂવી મને યાદ આવે છે, એક તો સુપર 30. Okay. અને બીજી લક્ષ્ય. Super.
સુપર સિટીમાં શું છે કે પેલો ડાયલોગ છે ને અત્યારનો પેન્ડેમિકના કારણે બી અને આ ગોલ સેટિંગના કારણે બી એમાં એવું કહે છે કે કાહે ડર રહે હો, જ્યાદા से ज्यादा क्या होगा, मर जाओगे. તો આપણે જે 7 days ગોલ રાઇટ કરીએ છીએ ને પ્રોફેશનલી અને પર્સનલી, તો એમ કે ભાઈ આટલા બધા ટાસ્ક પર લખવો જોઈએ, થશે કે નહીં થાય? बिल्कुल बिल्कुल. अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डर रहे हो क्या? Superb, superb, very good, very good. This is a very good sharing. Yeah. Okay. And how had been your week, sir? Week is good. Okay. વીકેન્ડમાં બી આ વખતે તો કામ કર્યું મેં. અચ્છા. Okay. So Deepai, yeah, please. અને બીજું મૂવી લક્ષ્ય છે, જે આમાં ઋતિક રોશન ને પ્રીતિ ઝિંટા કહે છે કે આપકા કોઈ લક્ષ્ય નહીં, તો જ્યારે એનો જે પેલો માઉન્ટેન ઉપર જવાનો છે ને ત્યારે કહે છે કે યે હે મેરા લક્ષ્ય. બરાબર છે. ગોલ સેટિંગ વર્કશોપના કારણે લોંગ ટર્મ ગોલ્સને આપણે અચીવ કેવી રીતે કરવા કે જે હું ઇમિડિયેટ પે ઓફ વધારે જોતો હતો. બરાબર. ટર્મના બી ગોલ્સ હું મેં સેટ કર્યા છે. યસ. એવી ટાઈપની બે મિક્સ ફિલિંગ છે. Super. બહુ સરસ. So this Deepai and all participants, when this kind of sharing happens, you know what is been shared or how it is been shared is less important. What is more important is what is the message which is being shared. And let me tell you, as a faculty, you know, these kind of honest and open sharing from the bottom of the heart of the participant gives us a very good satisfactory feeling that, you know, we are absolutely being able to contribute to the widening of your horizon, widening of your thought process and vision, you know. So thank you very much, Deepai, for sharing this. And if you can choose who should go next. Pratik bhai. Yeah. So Pratik bhai. Good morning everyone. Good. Sir, થોડો લેટ જોઈન થયો છું, મને ક્વેશ્ચન થોડો રિપીટ કરી આપશો? હા, ક્વેશ્ચન થોડો જ રિપીટ કરી આપીશો. So ન્યૂટનના નિયમ જેવું છે કે એને ન્યૂટનનો નિયમ કહેવાય છે, એટલું જ મને યાદ છે. Okay. So question is that તમારા લાસ્ટ વીક કે લાસ્ટ 4 દિવસને you have to compare it with a movie. કોઈ એક મૂવી સાથે કમ્પેર કરી અને મૂવીનું નામ આપવાનું છે અને then you have to say કે why that movie, એટલે એવું શું થયું તમારા વીકમાં so that you chose that movie. Okay. So there are people who said Fast and Furious, there are people who said Mission Impossible, there are people who said Gupt, there are people who said Laksh, there are people who said Super 30. So અલગ movies આવ્યા છે અમારી પાસે, બહુ સરસ you know આખો એક માહોલ મસ્ત બની રહ્યો છે. ઓકે, સિમિલર જો કેવું હોય કોઈ તો આઈ થિંક પેન્ડેમિક રિલેટેડ જ હોવું જોઈએ. ગો ગોવા ગોન જેવું. અચ્છા, ગો ગોવા ગોન. ઓકે. આજુબાજુ સિમિલર એક્શન્સ પણ જોવાઈ રહી છે, ધેટ્સ વાય. ઓકે. ઝોમ્બીઝ આવે છે આજુબાજુ. બીજું કોઈ રિપ્રેઝન્ટેશન મૂવીઝમાં આઈ થિંક મને મળ્યું નહીં. ઓકે. સિમિલર કાઇન્ડ ઓફ છે સિચ્યુએશન, કેમ કે આજુબાજુ બધી જગ્યાએ મીન્સ અમદાવાદમાં આજુબાજુ બધી જગ્યાએ કોરોનાના બહુ બધા કેસીસ છે. તો સિમિલર અત્યારે જેમ એમાં પણ છુપાઈ રહેવું પડતું હતું, એમ અત્યારે પણ સિમિલર સિચ્યુએશન છે. તમે સામે આવી શકો, જે બેકગ્રાઉન્ડમાં તમે જે કામ કરવું એ કરી શકો એમ. Okay, super. So who would you like to choose next? Anisha, if you're there. Yes, sir, you are there. I'm here. So sir, my last week has been like Kabhi Khushi Kabhi Gum. Superb. Yes sir. So sir, my brother got COVID, so I was mostly busy in that, but I did manage to complete my professional task and one of my personal tasks.
So yeah, that sums up like it. Like doing the personal task for myself, like talking to my friends, it gave me some happiness in these times. So it was kabhi khushi kabhi gum for me. Superb, superb. So, Anisha, and to all our participants who are present here, I just would like to share a small thing with you कि दुनिया में ना दो तरीके के लोग होते हैं. एक ऐसे होते हैं जो हमेशा ये बोलते हैं कि because of this reasons I could not do it. और दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो हमेशा ये बोलते हैं कि even though there were these many reasons, still I have done it. So who is it that we want to become is in our hand. Because people generally are interested in results. Nobody is interested in reason. So my compliments to you, Anisha, for doing such a fantastic job. Kahani. Okay. दर एक टास्क પછી નવા ટાસ્ક આવતા જ જતા હતા સો ઇટ વોઝ લાઈક અ કહાની કે કોઈ એક સસ્પેન્સ હજી ખુલ્યું જ છે અને વિચ ઇઝ હજી આવતું જ હતું પાછળ એમ તો લાસ્ટ સુધી આખા વીકમાં આ વીકના એન્ડ સુધી શું થશે એ હજી સસ્પેન્સમાં જ છે so it was like a kahani and if I say my task so yes I was also able to complete 90% of my task this week. Super, very good, very good. So this was કે મારું થઈ ગયું. Great. So who should go next, Shipra? So we have Dhruv here. Yeah, Dhruv. So mine was like Hera Fairy Part 2. Achha, Part 2 specifically, yeah? Yeah, because that has Akshay's more role. So what happened for me is that doing one task was breaking down into the more and more, you can say destructive type or going towards comedy. So like my MTech projects and startups was all like hanging was like that, doing here and there. So that was. Yeah. Okay. So Gaurav can. So is there? Yeah. So is there anyone else who is left out here? Yeah, Gaurav is there. Yeah, Gaurav, go ahead. સર મૂવીની સ્ટોરી નહીં પણ ટાઇટલ થી અંદાજ अपना अपना. अच्छा, क्या बात है, very good. And why do you say so? સર શીખવા ઘણું મળ્યું કારણ કે અત્યારે પેન્ડેમિક ટાઈમમાં ચાલે છે તો મારા જે ડેલી ગોલ્સ છે જે એક વીક નું કન્સિડર કરીએ તો મારા 40 થી 45% કમ્પ્લીટ થયા છે કેમ કે સામે એવા પેરામીટર્સ કે વેન્ડર પાસે જઈએ તો વેન્ડર કે ચલો ભાઈ 2 વાગે બંધ આવી ગયું છે ઉપરથી જે 2 વાગે બંધ તો જઈએ તો 2 વાગે બંધ થઈ જાય એ એના જ અંદાજમાં છે ભાઈ 2 વાગે બંધ એટલે હું તો શટર બંધ કરી દઈશ બેંક 4:30 વાગ્યા સુધી ચાલે બેંકમાં એક કામ હતું બેંકમાં ગયો બેંક 3:30 વાગે જ બંધ થઈ ગઈ ભાઈ આજથી 3:30 વાગે બેંક બંધ થઈ જશે ગાંધીનગરની અમુક ટાઈમે એકને પીઓ મોકલવાનું છે તો એને ઇન્વોઇસ મોકલી દીધું છે તો એને પીઓ સેન્ડ કરવાનું છે તો તે એમને કીધું કે મળીને મોકલીએ તો ટિકિટ એક દિવસે પહેલા કહી દીધું કે ભાઈ કોરોના ચાલે છે ટ્રાવેલિંગ નહીં કરી શકે મેં કીધું હવે કઈ રીતે થશે અને અમુક જગ્યાએ પેમેન્ટ કરવાના છે તો પછી આપણી આઈઆઈસી ઓફિસ બી બંધ છે તો એ પેમેન્ટ નો બી થોડો ઇશ્યુ આવે છે તો આપણે જે કામ કરીએ છીએ ને એ આપણા ગોલ્સ લખી દઈએ છીએ પણ આપણે જાણવું પડશે કે સામેવાળા વ્યક્તિને કઈ રીતે કરાવવું પડશે તો એ શીખવા મળ્યું એટલે આ વખતે છે ને અમે લોકો એ ટાસ્ક આપવાના છીએ ગૌરવ કે આવતા આ વખતે આ વીકમાં તમારે જેની સાથે કામ કરો ને એના ગોલ પણ તમારે લખવાના એ સર આઈડેન્ટિફાઈ નહીં કરી શકતા કઈ નહીં આઈ એમ જસ્ટ કિડિંગ ઇટ કાન્ટ બી આઈડેન્ટિફાઈડ એટલે સર બધાના અલગ અલગ અંદાજ છે અત્યારે સુપર okay so anyone else left? I think we have covered almost everybody now. Yeah, okay, so before I invite Payank bhai to finally kind of wrap up please Abhinav bhai मैं તમારું નામ વાંચી લીધું હતું અને મેં સ્પેસિફિકલી આ ખાડા ખાન કર્યા હતા સારું કર્યું કારણ કે I think that was needed by all because people should not feel because I am there so they go on a back foot, specifically the IIC team. जी so that was the thing. जी so just because what Shipra said I will just connect to that. So the week has gone like bagam bag.
And just like movie, I was not running. I was also ensuring the people around me also run very hard. Because Okay, morning okay. you start with certain task, evening you have certain tasks, and interim you get some personal contingencies. કે કોવિડમાં કોઈને આમ થયું છે કે કોઈને તેમ થયું છે. So on a lighter note, I appreciate, but I would suggest that it was like Bagam Bag. That's what only I can recollect. Yes, That is yes, how I yes. was running. Thank you so much. Absolutely. Thank you very much, Abhinav bhai. Thank you. So see, basically, if you remember today in this first about 25 to 30 minutes, we had a good fun. We had a lighter time spent, but we had one or two very important uh, observations or pointers that I tried to put you back. Number one is that I could predict what's going in the on the minds of Akanksha. I could also predict what's going on in the minds of Divyaraj, if you remember. મેં આકાંક્ષાને પણ કહી દીધું હતું કે તમને આ સમજાણું નથી એવું મને લાગે છે તમારા ચહેરા ઉપરથી તમારી બોડી લેંગ્વેજ ઉપરથી એવી જ રીતે દિવ્યરાજનું પણ મને ખબર પડી ગઈ હતી કે વોટ્સ ગોઈંગ ઓન ઇન હિઝ માઇન્ડ સો ધેર ઇઝ અ સ્પેસિફિક રીઝન વાય આઈ સેડ ધેટ એ જ્યારે મારો પોર્શન આવશે ત્યારે આપણે ફરીથી ડિસ્કસ કરીશું હેવિંગ સેડ ધેટ I would like to invite Payank bhai once again to kind of take you through the entirety and conclusion of the goal setting thing and imbibing time management and everything into it. So over to you, Payank sir. So good morning everybody. Morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Okay. Morning. Great. Thank you everybody. Okay. So before we start the session, I'm going to write down 7-day goals during the session right now, but let's once again revisit our very important analogy of YTD, MTD, and NTD, which is yes to do list, must to do list, and not to do list. So any of the participants who was not there in last session, for their benefit as well as कोई भी करवा लेगा. अगर मेरे को गवर्नमेंट में ऑफर सबमिट करना है तो मेरे पार्टनर्स मुझसे करवा लेंगे. कभी कभी मैं थोड़ा बहुत लेजी हो जाऊंगा तो क्लाइंट का भी कॉल आ जाएगा, अरे शनि भाई तुम्हारी ऑफर नहीं आई है अभी सुधी. So we normally use these as a must to do task. No, put them into yes to do tasks, which are very important activity. मस्ट टू डू कैटेगरी में आपको ऐसे टास्क लिखने हैं जो काम अगर आप आज नहीं करते हो तो उसका नुकसान आपको आज नहीं होने वाला है. बट वन थिंग इज फॉर श्योर, इफ यू डोंट डू दैट it may hamper your future progress, or if you do that today it is going to give you phenomenal results tomorrow. तो जैसे गोल ट्रैकिंग शीट है जो मैंने लास्ट टाइम आपको गोल ट्रैकिंग शीट एक्सेल दिखाई थी, वी विल डू द हैंड्स ऑन एक्टिविटी टुडे. अगर वो गोल ट्रैकिंग शीट आप नहीं फील करते हो तो आपको आज कोई नुकसान नहीं होगा, बट अगर वो चीज आप करते हो तो यू आर गोइंग टू बिल्ड एन अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज फॉर श्योर. इट इज सच अ पावरफुल एक्टिविटी. जैसे पर्सनल लाइफ में अगर आप 10 सूर्य नमस्कार या आधे घंटे का एक्सरसाइज आज नहीं करते हो, 25 साल के 30 साल के लड़के को क्या होने वाला है? अगर एक साल भी एक्सरसाइज नहीं करेगा तो कुछ नहीं होने वाला है 5-10 साल तक. बट अगर वही बंदा अगर एक्सरसाइज करता है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू गिव 100 years हेल्दी एंड प्रॉस्परस लाइफ. अगर आप 1 घंटा आधा घंटा रीडिंग नहीं करते हो, अपना माइंड सेट अपनी माइंड थिंकिंग चेंज करने के लिए रीडिंग नहीं करते हो, कल की बैलेंस शीट में वो रिफ्लेक्ट नहीं होने वाला है. और मान लो करते भी हो, सपोज अगर शनि आधा पौना घंटा रोज कोई किताब पढ़ता है
तो उससे कल की बैलेंस शीट में कोई रिफ्लेक्शन नहीं आने वाला है. डू यू एग्री विथ मी सन? Yes. But if you read it today, it is definitely in long run going to pay you. And दूसरा, तो फिर हमने इसको must to do क्यों नाम क्यों दिया है? Must to do नाम इसीलिए दिया है क्योंकि must to do टास्क करने के लिए आपके लाइफ में आपके पीछे कोई पढ़ने वाला नहीं है. Let me tell you, those who are married here, उनके घर में उनके स्पाउस ने कभी भी उनको ये नहीं बोला होगा कि अगर सुबह पौने घंटा एक्सरसाइज नहीं किया तो खाना नहीं मिलेगा आज. सर आज किया. आज किया? आपने किया या उन्होंने किया? नहीं, दोनों ने एक्सरसाइज किया. सुपर. So I think that's a compliment to him. So let me tell you this, and that's why we have specifically named it as a must-to-do list, because must-to-do lists are those category of tasks. If you do it today, it may not pay you tomorrow, but it is definitely going to pay in a huge quantum and make your life absolutely profound. So that's why it is it has been categorized as a must to do list. So yes to do, must to do and not to do का अगर proper understanding clear है तो can I request everybody to put yes into the chat box, or if you have any specific question to understand it better, you can go on mute and ask the question. Oh, great. I need answer from everybody, please. Super. So Yeah. if I just ask one thing, so Yeah. must to do in a way, if I put it in my understanding, your self motivation plays a role over here. Does it relate to that? Just trying to put it in a very simple language. Oh yes. So that's why हमने goal से start किया था. If you remember, the first session के अंदर why before finding out anything in a must to do list, we started with our goals of personal life as well as goals of business life. So as you rightly said, must to do list category में वही task आएंगे where many times your motivation is high, but let me tell you one thing. Suppose motivation high नहीं है, सनी भाई को एक्सरसाइज करने का मोटिवेशन हाई नहीं है, बट उससे ऑलरेडी हमने गोल लिखवाया है हेल्थ का. Okay. उसने हमने नहीं लिखवाया है, उसी ने लिखा है. लेट मी करेक्ट माय सेल्फ. सो एनीथिंग व्हिच इज अलाइन्ड विथ योर गोल व्हिच may not pay you today, but in order to achieve that you need to do it today, those kind of all tasks has to be categorized into the must to do list. और हमने टू डू लिस्ट बनाने के टाइम पे 30 डेज का रूल सेट किया था कि अगर आप नहीं भी कर पाते हो एक दो टास्क, डोंट वरी, कीप राइटिंग. लिखो, देखो, बंद कर दो. Even that also will work phenomenally. So hope I've answered your question, Drashti. Payank sir, may I ask one more? Yeah, Vinay. When you talk about this task, about must to do and yes to do, do you have any specific, based on your experience, that how many hours or how many tasks should be covered in that? Because sometimes it should not become that we take so much of load that we are not able. So any idea, means technically like you should plan 3 hours a day for this sort of qualitative work, or you should have prioritized at least top 5 only and 6 is there you do on the next day, something like that? To begin with, if I share my experience, I will always say, to begin with, I always say that if you are a beginner in doing this exercise, first I will start with not to do list. I think only write one not to do task every day. It's enough. Only one. If you are a beginner, do not write more than 2 tasks in must to do category in professional life, and do not put more than 2 tasks in your personal life. That's fair enough. Initially, even do not set the timeline also.
also. Like say for example, self-development is a must-to-do task. It can be professionally also, it can be personally also. I am saying go with the spaced repetition theory. Everybody, we have detailed discussion. Success comes from results, results come from action, action comes from thinking, thinking comes from conditioning, conditioning comes from experience, and experience comes from spaced repetition. This is the one theory which normally every session we invest 5-10 minutes into that. This is the fundamental of human being. So we always say that if you are a beginner, space repetitively, start with your own comfort zone. Don't set this thing. Let it get converted into some good experience. That experience will become the more. Otherwise, it will become one-sided preaching. So let that space repetitively 1 or 2 tasks produce some results for the participants. That results will trigger them to make the conditioning and the habit in time to come. So you can start with 1 task or 2 tasks. That's also fair enough as a beginner. So hope Abhinav, if I have answered your question. Yes. I think done. Thank you, sir. Thank you. Yeah. So I think let's spend let's invest 4 to 5 minutes to right now, and let's make our YTD, MTD, and NTD list for today, since we are starting the day. Or if you feel that okay till 2:30, 3 o'clock you would be here only, and you have some other work, so then you can write it down for tomorrow. I think tomorrow is the whole day, bunch of 8 to 9 hours. Just write down your YTD list, MTD list, and NTD list. Do not put more than 1 or 2 tasks in your NTD list. Once you are done, please put yes into the chat box. Super. Okay. So you keep writing. जिन्होंने लिखा है उनसे मैं very quick I will have a sharing from participants for one example of MTD and one example of NTD. So to very quick, be very quick. Yes, Akanksha, go fast. Yeah, so my YTD is to one YTD तो लोग surrounding करवा ही देगा. One MTD and one NTD example. Two MTD I have written. One is to do my own job, and one is to complete my pitch of for pitching. Super. NTD? NTD is to see news and social media for 45 minutes. Okay, super. Divya? Sir, MTD is about to recap the Saturday session, all that we have done, and right time analysis sheet and all that 3 hour stuff that you would do on Saturday, and NTD about no WhatsApp status and
Instagram for today and cut time for the TV. It's going too much. So that was my entry. Can you be little more specific in cutting down of TV instead of? It's 1 hour, cutting it to 1 hour. Otherwise, cutting down also, instead of 10 hours, I will watch TV for 9 hours and 45 minutes only today. Just kidding. Okay. Yeah. Yes, Shipra, would you like to share, please? Yes, sir. So my must-to-do task would be regulating my sleeping cycle. Okay. That is important for me. Okay. My not-to-do task would be not going out. Though I get very bored in the house staying, I'll not go out, and not going to any, grocery shopping or something. That is not important for me right now. So I'll go that for N2D task. Very nice. Very Yes, nice. and my to-do task is involving my professional, that comes from my goals every day. So yes, to-do task is the same as my goal. એમાં તો આપણે આજુબાજુ બધા બેઠા જ છે કળાઈ લેવા માટે. Just kidding. Yeah, Anisha, please. So, sir, my not to do task is that I have a bad habit of scrolling my phone before sleeping. So I will not scroll my phone 30 minutes like before sleeping. And my must to do task is one is I'll sleep at time, and the second one is read one book per week. So that is must to do. Yes, Anisha. Thanks, Anisha. Thanks for yes. My not to do task is I have a habit of checking WhatsApp and FB in every 15 minutes. So I will make it. I'm going to check only after 1 hour the WhatsApp and FB statuses and the other work-related stuff. Must to do is morning half-hour exercise and reading 1 hour good book every day. It's good is the name of the book. No. Reading a book. Okay. Okay. It will be great if you can specify the name of it. It will help you when you write down the specific name of the book. See, try કરજે એક વખતે ખાલી એક વખતે વીકલી ગોલમાં લખજે કે આ વખતે હું બુક વાંચીશ અને એવું લખજે કે ભાઈ આ વખતે હું The Monk Who Sold His Ferrari ના 5 પેજ વાંચીશ કે પહેલું ચેપ્ટર વાંચીશ. It will have a better impact on. Thanks for sharing. Yes, Shreyas, please. So sir, my must to do is કે મારે પ્રેક્ટિસ પેચ આવી રહી છે એટલે આઈસી ડિપાર્ટમેન્ટ તેની પેચ પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. That is like must to do. કેમ કે that will help me in a longer run as well. બીજું છે મેન્ટરિંગ સેશન ના જે ટાસ્ક છે ને એ પ્રેક્ટિસ કરવાનું. કેમ કે there are times કે કરી 2 દિવસ પછી ડન. અને not to do માં છે I have to stop overloading myself with all the tasks कि भाई आए तो कर लो तो कर लो. I need to start delegating it to people. Oh, very nice. And maybe there are few critical things that we like I have been dealing, like एक board meeting કરવાની હતી જે સૌથી કંપની ફોર્મેશન પછી ઈ તો સર 3 મહિનાથી ડીલે થઈ રહી છે. હજી ડીલે નથી કરવાની એને. આ વીકમાં લાખી દીધું છે ને? Probably. અત્યારે હજી નાખતા તું પ્રોબેબલી કહીશ તો પછી તો નાખ્યું તો છે આ વીકના ઓલામાં. હવે થાશે કે નહીં તમને આવતા વીકે જણાવું કે થઈ કે નહીં. જો તું થાશે કે નહીં બોલ્યો ને એટલે હું તને અત્યારે લખીને આપી દઉં. કરીશ આવ પતાવીશ. ગ્રેટ, સુપર. ઓકે. અને તારી પીચ વાળું જે તે એમટીડી માં લખેલું છે ને એ આજે અંકિતભાઈ ના વાયટીડી માં છે એટલે થઈ જશે તારે. ઓકે. યા દ્રષ્ટિ, if you can share. So sir, my must to do is my Kindle subscription. So after a long struggle मैं पाँचों subscription चालू करी है because I've started reading on a very regular basis. So it's like 2 hours every day I'm reading only Indian mythological books. So I have a very interest towards that. So I have started that. પહેલા મારું બહુ છૂટી ગયું હતું પછી 7-day goals માં લખીને આ વખતે મેં finally છે ને subscription લઈ દીધું so that હું એને waste ના જવા દઉં. So that is one thing is my must to do. I want to read the mythological part and I will kind of read it. And not to do થોડું કોન્ટ્રાડિક્ટ છે but this is only in terms of my phone and social media
related the entire world. I'm not going to use, so I have a target of reducing my screen time by 7 hours. So last time મારું જો working days જે મારા ઓફિસના હતા ને ત્યારે my personal usage of phone was not there. So I could manage in 1 hour. A 1 hour entire day, social media, games, everything is sufficient enough. So I want to get back to that level where I was 2 weeks palla. So reduce the screen time by 7 hours. That is the 2 targets I have. Yeah. Yes, Deep bhai. Yes, Payank bhai. Yes, yes. From where I should start? I want you to share example of one MTD and one NTD task. What you have written. So that's it. Not the entire list. Okay. Must to do task is that portfolio startup follow up. જે IIC ને બીજા ટાસ્ક ને કારણે પોર્ટફોલિયો સ્ટાર્ટઅપ ને સાથે ઇન્ટરેક્શન રહી જતું હોય છે, તો એ મસ્ટ ટુ ડુ ટાસ્ક છે મારા માટે. સુપર. અને નોટ ટુ ડુ ટાસ્ક એવો છે કે હું કાઇન્ડ ઓફ પર્સનલ છે, પણ લેટર ઇન ટાઈમ હું વધારે લઉં છું કેમ કે મોબાઈલ લઈને જતો હોઉં છું. સ્ટમક પ્રોબ્લેમ વધારે રહેતા હોય છે મારો. Very nice. I will not take phone with Superb. It's a brilliant task, I must say. It creates a variety of different issues, not only physically but mentally as well. And I really appreciate you, admire you for this sharing. Not many people have a guts to do this such sharing, and many times we don't know that one person sharing such important aspect, there's no sense of putting under carpet, and but it can, people say or not say, but it can help many people to take such action. So thanks for putting on board. Thank you. Yeah, Prakash. Sometimes I used to take chargers with me. I understand that. So it's a understand. Really appreciate that. Yeah, Prakash. One not to do is I would like to reduce my social media timing. I spend every day, I think about 30 minutes or 45 minutes. Okay. And one yes to do task is I want to reduce my time for consuming every task. So I have to work on it, how I can reduce the task I have to do. So I have to work on the management part. Okay. Super. Yeah, Gaurav. Sorry. Yes, sir. मैं नोट टू डू टास्क के में मोबाइल पे ज्यादा टाइम मेरा यूज होता है, तो वो कम करना है. मस्ट टू डू के मेरी जो भी गोल्स होते हैं या जो प्लानिंग होती है, उसमें कई बार ऐसे फैक्टर्स आते हैं कि वो नहीं हो रहा है, तो वो स्किप हो जाता है, तो उसके फॉलो बैक लेना मुझे ज्यादा जरूरी है. तो वो मुझे अपने आप में करना है. ठीक. ओके, ग्रेट. Okay. One very interesting question I will ask. Why do you think every time we invest lots and lots of time for the 7-day sharing or maybe YTD, MTD, NTD list? What could be the key reason why we do this kind of a sharing? Now let me have a 1 or 2 sharings only. That Shani, in your opinion, why we took the entire round of 7-day victory sharing, and that's the same thing we have been doing, like YTD, MTD, NTD. I took the sharing from everybody. Why do we take this kind of a sharing from everybody? I think it motivates me to do as well. If they're able to do it, I'm also able to do it.
So that is one reason, and second is kind of repeated theory. This repetition is going to help everyone to achieve success. Perfect. I don't need to go for the other sharing. Both points you covered very beautifully. But let me tell you, scientifically, you reverse your both statement. What you said in order, you just first reverse the statement. What was your second statement? You put it that is as the first one. Right. Space repetition brings space repetition. So let me tell you one thing. YTD, MTD, NTD मेरा कंडीशनिंग हो जाए उसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं करूं तो ही होगा. See, all space repetitives happen physically as well as mentally. So what happens, 15 लोग शेयरिंग कर रहे हैं, मेरा YTD ये, मेरा MTD ये, मेरा NTD ये, मेरा YTD ये, MTD ये, NTD ये, YTD ये, MTD ये, NTD ये, YTD ये, MTD ये, NTD ये. Space repetitively when you do something, then it will create experience. अब आपका सेकेंड स्टेटमेंट आता है, जो पहला आपने पहले बोला था सनी. पहला क्या बोला था आपने? Others' success, others' accomplishment can motivate you. Means, if you remember अपना वो theory tree देखोगे, success comes from result, result comes from actions, actions come from thinking, thinking comes from conditioning, conditioning comes from experience, and experience comes from space repetition. So अभी इसी ऑर्डर को उल्टा करो तो स्पेस रिपीटेटिवली आपने YTD, MTD, NTD सुना, इन बिटवीन आपने अपने और लोगों के एक्सपीरियंसेस भी उसके साथ जुड़ गए. Okay, Shani himself has not experienced it. Prakash himself has not experienced it. But Prakash is perceiving an experience what Drashti had. But in Prakash's mindset, that experience is already happening at mental level. So that's why, it is creating some kind of an experience. And that experience will help Prakash to do the conditioning or form the conditioning in better way, even if he has not made YTD, MTD and NTD list. Even if he has not might be done the goal tracking sheet or whatever learnings we have talked about. And once it comes at conditioning level, then we know 8 Forza, Shani? 32. 32. From where it has come? Space repetition. Conditioning. Conditioning. From conditioning it has come. So when knowledge applies, it becomes experience. When experience multiplies, it becomes conditioning. I repeat. When knowledge applies, it becomes experience. And when experience multiplies, it forms conditioning. That's the whole point of doing it. Okay, great. Akanksha, any question you have? Oh, sure. Okay. So now let's get back to the goal tracking sheet. Let us complete that goal tracking. अपना 10. Anybody remembers हमने goal setting process जब start किया था तो मैंने step 1, step 2, step 3 कहीं लिखवाया था और हम step 6 और 7 पे आके totally अटक गए थे. अभी हमने पिछले जितने भी सेशन में जो भी किया वो step 7 पे ही आके हम अटक गए. Anybody remembers? किसी के पास लिखा हुआ है? What is the step 1, step 2, step 3? If somebody can find it out and share, please. So we had actually stopped at I think 6th step. 7th step पे हम लोग आए थे. हाँ, 6th पे हम रुक गए थे, 7th पे हम आए थे. What was the step number 1? Dreaming. The Okay. leaders are dreamers, and Okay. then conversion into goals. Okay. Then so step 1. Just a second. For benefit of everybody, if somebody missed that particular session, step number 1 was everything start from dream. Leaders are dreamers.
So the first step of goal setting process is leaders are dreamers. What is the step number 2, Akanksha? Is conversion into goals. Perfect. Step number 2 is convert your dreams into smart goals. S stands for specific, M stands for measurable, A stands for attainable, R stands for realistic, T stands for time bound. Time bound has to be with start date and end date. If you remember, both A and R represents quantity. R is based on data, fact, figure, and history, realistic quantity, and A is attainable quantity with your motivation and desire. And we set goals on A, not R, which is an achievable quantity, aggressive goal, stretched goal in our language. So step number 1 is everything starts from dreaming. Step number 2 is convert your dreams into smart goal. Akanksha, which was the third step? To convert goals into milestones. Absolutely. Goals के टुकड़े कर दो. Break the goals into milestones. अहमदाबाद से बड़ौदा 2 घंटे में 90 किलोमीटर है, तो टुकड़े कर दो गोल की. 20 मिनट में एक्सप्रेस हाईवे to Nadiyad another 20 minutes, Nadiyad to Anand another 25 minutes, Anand to Baroda express highway, Baroda toll plaza another 15 minutes, that way. And from Baroda toll plaza to my home another 20 minutes. So हमने गोल के टुकड़े कर दिए. So step number 3 is break your goals into milestones. Here come very important aspect. Normally लोग गोल सेट करने के बाद एक्शंस और प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, बट वी सेड अभी आपके गोल को जिस तरह से गाड़ी को फ्यूल चाहिए, जैसे सनी भाई अभी कुछ चाय वाय पी रहे हैं तो ही इज फ्यूलिंग आवर बॉडी. तो यू नो वी मेक श्योर कि अगर हम कोई फिजिकल काम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में पूरा एक्शन हो. वी मेक श्योर कि अगर गाड़ी को अहमदाबाद से बड़ौदा जाना है तो फ्यूल और एयर, ये दो ऐसी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है कि जिसकी वजह से कभी गाड़ी रुक नहीं जाए. आर वी सीरियस अबाउट फ्यूलिंग आवर ड्रीम्स ऑल्सो? So that's why step number 4 didn't start from plan of action. Step number 4 was, Akanksha? Why I want to achieve the goal. Why I want to achieve the goal. What are the benefits of the achieving these goals? So we made you write down all the benefits of the goal. Let me share my screen over here. Okay. Is my screen visible to everybody? Okay. तो हमने बिल्कुल इसी फॉर्म में गोल सेटिंग प्रोसेस को बिल्कुल एक्सेल शीट में फॉर बेटरमेंट ऑफ एवरीबॉडी. ये गोल आपको कुछ नहीं करना है लाइफ में, यू नो फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस ऑफ कोचिंग thousands and thousands of people, right from till people who are owning 5 crore organization to 50,000 crore organization. I would tell you, if you just maintain these one sheet and give quality 3 hours or 2 to 3 hours in a week, once in a week, quality 2 to 3 hours to week. This is your high payoff activity. I am saying it will help you to help you to reach to the amazing height in your career. So ये ड्रीम लिस्ट है. स्टेप नंबर 1 आ गया, फिर ड्रीम को हमने गोल्स में कन्वर्ट कर दिया. दिस इज स्टेप नंबर 2, इस पेज पे आ गया. स्टेप नंबर 3 जो था कि जो कन्वर्ट ड्रीम्स इनटू माइलस्टोन्स, वो हमने गोल ट्रैकिंग शीट के अंदर इधर इनकॉर्पोरेट किया हुआ है. सो यहाँ पर आई विल टेक यू थ्रू. सो स्टेप नंबर 3 हमने ब्रेक डाउन किया हुआ है इस शीट में, क्योंकि हमको ट्रैकिंग शीट पावरफुल चाहिए, इसलिए प्लानिंग वहां पर ही हमने कर दिया है. आई विल शो यू दैट स्लाइड. सो स्टेप नंबर 3 यहाँ पर हमने डाल रखा है. स्टेप नंबर 4 जो है, राइट डाउन बेनिफिट्स ऑफ अचीविंग गोल्स. सो प्रैक्टिकल एंड इमोशनल बोथ बेनिफिट्स. सो वी से दैट जैसे आप गाड़ी में पेट्रोलिंग करते हो, फ्यूल भरवाते हो, हवा भरवाते हो, एयर मेक श्योर करते हो, इसी तरह से यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ योर गोल. Personal benefits, emotional benefit, professional benefit, benefit to you, benefit to your company, benefit to your country, benefit to your customer. Get yourself
every single day aligned with your why. Get married with your why. Just get your why internalized. Get your why internalized. So, you know, we always say that people are less motivated to know what you are doing, but people are amazingly motivated when they are clear why are you doing. People are less interested in knowing what you do, but people are very much interested to know why are you doing this. So let me just tell you one thing. Why is not only your fuel, it is the fuel for everybody. Okay. And let me also tell you, your why of your goals only making you sit here and every session come here and doing all these activities and learn the things very, very rigorously. So step number 4 is why to achieve. List down all your benefits. Acha. अब step number 5 क्या था आकांक्षा? It was to affirm your why. हाँ. So that was, I think, the PPT and the visuals and everything. Absolutely. अब ये step number 5 और 6 है ना, वो कुछ भी नहीं है. वो multiple spaced repetitions of your goal and why कैसे हो सकता है? तो सनी आपने एक बार अपना गोल और वाई तो डिफाइन कर दिया, बट आपको उसको भी कंटिन्यूअसली कहीं ना कहीं एक मैकेनिज्म तो आपको चाहिए होगा ना कि उसका भी रेपिटेशन हो. Yes. जैसे कोई बोलता है कि भाई मुझे इस 3 महीने में 5 करोड़ का टर्नओवर करना है, से फॉर एग्जांपल ये एक गोल है. और दूसरा एक गोल है कि मुझे कैसे भी करके रोज का 45 मिनट बुक रीडिंग करना है. और तीसरा गोल है कि भाई मुझे रोज 1 घंटा अपनी फैमिली को अनडिवाइडेड क्वालिटी टाइम देना है. तो मुझे कोई तो मैकेनिज्म चाहिए. हमने हमारी साइकोलॉजी की डेफिनेशन समझ रखी है. सक्सेस कम्स फ्रॉम रिजल्ट कम फ्रॉम एक्शन कम फ्रॉम थिंकिंग कम फ्रॉम कंडीशनिंग कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम स्पेस रिपीटेशन. तो गोल सेटिंग के लिए भी वही फिलोसॉफी है. तो गोल सेटिंग के लिए भी तो स्पेस रेपिटेशन के लिए कोई तो टूल चाहिए मुझे. दिस इज व्हाई स्टेप नंबर 5 इज you need to have a mechanism to continuously affirm your goals and benefits. You need to have a mechanism of continuously your goals and benefits. So that's what the affirmation is nothing but a positive declaration in a simple present tense that you are already in a position of that goal. And step number 6 is visual representation of that particular goal in a form of visualization. So that benefits, affirmations and visualization. I repeat, step number 4 is benefit, step number 5 is affirmation about your goals and benefits, and step number 6 is the visual representations of your goals or benefits. These 3 steps are fuel of your goal. These 3 steps are fuel of the goal. So, Drashti, if you can unmute yourself. Yes, sir. कोई पण goal, you know, let us understand, like let us learn like child. ગાડીની અંદર પેટ્રોલ તો એની મોમેન્ટ અવેલેબલ જ હોવું જોઈએ. Yes or no? Yes, sir. તો પછી ગોલનું પેટ્રોલ બી ગમે ત્યારે એની મોમેન્ટ અવેલેબલ જ હોવું જોઈએ. Definitely. ગાડી માટે ફ્યુઅલની ટેન્ક સેપરેટલી આપી છે ઓટોમોબાઈલ કંપનીએ. એવી જ રીતે આપણને પણ ટેન્ક ઉપરવાળાએ ક્રિએટરે કંઈક આપીને રાખેલી છે. Yes. I would like to have a one sharing from everybody before we complete the goal setting process today. What is my tank and what is my mechanism to get the fuel out of it? देखो पेट्रोल फिल करने के लिए कितना चलता है अभी पर लीटर? Anybody has any clue? 80, 85,
54 कितना है शनि, यू रिमेम्बर? वही मतलब 82 रुपीज। ओके, सो देखो गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए 80 रुपीज का बैंक बैलेंस होना चाहिए, ओके। बट ऊपर वाले का क्रिएशन इतना बढ़िया है कि कहीं पर कोई पैसा डालने की जरूरत नहीं है, और ये क्रिएशन इतना बढ़िया है कि पैसा खर्चा करके वो फ्यूल कोई कमा भी नहीं सकता है। So I want to ask everybody, this is the one sharing I will take from every single person. Where is your fuel tank to fuel your goal? And how are you going to use the fuel out of it? It's a very interesting question. Let me repeat once again. Where is my fuel tank, which will fuel my dreams and goals? And how am I going to take fuel out of it so that अपना गोल का गाड़ी कंटिन्यूअसली चलता रहे? मीनवाइल शेयरिंग स्टॉप करता हूं और फिर आगे बढ़ेंगे. So let me take this sharing from everybody. So let's start from Shreyas. Shreyas, is my question very clear? Yes, sir. Yeah. So very quick sharing, 30 to 45 seconds per participant. What is my tank? It is to not get into the 9 to 5 rat race. What is fueling it? My friends who are into 9 to 5 rat race and curse it every day, looking at their misery. I get fuel कि मेरे को उसमें नहीं घुसना है, कुछ भी हो जाए. Perfect. So that is the fuel to keep my tank going कि भाई I don't have to enter that it. Super. तो ये आपका फ्यूल टैंक हो गया और ये आपका फ्यूल हो गया, ठीक है. अब मेरा सेकंड, so guys, very nicely been explained by him. So let me tell you one thing. श्रेयस ने अभी जो बोला वो मेरा फ्यूल हो गया और फ्यूल का टैंक हो गया. अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये फ्यूल कंटिन्यूअसली मेरे माइंड को मिलता रहे, उसके लिए व्हाट इज द मैकेनिज्म आई हैव. मेरा पेट्रोल पंप मुझे खोल के मेरे को रोज आप हर 3-4 दिन में गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हो. हाउ यू मेक श्योर दैट ये आपका फ्यूल जो है वो आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहे? व्हाट मैकेनिज्म यू हैव फॉर दैट? मतलब सर जब मैं देखता हूँ लाइक व्हेन आई सी पीपल कंप्लेनिंग कि भाई they are I have been let go, या मेरे को ऐसे हो गया, मेरे बॉस ने मेरे को ऐसा कर दिया, मेरे बॉस ने मेरे को ऐसा कर दिया. बी योर ओन बॉस. द डिसीजन दैट यू टेक, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ. दूसरे किसी पे डिपेंडेंट मत रहो या दूसरे किसी को ब्लेम मत करो कि ये उसकी गलती थी, इसकी गलती थी. सो दैट इज हाउ आई कीप फीलिंग कि भाई नहीं जाना उसमें. ठीक है. बट ये फ्यूलिंग कैसे करते हो, आइडियली कैसे करते हो? दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज. हाउ डू यू रिमाइंड योरसेल्फ अगेन एंड अगेन? जैसे एक गाड़ी में आप पेट्रोल साल में 30-40 बार स्पेस रिपीटेटिवली फिल करवाते हो ना, मे बी once in 3 days, once in 2 days. So similarly ये फ्यूलिंग आप अपने आप को माइंड को स्पेस रिपीटेटिवली, दैट्स द मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन. हाउ आर यू गोइंग टू फ्यूल योरसेल्फ? Sir, the enjoyment that I get while practicing my pitch or sharing people that what my idea is and how it will make a difference in their life. Perfect. It makes me ki bhai, if that is something that is way more important than a 9 to 5 job, then I should keep continuing that, because people get excited at times ki bhai okay, you're working something on diabetes, यार करो, हम लोग भी हमारे तरफ से जितना हो सकता है we'll help you out with it. ठीक है. So the problem which your product and service is solving, that is something fueling you, correct? Yes. So do you think in your weekly schedule you can make some kind of a mechanism where at certain frequency you just sit with yourself and continuously give that fuel to your mind and body, that yes, I am into the most wonderful profession or wonderful business. Yes, you are there, challenges are there, but this kind of a work what you are doing is going to add lots of values into the human life or whatever. I've just given one example of it. Continuously reminding yourself, does that make some kind of a sense for you? Yes, sir. I do that at times जब ऐसा लगता है कि नहीं छोड़ देना चाहिए, 9 to 5 कर लेना चाहिए. At that point I say myself कि भाई नहीं, it's just a phase, थोड़े टाइम के लिए है,
बाद में हो जाएगा, थोड़े टाइम के लिए हो जाएगा. So guys, pick this word what just Shreyas said. मैंने जब उसको पूछा कि क्या ये आपको करना चाहिए, तो उसने बोला कि मैं करता हूं जब ऐसी सिचुएशन आती है. अब मेरा क्वेश्चन आपको ये कि इस ऑर्डर को श्रेयस अगर रिवर्स कर दिया जाए कि देखो, गाड़ी में पेट्रोल हम तब नहीं फिल करवाते हैं जब गाड़ी के पेट्रोल का टैंक खलास हो गया है, गाड़ी बंद हो गई है या बंद हो रही है. हम लोग वो रिजर्व का आर का कांटा देख के ही वी आर वाइज इनफ कि यार अब गाड़ी रुकने का वेट नहीं करना है, लेट्स हैव अ फ्यूल इन द कार. सो सिमिलरली अगर मैं अपने माइंड एंड बॉडी को रोज अपने या कुछ फ्रीक्वेंसी से अपने माइंड को फ्यूलिंग करते रहता हूं, तो प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन ही नहीं आएगी कि डिफिकल्ट सिचुएशन पे मेरा फ्यूल खत्म हो जाए. चैलेंजेस विल कम, but then your mind is going to be always prepared. Do you think, does it make sense? सही. अगर scheduled block of time, let me tell you one thing, you never find time to get fuel, you schedule it. हाँ. If something on those lines can, this is what my precise question is. हाँ सर, जैसे बोला था कि लास्ट वीक में कि वीक आया गया पता नहीं चला कहाँ पे गया. तो सर सिमिलरली मतलब उसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीजें थी, आई हैड टू गेट टाइम फॉर इट एनी हाउ. सैटरडे को सेशन में था, सेशन थे 10 बजे, तो आई हैड टू रीअरेंज थिंग्स बिकॉज आई वांटेड टू कम हियर. तो उसी तरीके से जो ये फ्यूलिंग वाला प्रोसेस है, आई वांट टू डू इट रेगुलरली, तो उसके लिए कैसे ना कैसे करके टाइम तो निकालना पड़ेगा. Perfect. So that's what I want to figure out that as an activity. But great, super. Sunny, what would you like to do? What is your fuel and how are you going to see? Now we will go very quickly. I hope question has been well understood. What is my fuel and how will I make sure that I am always filled with fuel? What would be my frequency? Yeah. Yes. So I have two kind of fuels. One is for personal life as an entrepreneur, and second is for a professional life. Right. For personal life, the story behind my family. The way my dada, my grandparents, my grandmother created this family and created उनके पापा बहुत यंग एज में एक्सपायर हो गए थे, and he created entire stuff by doing hard work and lot of struggle in his life, right? And he created his name and still he's taking care of me and my brother, right? So that is fuel. Their story is fuel for me. So every day when I see them, every day when I listen about their stories, right, એવું થાય કે આપણે તો કંઈ નથી કરતા એમ, right? And that legacy which I have to continue and I have to make them proud. That is kind of my personal fuel. And in personal life, right, in a professional life, love towards entrepreneurs. The way the people are solving the problems and creating the value out of it, solving some of the biggest problems. So I was part of PDPU IIC for the last 5 years. That is motivating me personally, right? To create amazing products on my own venture, solving some of the biggest problems, and that is kind of a fuel for me. When I see young people, various young people as well as the old people creating startups, solving problems, right, and creating an impact, that is professionally motivating. If they're able to do it, it's my kind of a duty to do it. These are the kind of my personal and professional fuels which help me to keep motivated and do good work. Great, super. Thank you. And let me just correct a language bit. There is nothing called young people and old people. Yes. There are always young people only. There can be less experienced and more experienced people. Yes. But people are always young only. True. So I have a habit of asking an 80 years dada also, how young are you? Right. Right. Okay. Yeah. Great. Super. Yes, Akanksha, what is your, and Sunny, one last question. How will you make sure that this fuel is getting pumped in regularly? You have a scheduled block of time. So yeah, I have it. So what normally I do, because I'm staying with my grandparents right now, right? So that is a habit from last 5 years, which I'm never forgetting to do it. I normally every day I just એમને પગે લાગીને જ હું ઘરેથી બાંધી દઉં. In all the conditions, every day મારા fight પણ થઈ હોય ને, કોઈ રીઝન લીધે મારા દાદા જોડે fight થઈ હોય, બોલવાનું થઈ હોય ને, તો પણ I don't miss it for any single day. હું ગાડી બેસી ગયો મને લાગે હું ભૂલી ગયો છું પગે લાગવાનું, I go back and do it again.
Great. That a small moment helps me to remind me what I am doing and why I am doing it. Great. Super. So guys, let me once again share one very beautiful principle of leadership. If you want to get work done from people, if you really want to get work done from your people, just by sharing what are you doing, it won't happen. But just to make realize them why are you doing, there is bright chance it to happen. So why you and your entire power tree is doing what you are doing, if that becomes accessible to the all person associated with this company, you see, Sunny, what kind of a lips and bounce you get it into the company just by saying what, because everybody is not motivated by grandfather. You understand? That's only Sunny is motivated. Hope you agree with me what I am trying to say. Yes. And thank you for kind of, I never thought of the way when you ask yourself, right? I kind of a deep dive. What is that stuff which is why I am here in the office and doing it, right? And these are the two areas which I am to identify. Thank you for that. Yeah, great, super. Yeah, Drashti, would you like to share? So, sir, I have, just like Shanita, I have two fueling parts to myself. The first part is, continuous or very eager to kind of learn something new time and again. I am not made for a monotonous routine. So, even if I get a monotonous routine, I need a change. I need something which can get me out of it, which can get me to learn new things and develop my skills. So I'm very greedy on that part and I don't feel bad about it at all. And from professional perspective, how it helps me out is and the other part is I can't blindly follow the instructions that are given to me. So in my professional life as well, if I'm given, okay, you have to do this way only, I cannot do it because I always want to add a little of flavor, a touch of what I've learned from outside, of what can be done addedly. So I am not a blind follower. I can never blindly follow. And second is, I am not made for a monotonous life. So how I keep, fueling myself is I am just not limited myself to IIC or my IIC related work. I have developed an entire ecosystem of myself. I would be very happy to say across India, I know people from my name a person from any part of India which is involved in the Indian ecosystem very deeply. I am connected to them. I am connected to a lot of global people. I am associated with some external organizations which kind of pump me or fuel me with new learning, new adventures every day. That kind of balances out my work life as well as my personal thing. So every month I take up one or two new projects and try and finish those projects. I have now started going as a speaker as well to some other organizations. I've started taking workshops, seminars. So I have kind of balanced myself in that way. I have figured out my field, so I look for new opportunities and new projects externally. So that is how I've been doing right now. Super. Great. Very nice. Yes, Pratik, would you like to share? Hello. Yeah, Pratik. Actually, Pratik sir is not here, and I am the employee of Belix Corporation. Sure. So actually, this is the first lecture of this program. Oh, that's all right. Be comfortable. आपको ध्यान में तो आ रहा है ना कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं आप कनेक्ट तो कर पा रहे हो ना? हाँ Great. कर पा रहा हूँ. Great. Yeah. So yes, Shreyas, would you like to? Sorry, Divyaraj, would you like to add on that? Yeah. Okay. Gaurav, are you there? Yes, sir. Yeah, Gaurav, please. Gaurav, are you there?
यस आई एम ऑडिबल। अबे बिल्कुल। यस यस। तो सर मेरा फ्यूल टैंक इस तरह का है कि हम जो कर रहे हैं मतलब वाई क्यों कर रहे हैं और ये करने से क्या होगा और एज अ लॉन्ग टाइम में क्या करना चाहता हूँ, तो उसके लिए ये चीज बहुत जरूरी है। तो वो एक टाइम पे मेरी थिंकिंग प्रोसेस उस माइंडसेट से होती है, तो वो एक फ्यूल टैंक का काम करता है। और जो फ्यूल का काम करता है कि मुझे क्या डिलीवर करना है और इससे मैं क्या ले पाऊंगा और एट अ टाइम मुझे क्या फायदा होगा। तो वो जा रहे पैरामीटर उसके फैमिली को स्टेबल करना है या समथिंग समथिंग थॉट्स, तो वो थॉट्स यहाँ पे फ्यूल का काम करते हैं। मतलब सेल्फ से ही वो फ्यूल जनरेट होता है। सुपर, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ग्रेट, सुपर। और इसको कंसिस्टेंटली आप कैसे मेंटेन करते हो ये फ्यूल? यस 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 सर, कंसिस्टेंटली मेंटेन ऐसे जो अपने टीम गाइस होते हैं या उनसे, तो सर्टन एक टाइम पे कुछ ऐसा स्मॉल टास्क हुआ या कुछ हुआ तो एट अ टाइम उन्हें भी पुश करते हैं वैसे टाइम, भाई ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, अपने को क्यों नीडेड है, तो एट अ टाइम उन्हें बोल के मैं खुद उस चीज से मोटिवेट होता हूँ। परफेक्ट, ग्रेट ग्रेट, सुपर। सो गाइस मैं यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट शेयर कर रहा हूँ आपसे। इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये स्टेटमेंट ये है, लाइफ में मुझे अपने आप से कुछ अचीव करवाना है और मेरे आसपास के लोगों से कुछ अचीव करवाना है। करेक्ट, दैट्स द सिस्टम। लाइफ में मुझे अपने आप से कुछ अचीव करवाना है और मेरे आसपास के लोगों से कुछ अचीव करवाना है। अपने आप से अचीव करने के लिए सबसे पहले मुझे मेरा फ्यूल क्लियर होना चाहिए और लोगों से अचीव करवाने के लिए मेरा एज अ लीडर उनका फ्यूल क्लियर करवाना है। आई रिपीट, अपने आप से काम करवाने के लिए मुझे मेरा फ्यूल आइडेंटिफाई करना है, लोगों से काम करने के लिए मुझे लोगों का फ्यूल आइडेंटिफाई करवाना है। दूसरा, मेरे से काम निकालने के लिए मेरा फ्यूल मुझे किस तरह से रेगुलरली मिलता रहे उसकी पंपिंग सिस्टम मुझे बनानी है और मेरे आसपास के लोगों को जो मैंने हेल्प किया है उनका फ्यूल ढूंढने के लिए वो फ्यूल उनको कंटिन्यूअसली कैसे मिलता रहे उसका मैकेनिज्म मुझे क्रिएट करना है। दैट्स व्हाट द लीडरशिप इज ऑल अबाउट। राइट, राइटली सेड। बाकी लीडर का काम ही क्या है? करेक्ट। So you understand this is the last session of goal setting, and I told you in the very first session that we will literally do the post-mortem of goal setting, and we have tried our level, but just खाली goal को quantify कर दिया, smart कर दिया, and that doesn't happen in that way. This is a very complex system, and you need to understand in this way. That's why step number 4, 5, 6 are very, very crucial, very, very crucial. Anisha, can we have a very quick sharing from you as well? Yes, sir. So, sir, honestly, what I realized, like while goal setting and everything, so whatever I'm doing right now is only to fulfill my personal goals and my in terms of whatever I'm doing professionally, I'm only doing it to fulfill some goals that I have personal. I have some aspirations. That is it. Otherwise, I might be doing some social work somewhere. I won't be doing this job. Perfect. Very nice. Very nice. So it's very important that you have a clarity about your fuel also. So what happens, when you introspect with yourself based on your goals and your fuel, it can many times help you to take right directions or right decisions in your life. And let me tell you one thing. I always believe I am a one person who is completely against entrepreneurship and ownership. I'm sorry, I am least interested in this word called entrepreneurship, because entrepreneurship does not need any kind of a title or any kind of an identification. If you are working as an employee of the company, still you are an entrepreneur, and if you are an owner of the company, still you are an employee.
It has nothing to do, because entrepreneurship and ownership are mindsets. Absolutely true. These two things are absolute mindsets. So that's why I said that identify your fuel and inner drive which you think. So I think anybody would like to willingly, if would like to share, otherwise we can go ahead with the goal tracking sheet ahead. Anybody would like to share about the fuel and how you can continuously maintain that fuel in your system? Anybody? Sir, I would like to go. Yeah, please, Kanisha, please. So I think that for me the fuel it is that our educational game should reach more masses of people and improve the education standard and change it to an extent so that it saves on their time. So the welfare of the learning pattern, the way they are learning, the improvement in that is our fuel. Like that is what motivates me to stick on to this venture of mine, because the way I had studied, so I don't want this next generation of students to study that way and to improve on that. So that is my fuel. And the way I maintain it is because in the long run I also want to make animation movies related to some of our scriptures, so that also can be easily understood by the young generation. So that is also I keep myself, I remind myself, because I am always reading the Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita, so it reminds me of these aim. So that is the way I keep myself motivated, and this is what I get the fuel from. Apart from that, I also go through my visualization and PPTs. So because you say this, that is also helping us with these weekly sessions. Okay, super. Great. So let's get back to the sheet once again before we go for the breakout room. Let me share once again. So write down the benefits was step number 4, and the affirmations and visualization of swim goals and benefits is step number 5 and step number 6. Then we started with step number 7. Step number 7 was planning and action. In planning and action, the first part was obstacles and solutions. We said that okay, what is at that time, we also discussed about, जब मैंने आपको एक वर्ड की शीट दी थी, if you remember, हमने वर्ड का डॉक्यूमेंट दिया था. आइडियली अगर हम लोग फिजिकल सेशन में होते तो इसी के साथ ये कॉपी लगा के हम लोग वहीं एक्सरसाइज करते, बट फिर देन हमारा सेशन क्योंकि ऑनलाइन हो गया तो मैंने सारा का सारा ऑनलाइन में. सो अब यू नीड टू कीप दैट, वो जो शीट जो था आप उसको साइड में रख देना. एवरीथिंग आई हैव कवर्ड हियर. सो दिस इज अ वन मास्टर शीट ओनली. तो इसमें हमने ऑब्स्टेकल्स एंड सॉल्यूशंस यहाँ पर लिखे थे कि भाई ये गोल है तो इसके पॉसिबल ऑब्स्टेकल एंड सॉल्यूशंस क्या क्या है. तो ऑब्स्टेकल्स, ये ग्रे कलर का जो है उसमें आपने ऑब्स्टेकल लिखा और इसके पॉसिबल सॉल्यूशन लिख दिए, और ये सॉल्यूशन कौन कौन सा बंदा पर्सन करने वाला है इसके नाम यहाँ पर आपने लिख दिए. सो यू आर वेरी क्लियर कि भाई ये जो सॉल्यूशन है ये इस बंदे का ड्यूटी है, ये इसका इस बंदे का ड्यूटी है. So that's how step number 7 का जो पहला पार्ट था, which was possible obstacles and solutions, that is here. उसके बाद उसका दूसरा पार्ट आ रहा था टाइम मैनेजमेंट. So in time management we talked about high payoff activity and you all are very clear about it. तो अब हमने क्या किया, अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनिएगा और कोरिलेट करना. अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आकांक्षा का एक एग्जांपल लेता हूं. लिसन वेरी केयरफुली गाइस. अब आकांक्षा क्या करेगी, आकांक्षा ने अपने विन की गोल्स यहां पर लिख दिए. प्लीज विन विन गोल को की गोल से रिप्लेस कर दीजिएगा. आई एम सॉरी, मैंने यहाँ विन विन गोल एक दूसरे प्रोग्राम के पर्सपेक्टिव से लिखा था. तो जब आपके पास ये शीट है तो विन विन गोल जो है वो आपके की गोल्स है, की गोल्स. अब ये की गोल का लिस्ट यहाँ पर है. एक पहला गोल है, सॉरी, जैसे फॉर एग्जांपल एक गोल है ये, दूसरा गोल है ये. ओके, सो आकांक्षा का ये 2 गोल्स है. अब आकांक्षा अपना टाइम शीट बना रही है.
तो हमने आकांक्षा को ऑलरेडी बोल दिया है कि भाई आप एक काम करो, पहले ये डिफाइन करो कि हफ्ते में आप कितना घंटा काम करते हो. से फॉर एग्जांपल शी सेड 50 hours. So for those participants who could not attend time management session, उनके लिए भी ये recap हो जाएगा, quick recap for 5 minutes. तो हमने क्या किया था कि 20% task which produces 80% revenue are known as your high payoff activities. रेवेन्यू दो तरह की होती है. एक रेवेन्यू ऐसी होती है जो आकांक्षा के बैलेंस शीट में इसी हफ्ते या इसी महीने भी रियलाइज हो सकती है, और दूसरी तरह की रेवेन्यू ऐसी हो सकती है कि भाई आज कुछ काम करे तो हो सकता है कि कल उसका रिजल्ट मिले. आज की बैलेंस शीट में, इस क्वार्टर की बेनिफिट बैलेंस शीट में भले ना रिफ्लेक्ट हो, नेक्स्ट क्वार्टर में रिप्लेस होगी. जैसे अंकित भाई ने अपना P200 लिस्ट बनाने के लिए बोला, तो आकांक्षा अगर P200 का लिस्ट बना दिया तो नेक्स्ट वीक के बैलेंस शीट में आ जाएगा? नहीं आएगा. बट अगर P200 का प्रोस्पेक्ट बना दिया, वीकली उस पर 1 घंटा होमवर्क करना, उसको आपने हाई पी ऑफ एक्टिविटी आइडेंटिफाई किया, इसको इस टाइम शीट के अंदर ऐड किया और इसको 4-5-6 वीक कंटिन्यूअसली मैनेज किया, तो हो सकता है यही P200 में से कुछ कस्टमर नेक्स्ट क्वार्टर में बैलेंस शीट के अंदर कन्वर्ट हो. तो व्हाट आई एम सेइंग इज, आपके गोल तक पहुंचाने वाली जो 5-6 एक्टिविटी ऐसी हो जो डायरेक्टली मनी प्रोड्यूस करती है शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग रन में, उसको आप हाई पे ऑफ एक्टिविटी डिफाइन कर सकते हो, और उसके पीछे आपको वीक में कितना टाइम देना चाहिए वो आप टाइम शीट में डाल सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर आकांक्षा बोलती है कि क्लाइंट विजिट मेरे लिए सर हाई पे ऑफ एक्टिविटी है, क्लाइंट का फॉलोअप करना, फिर यहाँ कॉन्ट्रैक्टर वर्ड है बट कुछ भी रिव्यू करना, रिपोर्ट रिव्यू करना, वीकली गोल ट्रैकिंग मैंने आपको बोला है, आपको इस पूरे लिस्ट में एक ही हाई पे ऑफ एक्टिविटी है जो मैंने दी है आपको. बाकी सारी हाई पे ऑफ एक्टिविटी सनी के बिजनेस के हिसाब से होगी, आकांक्षा के बिजनेस के हिसाब से होगी, श्रेयस के बिजनेस के हिसाब से होगी, दिव्यराज के बिजनेस के हिसाब से होगी, प्रतीक के हिसाब से, प्रकाश के हिसाब से. बट इन सब चीजों में एक चीज जो कॉमन रहेगी हाई पे ऑफ एक्टिविटी, वो ये रहेगी, ये शीट को, वीकली गोल ट्रैकिंग शीट को मिनिमम 2 आवर्स रिव्यू करना इज वन ऑफ योर टॉप मोस्ट हाई पे ऑफ एक्टिविटी. ये मैं आपको देख के रहा. और लेट मी टेल यू, एक बहुत अच्छी चीज आपको बताता हूं, लिसन वेरी केयरफुली. सिर्फ ये शीट को आप मेंटेन करना चालू कर दो तो पहले सेशन से आज तक के मेरे लिए हुए जितने भी सेशंस है उसकी सारी लर्निंग ये एक ही शीट में आ गई. मतलब जितना हमने अब तक गोल सेटिंग के सेशन में जितना भी सीखा वो सारा का सारा मैंने इस शीट में डाल दिया है. So you just need to follow this one sheet. I will request all the mentors के अगर पहले सेशन से ये सेशन तक का जितना भी गोल सेटिंग रिलेटेड एक्टिविटी है वो इसी एक शीट में है, तो you personally encourage, motivate, inspire, facilitate, coach, become a soft coach, tough coach, जो भी बनना हो, but make sure that everybody follows this entire goal tracking sheet. तो स्टेप नंबर 7 था प्लान ऑफ एक्शन. उसमें ए स्टेप था ऑब्स्टिकल्स एंड सॉल्यूशंस, बी स्टेप था टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटी मैनेजमेंट. अब आ गया है 8th step. So let me just once again write down here. Let me have a speakers. Drashti, can you convert this to speakers view, please? Okay. Sir, it's on speaker view only.
Okay, can you see this whiteboard, everybody? Yeah. Yes. Huh? Okay. So step number 1 was green. Is it visible? Visible? Is it visible, everybody? Drashti, dekha hai? Okay, perfect. Step number 2, convert dream into smart goal. Step number 3, break goals into milestones. Step number 4, 5, and 6. By affirmation and visualization about your goal and why. Step number 7. The name of step number 7 is plan of action. प्लान ऑफ एक्शन का पहला स्टेप है आइडेंटिफाई ऑब्स्टिकल्स एंड सॉल्यूशंस. B, time management. C, priority management. Priority management is your YTD, MTD, and NTD. So step number 7 was plan of action. In plan of action, there is a part which is obstacles and solutions. Then time management is blocking your time and blocking your high payoff activity in your weekly scheduler. Then C is breaking them into daily, which is your YTD, MTD, and NTD list. So till this 7C, everybody is absolutely damn clear till this step. If yes, then put yes into the chat box. And if you have any query, please unmute and question, or else put your answer into the chat box. Super. Step number 8. Progress card and goal tracking. Okay, Shreyas is saying, okay. Is it not visible? Sir, एकदम જ blurred છે. Okay, let me. What did you say, Shreyas? If you can repeat. Sir, full एकदम જ blurred છે, કાઈ નથી દેખાઈ રહ્યું. એટલે it's always out of focus right now. Okay, તને છેલ્લે કેટલા સ્ટેપ સુધી દેખાય? તો દેખાણું એ જ જે લખ્યું એમાં એકદમ ઓલું થઈ ગયું. Okay, so if okay. Thanks for okay. Thanks for bringing in this, brought into the, let me add into this sheet. Okay, is my screen visible to everybody? Yes.
step number 1 is dreams. I think okay. Now is it clear, Shreyas? I'm writing in the Excel only. Sir, it's better, way better. Okay. Step number 2, convert your dreams into smart goals. Step number 3, break your goals into milestones. Step number 4 is find, clarify your why, benefits in all 6 areas of life. Tangible and intangible both. Step number 5, continuous affirmation of your goal and why. Step number 6, visualization of your goals. Even you can visualize your why also. Step number 7, plan of action. Plan of actions. First part is obstacles and solutions. B part is time management. C part is your YTD, MTD and NTD list. Achha, there is another thing which I missed out, which is D part is if you see here I have written master action plan. All small actions you can put it into this, and that start date and end date we have put here. Owner, accountable and participant definition we in detail discussed last time. For the benefit of everybody, I will request any one participant to go unmute and share the difference in the. This is very important terminology, and which should have a similar definition across your organization. For example, if there is a company where there are 2 partners, so their definition of accountability, participation and ownership has to be absolutely identical. So can any of the participants go unmute or owner, accountable or participant का definition कोई समझा सकता है? Would love to hear from somebody. Yeah, participant is responsible for touch and go. Accountable is touch and stay. While owner is touch, do, stay, monitor and demonstrate. Super. इसको थोड़ा सा explain कर दो ना एक आध example से. Touch and go is like we doing household work के बाहर जाने लेना आविन घर मुकी दीदो. Perfect. Touch and stay is मम्मी के बाहर जाने आयो करीन बना हुआ था पड़े. And touch, do, stay, monitor and demonstrate. Touch and stay is like बेन जारे काम करो वैसे. And touch, do, stay, monitor and demonstrate is मम्मी जारे खाવાનું बनावे. Very nice. So अगर if your mother is owning that job, कि भाई एक मदर खाना बनाकर खाना खिलाने में ओनरशिप रखती है, उसका मतलब क्या है? उसने पार्टिसिपेंट तो श्रेयस को बना दिया कि श्रेयस तू एक काम कर, सब्जी लेके आ जा. अब श्रेयस का काम खाली सब्जी लेके आके खत्म हो गया, मदर को सब्जी दे दिया, तो मदर एक्सपेक्ट यही करती है कि बेटा तू पार्टिसिपेंट का एक काम कर, तेरा काम करके तू अब निकल, अब तू तेरा बिजनेस का काम कर. करेक्ट श्रेयस? हाँ. So that is called participant. Participants mean touch and go. मतलब अपना काम करो, लूप कंप्लीट कर लो और निकल जाओ इस सिस्टम में से.
उस पर्टिकुलर टास्क की सिस्टम में से। टच एंड स्टे का मतलब ये हो गया, अकाउंटेबल पर्सन का मतलब ये हो गया कि भाई सब्जी लेके तो आया है, बट देन इट हैज टू मेक श्योर। अच्छा, अब मान लो वही एग्जांपल, श्रेयस खाना जो है वो मम्मी नहीं बनाती है, रसोई करने अपने खाना बनाने के लिए जो मेड आते हैं वो बनाते हैं, फॉर एग्जांपल। और मदर ने वही चीज आपको ये बोला कि श्रेयस यू आर अकाउंटेबल, आज रात को पाव भाजी ही बनना चाहिए। अब पाव भाजी के लिए जो जो सब्जी लानी है वो मांगी, और यू मेक श्योर दैट वो सारी चीजें अवेलेबल है, वो बहन के हाथ में भी दे दी, उनको इंस्ट्रक्शन भी दे दिया पाव भाजी बनाना है और उनके सामने रख दिया। सो दैट मीन्स you not only went to buy sabji, you also make sure after that purchase has been done, you are making sure it has been well communicated to that person. You also have completed the loop कि आज यही बनाना है, till that you was engaged in communication. Are you getting my point, Shreyas? हाँ sir. That's called accountability. So जो बंदा अकाउंटेबल है उसको हाथ खड़ा करने का राइट नहीं है, यार मैंने तो अपना काम, मैं तो सब्जी लेके आ गया था और वो बहन को बोल भी दिया था कि मम्मी बोल के गई है कि पाव भाजी बनाना है। नो, अगर आपकी मम्मी ने आपको अकाउंटेबल होल्ड किया है, इट मींस यू हैव टू स्टे इन द कम्युनिकेशन जब तक वो पाव भाजी बनना चालू नहीं हो जाए। दैट्स कॉल्ड द अकाउंटेबिलिटी एंड ओनरशिप। अल्टीमेटली योर मदर विल मेक श्योर, फोन आएगा अगर वो बाहर है, अरे श्रेयस सब्जी लेने आई गयो, ओके, બેનને કહી દીધું, ઓકે, બેને ગેસ ચાલુ કરી દીધો, ઓકે, બટાકા બાફવા મૂકી દીધા, ઓકે, પાઉં આવી ગયા, ઓકે. So that means even if she is not doing work, she is not making pav bhaji, but she is making sure even if I am there or not, only pav bhaji will be served in evening. That's what the definition of ownership. So hope guys everybody is clear about these three terms: ownership, participation and accountability. So that's what the step is कि कौन सा डेट, अगर पावर ट्री को का मास्टर एक्शन प्लान बन रहा है या कोई भी कंपनी का आकांक्षा अपना मास्टर एक्शन प्लान बना रही है इसी गोल अचीव करने के लिए, तो एक स्टार्ट डेट डाला, एंड डेट डाला, उसको ओन कौन करेगा, अकाउंटेबल कौन रहेगा, किन किन लोगों को खाली रोल प्ले करके निकल जाना है, एवरीथिंग यू कैन मेंटेन हियर. So step number 7D is your master action plan list. This is going to be weekly or yearly? No, ये गोल वाइज है सनी, मतलब एक गोल को अचीव करने के लिए जितने भी छोटे छोटे टास्क है वो सारे आपने मास्टर एक्शन प्लान में डाल दिए और उसका पर्सन डिफाइन कर दिया, तो दैट ये क्या होता है कि गोल सेट करने के टाइम पे ही आप इसको फिक्स कर देते हो. ओके, व्हेन वी सेटिंग द की गोल. हाँ, की गोल, वही गोल्स को अचीव, की गोल, जो गोल हम यहाँ पर गोल स्पेसिफिक शीट ही बना रहे हैं. राइट, मतलब वो गोल के अलाइनमेंट में जितने गवर्नमेंट का अप्रूवल कराना है, पेटेंट क्लियर करवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है, पैसा लगाना है, इन्वेस्टर को मिलना है, क्लाइंट को मिलना है, ढूंढना है, ट्रेनिंग देना है, एनी डैम टास्क विच यू फील विच इज इम्पोर्टेंट टू अचीव दैट गोल, पुट दोज ऑल टास्क हियर. और गोल सेट करने से पहले उसके अकाउंटेबल ओनर और पार्टिसिपेंट, मतलब ये शीट जिन जिन लोगों के पास रहे वो शीट निकाले और अपना नाम चेक करे, तो उसको पता चल जाना चाहिए कि यार मेरे को ये एक टास्क फटाफट क्लियर कर दे जाने हैं. परफेक्ट, करेक्ट. सो दिस इज अ मास्टर एक्शन प्लान. सो दिस इज 7D. अब स्टेप नंबर 8. स्टेप नंबर 8 says progress card versus goal tracking. So we said that ये आ गया. This is called step number 8. This is called goal tracking sheet. Okay. What is the difference between progress card and goal tracking? Is there anybody who can explain that what we discussed last time? Was it
can somebody apart from, I think Divyaraj, you was there, goal tracking and progress card? Yes, sir. Will be great if you can explain us. A progress card is like something just like a differentiation of numbers, like what you have done and what out of that you have achieved, like that. And according to the difference that makes it happen is like what went wrong, what have what's good that you made that week or that goal happen. Also, what can you do? What can you do better to achieve that goal? So that thing I understand. What? Perfect. Yeah. Let me share with this. I want you all to understand this sheet very carefully. Let us go by 2 examples. अच्छा, जैसे हम में से कोई ऐसा है जिनके घर में कोई छोटा भाई बहन या कोई भी बोर्ड एग्जाम या कॉलेज में कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम दे रहा हो, आई एम जस्ट सेइंग बोर्ड एग्जाम में हो, या ऐसा कोई है? इज देयर एनीबॉडी? ओके, चलो लेट मी अज्यूम, लेट मी टेक एन एग्जांपल. दिव्यराज का घर में कोई यंगर ब्रदर और सिस्टर बोर्ड एग्जाम दे रहा है. ओके, अब दिव्यराज ने पूछा कि भाई तेरा प्लान क्या है इस नेक्स्ट 3 महीने में? तो उसने बोला कि भाई मैं स्कूल की एग्जाम में 80% मार्क्स लाऊंगा और क्लास की जो 3 एग्जाम होने वाली है उसमें मैं 75%, 80% और 85% मार्क्स लाऊंगा. ये मेरा प्लान कॉलम आ गया दिव्यराज? ये मेरा प्लान आ गया? यस सर, हाँ प्लान. ओके, अच्छा, अब इस प्लान को अचीव करने के लिए मैं ये सारी एफर्ट वीकली लगाऊंगा, ऐसा करके उसने ये शीट मेंटेन कर रहा है कि भाई इस वीक में मैं मैथ्स के 3 चैप्टर कंप्लीट करूंगा, साइंस के 2 चैप्टर कंप्लीट करूंगा, इंग्लिश के 4 चैप्टर कंप्लीट करूंगा, इंग्लिश की वो टेस्ट दूंगा, मैथ्स की वो टेस्ट दूंगा, मैथ्स का ये टेस्ट पेपर क्लियर करूंगा. ये सब एफर्ट प्लानिंग में आ गया. रिजल्ट प्लानिंग में अपना परसेंटेज वाला आ जाएगा. अब 1 हफ्ते बाद एग्जाम है और उसने सामने इधर 75% प्लान किया था और अचीवमेंट आया 65%. सेम वे सनी ने प्लान किया था 25 लाख रुपए का बिजनेस और अचीव हुआ 15 लाख रुपए का बिजनेस. दूसरे वीक में सनी ने प्लान किया था 35 लाख रुपए का बिजनेस और हो गया 75 लाख का बिजनेस. ज्यादातर लोगों को जब गोल ट्रैकिंग के बारे में पूछा जाता है तो उनकी अंडरस्टैंडिंग यही होती है, हम कितना प्लान किया था और उसके सामने हमने कितना अचीव किया. जब इसका हम प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं तो उसको गोल ट्रैकिंग बोलते हैं. शनि, इज दैट करेक्ट? लोग ये सोचते हैं. यस. ओके, तो आप ये गोल ट्रैकिंग वाला पार्ट में नहीं थे ना लास्ट वीक में? नहीं, लास्ट वीक नहीं. तो मैंने लास्ट सेशन में बहुत ही क्लियरली बोला था, प्लान वर्सेस अचीव्ड को हम गोल ट्रैकिंग नहीं बोलेंगे आज के बाद. राइट. प्लान वर्सेस अचीव्ड आपको सिर्फ प्रोग्रेस कार्ड दिखाता है. योर प्रोग्रेस कार्ड इज नॉट योर गोल ट्रैकिंग. राइट. जब आप अपनी प्रोग्रेस कार्ड को ये 4 क्वेश्चन पूछते हो तो उसको हम गोल ट्रैकिंग बोलते हैं कि भैया 75% प्लान किया था, 65% अचीव किया, या 25 लाख धंधे में प्लान किया था और 15 लाख अचीव किया. इन सब को अचीव करने के लिए तुमने और तुम्हारी टीम ने क्या अच्छा किया? तुम और तुम्हारी टीम लास्ट हफ्ते में और क्या अच्छा कर सकते थे? तुम और तुम्हारी टीम नेक्स्ट वीक कौन से एक्शन लोगे?
जो एक्शन डिफाइन किया है वो कौन कौन पर्सन लेगा? सनी लेगा, मयंक लेगा, सनी और मयंक दोनों लेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड माय पर्सनल फेवरेट, ये ऑर्गेनाइजेशन लास्ट वीक में क्या सीखा? तो जब ये शीट आपके पास पूरी रेडी होगी तो इसको हम गोल ट्रैकिंग बोलते हैं। यहाँ जो येलो हाईलाइट किया हुआ है इसको हम प्रोग्रेस कार्ड बोलते हैं, और जो ग्रीन हाईलाइट किया है उसको हम गोल ट्रैकिंग बोलते हैं। लेट मी रिपीट वंस अगेन। येलो हाईलाइट जो है वो प्लान वर्सेस अचीव्ड है। दिव्या, जो आपने बोला उसको मैं प्रिसाइज लैंग्वेज में वापस रिपीट करता हूँ। येलो हाईलाइटेड जो पोर्शन है वो प्लान वर्सेस अचीव्ड है, और बाकी का जो पोर्शन है ग्रीन वाला वो गोल ट्रैकिंग वाला पोर्शन है। यस सर। सो एवरीबडी क्लियर? श्रेयस, आर यू क्लियर? Yes, sir. Everybody, can I request everybody to unmute and say if you are clear till this part, plan versus achieve and tracking? Yes, you can, clear. Yeah, you can go unmute and answer. So this is step number 8. Progress card versus goal tracking. Step number 9. Very very important. जैसे स्टेप नंबर 4 वाई था, और स्टेप नंबर 5 और 6 जो था वो स्पेस्ड रेपिटेशन ऑफ वाई एंड व्हाट है। स्टेप नंबर 4 इज स्टेप नंबर 1 2 3 इज योर व्हाट, step number 4 is your why, and step number 5 and 6 is your repetition of what and why. Yes or no? Yes. I repeat once again. Step number 1 2 and 3 आपका what है, step number 4 आपका why है, स्टेप नंबर 5 और 6 आपका रेपिटेशन ऑफ व्हाट एंड व्हाई है, स्टेप नंबर 7 8 9 आपका हाउ है। लेट मी वंस अगेन रिपीट इट। स्टेप नंबर 1 2 3 आपका व्हाट है, स्टेप नंबर 4 आपका व्हाई है, स्टेप नंबर 5 और 6 आपका रेपिटेशन ऑफ व्हाट एंड व्हाई है, स्टेप नंबर 7 8 9 आपका हाउ है। Yes, the golden circle. Okay, now remember one more important thing. स्टेप नंबर 8 का मल्टीपल रेपिटेशन स्टेप नंबर 9 है। मतलब ये गोल ट्रैकिंग एक हफ्ते नहीं करना है, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन एंड करेक्टिव डिसीजंस इन गोल ट्रैकिंग शीट। Step number 9 is repetition of step number 8. सनी, समझ में आ रहा है? Yes. दिव्यराज? Yes sir. Drishti, is it easy to understand, Drishti? સર તમે મારું નામ લીધું મને ખબર, હું મારા હેડફોન્સ સાથે સ્ટ્રગલ કરી. No, that's okay. I'm saying, did you go through the flow? Was you there? Yes not? sir. Yes. Sir, I was there, but I have gone through the flow. મેં લખેલો છે 8th અને 9th point add કરું છું. See, because we are closing this loop today, I do not want to leave one stone untouched. That's why continuously I am repeating many things continuously. So let me last time one more time repeat it. Step number 1 2 and 3 is your what to achieve. Step number 4 is your why to achieve.
Step number 5, 6 is your repetition of what to achieve and why to achieve. Step number 7, 8 and 9 is your how to achieve. Step number 9 is a continuous repetition of step number 8. तो जैसे शीट में बताता हूँ, जैसे ये ट्रैकिंग शीट हो गया आपका, कहाँ गया, ये रहा, ओके। अब ये 1 वीक का है, तो अब मैं आपको थोड़ी इसकी हम बोलते हैं ना स्पिरिचुअल भाव यात्रा कराता हूँ। तो सी फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई ऐसा स्टार्टअप है जिसमें 2 या 3 पार्टनर है, क्विकली अनम्यूट करके इफ यू कैन से यस, कितने लोग ऐसे हैं जिसमें एक से ज्यादा पार्टनर है? Yes. Yes, sir. So Sunny is there, Shreyas is there. Who else is there? Yes, sir. We do have. Divyaraj. Okay. So let me take this example. Sunny, आप लोग कितने लोग हो पार्टनर में? 3 लोग सर। Okay. दिव्यराज आप लोग कितने हैं? 2 सर। 2। और श्रेयस आप लोग? 2 सर। Okay. Now listen very carefully. थोड़ी देर के लिए ऐसा अज्यूम करो कि राइट नाउ हमारा सेशन नहीं चल रहा है, आप लोगों का ग्रुप मीटिंग चल रहा है, पार्टनर्स का ग्रुप मीटिंग चल रहा है। लेट अस अज्यूम इन दैट। और ये शीट आप आज से ही शुरू कर रहे हो, आज सेशन खत्म हुआ और आप इसी शीट से शुरुआत कर रहे हो शाम को। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि यहां पर आने वाले हफ्ते में क्या क्या आप प्लान करोगे, वो प्लान यहाँ पर लिख दोगे रिजल्ट का। तो जैसे सनी लिखेगा कि इस वीक में हमारा प्लान है या तो 20 लाख रुपए का सेल है, या हमें 5 लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट का पिचिंग करना है, किसी के केस में कुछ भी गोल हो सकता है, की गोल। अच्छा, ये जो क्वांटम है ना येलो का ये जो पहला रो है वो आपका स्टेप नंबर 3 है, ब्रेक द गोल इनटू माइलस्टोन। राइट। जो मैंने आपको बोला था कि ब्रेक द गोल इनटू माइलस्टोन का जो ये जो स्टेप है वो यही वाला स्टेप है। राइट। दिव्यराज क्लियर? Shreyas, are you clear? Yes, sir. Okay. Can I request all the mentors to give their also feedback? Deep, Drashti, Shipra, Anisha, are you guys absolutely clear? This column is the step number 3 वाला जो break the goal का जो portion था वो ये है, यहाँ पर है। Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Great. So अब इसको अचीव करने के लिए एफर्ट क्या क्या करेगा वो भी शनि आप लोगों ने एज अ टीम लिख दिया कि चलो यार इस हफ्ते अपने को 20 लाख रुपए अचीव करने हैं, कैसे करेंगे। तो एज अ टीम सब पार्टनर ने मिलकर स्ट्रेटेजी बना दी कि भाई एक काम करेंगे, सबसे पहले 5-10 लोगों को कॉल करेंगे, 2-5 विजिट करेंगे, 5-6 रेफरेंसेस मांगेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पेमेंट का कलेक्शन करेंगे, टीम से डिस्कशन करेंगे, किसी का हेल्प मांगेंगे, कोई ट्रेनिंग करेंगे, कोई साथ में ये एक्टिविटी करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसी एफर्ट जो ये गोल अचीव करने में हेल्प करेगी, वो सारे एफर्ट्स यहाँ पर लिख दिए आपने। यस। परफेक्ट, ओके। अच्छा, आप एफर्ट को करने के लिए मास्टर एक्शन प्लान की शीट का भी हेल्प ले सकते हो, वहां से भी आपको कुछ एक्शंस मिल जाएंगे जो आप यहाँ पर वीकली गोल ट्रैकर में मेंटेन करोगे। करेक्ट। सो अब ये प्लान हो गया। अब पहले वीक में तो क्या होगा सनी, इतना करके काम खत्म हो जाएगा, यस और नो? यस। क्योंकि आज से ही तो स्टार्ट कर रहे हो। राइट। तो पहले वीक में मतलब आज से अगर आप ये शीट मेंटेन करना चालू करोगे तो पहली बार तो खाली ये पहला कॉलम फिल करके आपका काम खत्म हो जाएगा। राइट। अब लेट अस अज्यूम कि 1 वीक के बाद आप वापस ये शीट खोल के बैठे हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी टाइम शीट में डिसाइड कर दिया है कि हफ्ते का 2 घंटा गोल ट्रैकिंग को देना है। राइट। अब वापस सारे पार्टनर्स आ गए,
अरे यार हमने प्लान किया था 20 लाख और अचीव किया 15 लाख। तो पहले क्या करो, इस कॉलम में एक्चुअली जो हुआ है उसको लिख दो, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ। अंकित भाई ने सबसे पहले सेशन में एक बहुत ही ब्रिलियंट एक्टिविटी करवाई थी, इट टच्ड माय हार्ट। कौन सी मालूम है? सर्कल बनाने के टाइम पे सर्कल गिनो मत, डू नॉट डिवाइड योर एनर्जी। तो जब आप प्लान के सामने अचीव लिखो ना, तब मेहरबानी करके यार ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, प्लीज डोंट गेट इनटू इट। स्कोर कार्ड का मतलब आप बच्चे को क्या पूछोगे, बेटा कितना प्लान किया था और कितना अचीव हुआ? बोलेगा पापा मैथ्स में मैंने 40 में से 40 प्लान किया था, 4 आया। साइंस में मैंने 40 में से 32 प्लान किया था, 8 आए। इंग्लिश में मैंने 40 में से 32 प्लान किए थे, 25 आए। अब वो बेचारा अपना प्रोग्रेस कार्ड दिखा रहा है ना, उसके टाइम पे पोस्टमार्टम मत करो। दिस इज अ वेरी गुड टिप्स फॉर पेरेंटिंग ऑल्सो। डोंट डू प्रोग्रेस कार्ड एंड पोस्टमार्टम विथ अ वन माइंडसेट एट द टाइम। तो पहले खाली उसके सामने जो हुआ उतना लिख दो। तो सनी ने लिखा 15 लाख, ये हुआ, हाँ हो गया ये हुआ, ये हो गया, ये हुआ, पेंडिंग है, ये हुआ, नहीं हुआ, ये हुआ, नहीं हुआ। जिसके सामने जो प्लान किया था उतना अचीव हुआ कि नहीं वो लिख दिया। तो अब ये प्लान कितना किया था और अचीव कितना हो गया उसका लिस्ट रेडी हो गया। सनी, दिव्यराज, श्रेयस, आकांक्षा, एवरीबॉडी प्लीज, ऑल द स्टार्टर्स प्लीज। यस सर। आकांक्षा, आर यू देयर? Yeah, I'm here. हाँ, ओके। तो प्लान वर्सेस अचीव्ड आपका रेडी हो गया। अच्छा, अगर आपका प्लान वर्सेस अचीव्ड रेडी हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे हमारी लैंग्वेज में? प्रोग्रेस कार्ड। प्रोग्रेस कार्ड। सुपर सुपर सुपर। इट्स अ प्रोग्रेस कार्ड। अब ये प्रोग्रेस कार्ड पे गोल ट्रैकिंग एज अ टीम चालू करो। अब धीरे धीरे सभी पार्टनर्स को 5-5 मिनट, जैसे मैं और अंकित भाई हम लोग आपको सब लोगों को एक टॉपिक देके कुछ टाइम देते हैं बोलने के लिए। हम बोलते हैं 30 सेकंड, बट आप 1 मिनट 1.5 मिनट ले लेते हो। सो सिमिलरली वी गिव दैट स्पेस टू यू, सेम वे यू गिव दैट स्पेस टू एवरीबॉडी। तो सनी, एक एग्जांपल लेते हैं। सनी, तुम्हारे 3 पार्टनर का नाम बोलो। मयंक, वंश एंड मी। ओके। अब सनी क्या करेगा कि चलो मयंक, वंश, सबको मैं 5 मिनट का टाइम देता हूं और इस वीक में हमने ये 20 लाख के सामने 15 लाख अचीव किया और इतनी एफर्ट के सामने इतना अचीव किया, तो हमने एज अ कंपनी क्या क्या अच्छा किया। जस्ट सोचो 5 मिनट के लिए। तो सब लोग सोचेंगे और फिर तो सनी भी सोचेगा, मयंक भी सोचेगा, वंश भी सोचेगा। उसके बाद वो सब लोग उसका डिस्कस करते हैं कि चलो क्या क्या किया। तो मयंक अपने पॉइंट देगा। अच्छा, इसमें एक मैंने खुद ने क्या किया, एक मेरी टीम ने क्या किया, दोनों पर्सपेक्टिव से सोचेंगे। तो वंश ये सोचेगा कि एक वंश ने खुद ने क्या अच्छा किया इस गोल को अचीव करने के लिए और एक पूरी टीम ने क्या अच्छा किया। तो सबसे पहले आपने उसके शेयरिंग स्टार्ट कर दिए, वो शेयरिंग आ गए आपके पास। फिर चलो 20 लाख के सामने 15 लाख किए और क्या क्या अच्छा हो सकता था, सोचो सब लोग। 5 मिनट उसके लिए देते हैं। तो मयंक सोचेगा, वंश सोचेगा, सनी सोचेगा, दिव्यराज भी सोचेगा, उसका पार्टनर भी सोचेगा, श्रेयस भी सोचेगा, उसका पार्टनर भी सोचेगा, आकांक्षा भी सोचेगी, सप्तकी भी अगर उसमें बैठा है तो वो भी सोचेगा। लिखो, शेयर करो। और अब बोलेंगे चलो ठीक है, जो हुआ वो हुआ, भूल जाओ। नेक्स्ट वीक क्या क्या करोगे? तो यहां पर नेक्स्ट वीक के एक्शन प्लान आ गए।
सनी बोलता है गांधीनगर में एक विजिट करके आएंगे, इधर विजिट करके आएंगे, इसको मिलके आएंगे, उसको मिलके आएंगे, इसको फोन करेंगे, ये करेंगे। उसका पार्टनर भी बोला ऐसा ऐसा कोई लंबा लिस्ट आ गया। फिर धीरे से देखेंगे, चलो भाई हर एक्टिविटी का ओनर कौन, तो यहाँ हूं में आपको ओनर लिखना है उस एक्टिविटी का। तो शेयरिंग चाहे किसी ने भी किया हो, ओनर यहाँ पर लिख देंगे, बोलेंगे कि ओके ये एक्टिविटी सनी करेगा, ये एक्टिविटी वंश करेगा, ये एक्टिविटी मयंक करेगा, ये एक्टिविटी सनी करेगा, ये एक्टिविटी भी सनी करेगा, ये मयंक करेगा, ये मयंक करेगा, दैट वे। और हम हमारे बिजनेस में लास्ट हफ्ते क्या सीखे, धंधे ने और कस्टमर ने और दुनिया ने हमें क्या सिखाया, उसके कुछ 4-5 पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए। और नेक्स्ट वीक का प्लानिंग कर दिया, एंड रिजल्ट प्लानिंग की। ओके चलो नेक्स्ट वीक है तो अभी इस हफ्ते में 35 लाख करेंगे, और ये 35 लाख करने के लिए ये सारी एफर्ट्स करेंगे। और यहाँ पर क्लोज हो गया, तो आपकी आइडियल ट्रैकिंग होगी यहाँ से चालू। ये जो मैं येलो में जो दूसरा कॉलम है वहां से आपका चालू होगा नॉर्मली। आप यहाँ से चालू, क्योंकि प्लान वाला तो आप अगले वीक में लिख के बैठे थे, यहाँ से आपने पहले अचीवमेंट लिखा और यहाँ पर ये 3 आपने ऑब्जर्वेशन डाला, 4-5 कॉलम। और फिर दूसरे हफ्ते आपने नेक्स्ट वीक का प्लान करके अपनी रिव्यू मीटिंग, बोर्ड मीटिंग खत्म की। अब मैं आप तीनों को पूछता हूँ, आकांक्षा यू ऑल्सो कैन पार्टिसिपेट, प्रतीक यू ऑल्सो कैन। ध्यान से सुनना, ये 5 कॉलम फिल करने के लिए कितना टाइम चाहिए आपको? अगर आप एज अ पार्टनर सब डिस्कशन कर रहे हो, कितना टाइम चाहिए? लेट्स गो वन बाय वन। सनी 1 hour. दिव्या राय सर 1 hour. श्रेयस Sir, 1.5 hour depending on. 1.5. Akansha? Same 1 hour. Pratik, are you there? He is still out of. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये 1-1.5 घंटा, सनी, इज इट डूएबल? Easily, yeah. Important? Very much. Okay. High value activity. High payoff activity. Perfect. Shreyas, same question to everybody. Doable? Yes, sir. Important? Very much. Divya Rai? Yes, sir. Doable. And important and as very well? much important. Yeah. Okay. Akanksha? Yeah, very important. Okay, great. तो आप सब लोगों ने बोला 1 घंटा 1.5 घंटा उसमें चाहिए, और मैंने अब ये सब करने के लिए, अब जैसे ये बन तो गया, अब उस हिसाब उसके बाद हफ्ते में 50 घंटे काम करने के आने भी वाले हैं। सनी, यस और नो? यस। तो आपने क्या किया, हल्के से ये माई टाइम शीट में ओपन की, लास्ट वीक का डेटा पूरा निकाल दिया, 0 डाउन कर दिया, और इधर आपने वापस अपने कुछ हाई पी ऑफ एक्टिविटी लिख दिए। ओ, इस हफ्ते ये गोल करना है। सनी को लगा कि यार इस हफ्ते मेरे पार्टनर्स ने मुझे क्लाइंट्स विजिट पे बहुत ज्यादा फोकस करने के लिए बोला है, तो मेरा क्लाइंट विजिट हाई पी ऑफ एक्टिविटी है। मेरे पार्टनर्स चाहते हैं कि मैं इस हफ्ते में 10 क्लाइंट को मिलूं, तो मेरा 20 घंटे जाना चाहिए। और मेरे पार्टनर्स ने बोला है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ जो मीटिंग करना है वो भी सनी ही करे, और उसमें मेरा 10 घंटा जाने वाला है। और मेरे पार्टनर्स ने बोला है कि ये 2 एक्टिविटी के अलावा तीसरा कोई हाई ऑफ एक्टिविटी पर मैं फोकस ना करूं। तो सनी, तुम्हारा टाइम पिक्चर क्लियर हो गया है इधर? यस, करेक्ट। सेम ऐसा एक टाइम पिक्चर मयंक बना देगा, सेम ऐसा टाइम पिक्चर वंश बनाएगा। सबका हाई पी ऑफ एक्टिविटी क्लियर, सबका टाइम पिक्चर क्लियर, डुप्लीकेसी ऑफ जॉब खत्म, प्रोडक्टिविटी एट पीक। राइट। तो वहीं के वहीं बैठे बैठे सबने अपना टाइम पिक्चर और हाई पी ऑफ एक्टिविटी भी बना दिया। मतलब आपका वीकली प्लानिंग भी बन गया और आपका टाइम टेबल भी बन गया। यस guys, I hope you able to relate this completely.
तो उसमें एडिशनल 1 घंटा आपका चले गया। तो इसीलिए मैंने आपको 2 से 3 घंटा पकड़ा था। मैंने 2 से 3 घंटा पकड़ा है गोल ट्रैकिंग में, और एक इधर लिख दिया गोल ट्रैकिंग। ये हो गया अपना 3 आवर्स अ वीक, आराम से 33 आवर्स हाईवे ऑफ एक्टिविटी आ गए। यस, करेक्ट। तो ये रिवाइज्ड शीट भी मैं दृष्टि के साथ शेयर कर दूंगा, जिसमें हमने पहले 10 स्टेप्स भी लिखे हुए हैं। तो ये 9 नंबर आ गया कंटिन्यूअसली। अच्छा, ये कंटिन्यूअसली करने से 2 चीज होगी। एक, पहले 2-3 हफ्ते आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ेगा क्योंकि नया है, इसलिए स्पेस रिपीटेटिवली करते करते आपको आइडिया भी आ जाएगा। और इससे जो सबसे अच्छी बात ये होगी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फीडबैक का कितना इम्पोर्टेंस है, ये आप जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन 15, 20, 25 से ज्यादा एम्प्लॉय की हो जाएगी तब आपको प्रैक्टिकली महसूस होगा। थियोरेटिकली हम सब जानते हैं। ये गोल ट्रैकिंग शीट आपके गोल्स के रेगुलर फीडबैक आपको हफ्ते हफ्ते में देती रहेगी। एंड इमेजिन, अब ये मेरा क्वेश्चन सारे स्टार्टअप से है, जस्ट इमेजिन, विजुअलाइज करना। जैसे दिव्यराज को मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ, दिव्यराज, अगर तुम्हारे पास 15-20 हफ्ते के कंटिन्यूअस ऐसे रिकॉर्ड हो, जो कॉलम में अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पिछले 15 हफ्ते में आपकी कंपनी ने कौन कौन सी अच्छी प्रैक्टिसेस की है, पिछले 15 हफ्ते में आपकी कंपनी ने कौन कौन सी चीजें जो वीक ऑन वीक अच्छी कर सकते थे उसका भी रिकॉर्ड है, और आप 2-3 महीने बाद ये शीट एक साथ में रिव्यू करो, तो कंपनी के लिए कितना अच्छा स्ट्रेटेजिक डेटाबेस क्रिएट होगा। यस सर। और मतलब एक पूरी सिस्टम पता चल जाएगी कहाँ से कहाँ तक आ गए। एब्सोल्युटली। और ये पोर्शन आपको मालूम है, मेरा एक स्टडी ये बोलता है, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने लर्निंग गोल बहुत गलत तरीके से निकालता है। एक्चुअली लर्निंग गोल इस तरह से निकलने चाहिए। अगर यहाँ पर आपके पास 15 हफ्तों की लर्निंग ट्रैक के साथ की हुई है, तो आप इसमें से निकाल सकते हो कि ओके हमारा गोल इसलिए नहीं अचीव हो रहा है क्योंकि मयंक के पास इन सब्जेक्ट की ट्रेनिंग नहीं है, वंश के पास ये सब सब्जेक्ट की ट्रेनिंग नहीं है, और सनी मेरे को यहाँ पर, नॉर्मली मैंने क्या देखा है, तीनों पार्टनर मिलके एक ही कोर्स में सपोज एनरोल कर देते हो, जबकि ये आपको स्टैटिस्टिकली फैक्ट एंड फिगर दिखाएगा कि यार मयंक जो है ना, वो जीएसटी में इतना टाइम दे देता है जिसकी वजह से उसका दूसरा काम नहीं हैम्पर होता है। तो आप इसको पहले तो जीएसटी का और नॉर्म्स का एक कोर्स करवा दो। पता चला कि वंश जो है वो हमेशा प्रोडक्ट में कुछ क्वालिटी कंट्रोल करता है और बाद में वही बैक एंड फोर्थ होता है, ये यहाँ से पकड़ाएगा। तो बोले एक काम करो, वंश को इसका ट्रेनिंग दो। कंपनी बोलती है यार ये सनी इतने सारे कस्टमर को मिलता है, खाली 10% ही क्लोज करता है। अगर यही सनी 10 की जगह पे 30% क्लोजिंग करे तो ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू कहाँ पे जाएगा। सनी भले सेल्स में अच्छा है, उसको एडवांस सेल्स की ट्रेनिंग दो। अच्छा, ये नहीं बनाते हो तो भी आप लाइफ में कुछ तो लर्न करने ही वाले हो। अब वो लर्निंग कितने आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइनमेंट में है कि नहीं है, दैट इज $1 million क्वेश्चन। बट वन थिंग इज फॉर श्योर, इफ यू फॉलो दिस शीट you will hit the nail. So this is a very profound system. जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाए, इसको आपको सीआरएम में ले जाना हो, इसको आपको कोई सॉफ्टवेयर में ले जाना हो, इट इज योर चॉइस। मैंने यहाँ पर फंडामेंटल टूल आपको दिया है। वेयर यू शुड मैनेज दिस इज नॉट माय कंसर्न, बट दिस हैज टू बी मेंटेन्ड। So this is how step number 9, this is the step number 9. Any guess what is the step number 10?
Can you read out, Divyaraj? Achieve and celebrate the success. ये तो चाहिए. Why success needs to be celebrated? एक बार मैंने एक सेशन में मैंने 2 रीजन बताए थे. And at that time I said कि जब goal setting process आएगी तो मैं थोड़ा सा उस टाइम पे शेयर करूंगा. If anybody remember, celebration motivates and inspire people. That's the number 1 reason. And second one is my personal favorite. Celebration is a psychological exit of past glory. Next. Celebration is a psychological exit of past glories. नहीं तो क्या होगा, सनी एक ऑर्डर कंपटीशन से लेके आया मार मचोड़ के, और उसके दिमाग में वो सक्सेस घूमती रहेगी. देखा, मैं तो कंपटीशन को तोड़ के ऑर्डर लेके आया था, कंपटीशन को तोड़ के ऑर्डर लेके आया था. मान लो 20 लाख रुपए का ऑर्डर लेके आया. आई एम सेइंग 20 लाख रुपए का ऑर्डर है, प्रॉफिटेबिलिटी 10% है, तो 2 लाख रुपए प्रॉफिटेबिलिटी है. आई एम सेइंग उसके अंदर से 5% एक मार्जिन निकाल के गो एंड ब्लडी हेल सेलिब्रेट समवेयर. Yes. And don't come to me tomorrow and say that I cracked this order. Gone is gone. True. So that's why. And इसीलिए आप देखना, हमारे शास्त्रों से लेके, रिलीजियस जगह से लेके, एक मंदिर बनता है तो वो लोग सेलिब्रेट करते हैं. एक नई कंपनी बनती है तो एक सेलिब्रेट करते हैं. एक नया प्लांट खड़ा होता है तो सेलिब्रेशन करते हैं. एक नए घर में जाते हैं तो सत्यनारायण की पूजा करवाते हैं. So that's why celebration is not just a fancy term. If you see scriptures, personally, professionally, spiritually, हर जगह पे celebration का एक बहुत ही जबरदस्त इम्पोर्टेंस है. जैसी सक्सेस वैसा सेलिब्रेशन. Smaller the success, make that kind of celebration, but enjoy each and every success. So hope these 10 steps are we are completing the goal setting process here. I will share this sheet. Let me have I will stop my screen now, and let's have a quick 30-second sharing from everybody about how did you find this 10 steps of goal. This is complete post-mortem of goal setting process. So let us hear from everybody who would like to willingly share. Be quick, and we need to do a lot of things with communication skill also. Yeah. So who will start? Let me. Anybody would like to share willingly? What is your take on 10-step goal setting process? I can go. Yeah, please, Sunny. So it is a kind of wonderful experience, and I'm thinking that is data is a new oil, and if I'm able to do continuously 10 steps, I'm able to feel that my team is going to perform extraordinarily well. So we'll have an experience in probably next 2 to 3 weeks. Okay. You remember Ankit Bhai said one thing. Replace the word if with the word called when. Yes. When I will do this, I will experience this. Absolutely. I am a good listener. Huh? Yes. Yeah. Okay. Good. Who next? Sir, I would like to ask a small question. Like these steps and all, what I feel first, I will tell you that I feel that this will really help us and will help us stay focused, and also like the visualization and affirmations will help us during our time when we want to escape or something like that. So my question is, but sir, this seems to be very we have to we'll have to make a lot of effort to do it, meaning right now we are doing it when we have these weekly sessions, but after that when there is nobody to ask us, that time we should keep ourselves motivated to do this activity.
so that it helps us. That is what I feel, but I am still, I would like to know your thoughts also on that. So what comes in your mind? In my mind, it comes that, during the week, what happens is there are some activities and we get sometimes involved, and then, it gets pushed to the next day. Like, for example, I only wanted to fill this sheet when you told last, this thing, when you told on, I think Saturday. So that time, but then I couldn't fill it. So then I will fill it now. So that I have a very straight answer. Normally, I'm a straight talker, so I will have a straight answer to that. 13% people earn 87% of success on this planet only because of that reason only. Okay. Remaining 60% people already know what they are supposed to do. Okay. Those 13% people, they only have that additional courage to make sure that learning has to be applied also. Answer to this question would be, the more, see, ultimately you lack energy. See, why people don't do goal tracking? Principally, they lack two things. Either they lack energy or they lack time management or priority management. Okay. I don't think so. Or third is they are not interested. So let's not talk about that third one. Okay. I appreciate that third one because at least they have a power of choice that I am not interested. I'm happy with those people. Okay. Step number 2. पहले आप अपना टाइम मैनेजमेंट को ठीक कर लोगे ना, तो that will help you immensely. And फिर भी अपना जिस टॉपिक पे मैंने आज सबसे ज्यादा टाइम लिया, रूट कॉज वही है. Do I have a fuel? Okay. Your fuel will make sure that your car runs. Okay. Hope I have answered your question. Yeah, sure. Yeah, okay. So I will tell you one thing. Since she is, and her question is absolutely practical question. Let me tell you one thing. It's not like that, she asked it so innocently, but it's a very practical question. मैं आपको बताऊंगा आकांक्षा, आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, थियोरेटिकल आंसर नहीं दूंगा. जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को कंसल्ट करते हैं, जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ कोच ऑन बोर्ड होते हैं, जब मैं और अंकित भाई, तो दे ऑल्सो हैव द सिमिलर प्रॉब्लम. भले ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी 50 करोड़ की है, बट उनके पास ताकत थी कि अब तक तो 100 करोड़ की हो जानी चाहिए थी. यही छोटी छोटी चीजें कि रेगुलरली गोल ट्रैक नहीं करना, फीडबैक नहीं लेना, यही सारी चीजें उनको कहीं ना कहीं स्टॉप करती है अपने ग्रोथ तक अचीव करने. So what first step we do normally? We make sure organization में एक हफ्ते में 3 घंटा undivided, uninterrupted, without mobile or any external interruption, organization का board meeting हो पार्टनर्स का. मतलब अगर दिव्यराज ने और उसके पार्टनर ने ये डिसाइड किया कि फ्राइडे इवनिंग 6 to 8 हम लोग बोर्ड मीटिंग करेंगे, बोर्ड मीटिंग में ये गोल ट्रैकिंग शीट आप रिव्यू करेंगे, और अगर दोनों में से एक पार्टनर सपोज उस मीटिंग में नहीं है, फॉर एग्जांपल दिव्यराज ने आज मुझे बोला कि सर हम लोग फ्राइडे शाम को मीटिंग करेंगे, और मैं आज दिव्यराज को क्वेश्चन पूछता हूँ कि दिव्यराज, उसका मतलब ये हुआ कि 4 हफ्ते के बाद अगर फ्राइडे को 6:30 बजे मैं तेरी ऑफिस में नॉक करता हूँ, तो तुम दोनों पार्टनर गोल ट्रैकिंग शीट खोल के बैठे होने चाहिए. दिव्यराज आंसर मी प्लीज, यस और नो? यस सर. अच्छा, अब सपोज 4 हफ्ते के बाद, ये बात मेरी ध्यान से सुनना, अब 4 हफ्ते के बाद मैं अगर दिव्यराज की ऑफिस में वॉक इन करता हूं और दिव्यराज अकेला है वहां पे, सी फॉर एग्जांपल, और गोल ट्रैकिंग नहीं हो रहा है, तो अगर दिव्यराज इज अ डैम कमिटेड पर्सन इन दैट 13%, तो मैं उसको ये क्वेश्चन पूछूंगा, इज योर पार्टनर हैविंग मेडिकल इमरजेंसी? Is your partner having family emergency? Somebody passed away in the family sadly? Your partner is sick? Or your partner is on family chutti? If these 5 are not the reasons, there is
no sixth reason exists on this planet, his partner should not be in that room. You have to show that kind of discipline to this. मतलब यहाँ पर मैं थोड़ी और एक हार्श लैंग्वेज यूज करता हूँ जो नॉर्मली मुझे पब्लिक सेशंस में या बट सिंस वी एंजॉय दैट काइंड ऑफ रेपो आई कैन, मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को यहाँ तक बोलता हूँ कि अगर बोर्ड मीटिंग के टाइम पे अगर आप रूम में नहीं हो तो या तो आप हॉस्पिटल में होने चाहिए या वेरी हार्श लैंग्वेज यू शुड नॉट बी देयर. क्योंकि देखो छुट्टी अगर फैमिली छुट्टी है तो वो तो हम पार्टनर को बता ही देते हैं कि भाई नॉर्मली हम फ्राइडे को सेशन करते हैं बट फ्राइडे में और मेरी वाइफ और बच्चे हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं. There is no question of doing particular session at that particular point of time. So it's not a professional activity. No more professional activity for a particular partner at that point of time. But agar even not client visit, no second activity, it is that kind of a dedication and we make sure that it happens at that time. अगर आकांक्षा अगर आपने इस गोल ट्रैकिंग एक्टिविटी में ऐसा एटीट्यूड रखा कि सर मैंने लास्ट वीक में गोल ट्रैक इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एक क्लाइंट का कॉल आ गया था, तो आप समझ लेना कि आपने ऑलरेडी ये एक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है, आपने ऑलरेडी अपने आप से बात कर ही लिया है कि देख आकांक्षा होता है जब कोई एक्टिविटी नहीं है तब गोल ट्रैकिंग शीट लेके बैठने का. So that means you have already said to you that how much important this activity. This is your number one IP of activity. Correct? Great, super. Okay. So Shreyas, would love to have a quick sharing from you as well. Sir, this is kind of making like getting me the clarity ki bhai, where I can figure out ki bhai, what is not working in my organization. Okay. In the longer run, it will help me understand because it's just two of us in the company right now. We plan to get a few interns. So having this from day one, when the company is just the founders, it will just help set the company's direction that this is something that has to be done no matter what. Super. Okay, great. Very nice. Now would love to have a quick sharing from all the mentors. Deep Bhai, if we can start with you, how did you find this entire goals tracking system of 10 steps and this Excel sheet? How you will see that your startups or maybe you in your personal life also should maintain it, how it is helpful? Would love to have your views on that. Difference between the progress card and the tracking goal tracking is what makes this goal tracking workshop a differentiator for me. Super. How you think your startup should they should implement it? Would love to have your views on that. How we can make it more actionable. Theoretically it looks fine, of course, but we want to make it actionable. If you can advise few things or suggest something on that. Right now, not. Please think and share. I want this feedback from everybody that how we can make it actionable. Yeah, would love to have your feedback. Anisha, how do you think about it? Sir, what I think about it is it is very comprehensive, that it covers all parts that should be there. Like you set the goals, then you take the till you take the learning out of what you are doing. So it is very comprehensive. So if a startup follows it, or even if we follow it for our organization, it is very good. And sir, to make it more actionable, I believe that everyone should have their goals aligned. Like they should have that sort of commitment that they have to discuss it every week. They should have it in their goals that they have to discuss it, and that is the only way to make it actionable.
Shipra, what is your take on that? Thanks. Thanks. Thanks, Anisha. Shipra, are you there? Okay. Who else is there from the mentors? I think this yes for now. Okay, I think we have covered everybody. Shipra is not there. Any chance Pratik is there or? No, sir. Okay. He is still stuck in. Sure. Great. I think then it covers everything. I will share these Excel sheet with Drashti. She will share across to everyone. And I want, maybe once Ankit bhai starts on communication, probably we will keep last 15 minutes of today's session in one small breakout room where I would like to have practically implement this goal tracking sheet where we will create the breakout room. And I don't think so. I think only 20 members are there. So even if we don't create it, we can manage it here only, right? Okay, so we are just pausing that activity right now, or else we should finish it up. I think Shani has something in his mind. Yeah, Shani. અરે નાનો ખાલી ક્વેશ્ચન છે. આપણે જે વીકલી શીટ બનાવી એની અંદર વી રાઇટ ડાઉન ધી રેવન્યુ ગોલ. એટલે ઘણીવાર કેવું થાય કે અમારો બિઝનેસ હોય તેનો રેવન્યુ ગોલ્સ વીકલી નથી પોસિબલ કેમ કે અમે લોકો હાયર ઓર્ડર વેલ્યુ અને કન્વર્ઝન સાયકલ લાંબી હોય છે. તો એના ટાઈમે ઇન્ટેન્ટ કે કોઈ વસ્તુ એડ કરી શકે રિપ્લેસમેન્ટ ઓફ ધીસ. Okay. Long term goal is a revenue. For example, we are able to crack in 2 months. Okay. Right. Okay. Perfect. So, for example, I am selling 5 crore worth of a pharma machinery, for example. Right. And I have a goal to close 2 deals in a year only. Right. Okay. I think hope I'm relating to your question. Yes. Same line. So I cannot have a number goal in this particular 1 week. Then what happens, you can put your key goal, Sunny. There you can put your key goal as dash, but in effort goal you can take it meeting number of prospects, meeting number of clients, submitting number of proposals. Those kind of a measurable data you can pitch it like that. Perfect. Thanks. Yeah. Ankit bhai will add something. Yeah. Sunny. Yes, sir. Your question is absolutely right, but let me rephrase the sentence instead of question. Right. So the sentence becomes, as of now, as the deal takes more time, we do not have weekly closures. Right. Does this make sense? Yes. Because in times to come, even though there are longer times that you take in a deal, you would be having multiple deals that are going to close in some week or the other. Right. So as of now, you may use what Payank sir has very rightly advised. But in times to come, start preparing your brain for weekly targets also. Because see, either you are preparing yourself for weekly targets and business numbers, or you are not preparing yourself for weekly numbers. There can't be any third situation. So it is better to start preparing yourself for weekly numbers so that whenever you reach there, you are not surprised. Absolutely. Do we write kind of, for an example, in our case, we might not able to get a conversion of the revenue, but we are able to get kind of a bidding for the amount. For example, 30 lakhs worth we try to capture. And out of 30 lakhs, we might able to convert 15 lakhs in 3 months or 1 month or 2 months, depending on the client. So that goes on the effort goal or in the key, the number goal. So now, for example, we bid at 60 lakhs worth tender in last week.
Right. So that is what we are measuring. So every week we try to bid for some tenders or try to convert client. But that is going to take, some will take 7 days, some will take a month, some will take 6 months. Right. Yeah. So here I would like to tell you two things, Shani. Number one is that, you must have heard the saying that one in hand is better than two in the bush. Right. Right. So on one side, you might want to prepare a list of how many tenders you applied for, what its sum totals up to, how much would it generate revenue whenever it will generate revenue. Right. Right. But I think in the entire goal setting sessions that has happened till now, the one very important thing that I have learned from Payank Bhai is that you have to be extra specific, number one, and number two, there can't be a make-believe arrangement. Right. There can't be a make-believe arrangement. કે આટલું આવવાનું છે ને ક્યાંક લખી રાખો. So this is actually to feel right. This is not a feel-good exercise. Right. And there is a huge difference. Payank Bhai has invested a lot of time and energy and experience. So this is not a feel-good exercise. This is a feel-right exercise. Right? અને અહીંયા જો કેટલું clearly લખેલું છે કે either you write 20 lakh of business revenue generation as your goal, or you write કે મારે 5 clients ને મળવું છે. And result planning. Yeah. Perfect. Sounds good. બરાબર છે? Okay. Okay. Sunny, one more thing I will add. See, fundamentally it says તે તારો જે ગોલ અહીંયા રાખ્યો હોય ને, Right. આ ગોલનો જે મેઝરમેન્ટ યાર્ડસ્ટિક હોય ને, Right. એ તારે છે ને અહીંયા આગળ છે ને એન્ડ રિઝલ્ટમાં તારે કરી નાખ્યો. બરાબર? Perfect. હવે ત્યાં છે ને લાખમાં છે તો અહીં પણ લાખમાં આવશે. Right. ત્યાં કરોડમાં છે તો અહીંયા લાખમાં આવશે. Right. એના સિવાયનું બધું એફર્ટમાં આવી જશે. Perfect. Some rule is as straight as that. Perfect. Sounds good. And next time when we are measuring, if we might receive an orders, for example 50 lakh, તો અહીંયા 500 લાખ લખ્યા છે તો અહીંયા 50 લાખ already progress માં add થઈ જશે. Absolutely. For this is good. Absolutely. Sounds good. Correct. Done. Okay. So with this, I think entire goal setting workshop we are ending here. I hope you would have. Okay, so I think let us invest 15 minutes time, because this is something which the most important part is an actionable. Can I see everybody's because I want full involvement in this exercise. So can I have everybody's video on for a minute? Then you can go on this thing. Okay, so Drishti, you are back, correct? So Drishti, we were just having a sharing from everybody that what is your take on this entire goal tracking sheet and how we can make it more actionable. Would love to hear your views also on that. Okay, so what I feel is irrespective of how much gets done, like I always say in my session, at least it's in front of you. So kind of subconsciously it still keeps going in your mind ke aa karvanu chhe, this is something which is your goal. So consciously unconsciously it keeps going around, so it does help a lot. And it kind of drives you into a direction where it leads you to do some things. So I feel it's a really good thing. And if you can track your time, that's the best part, because usually for me it was a lot about procrastination. This is something which I'll do, but since now I have in front of me and I know what amount of time I have to give, it really helps. And sir, sorry, what was the second part of how we can make it real actionable? Sir, real actionable, this particular sheet. I really feel it can be put in action only when
you have that vision clear for yourself that what you want to do, especially for the startups, because only if they are clear of what they want to do and their goals are very clearly defined, that is when this entire sheet will help. So I have seen one good change in my portfolio company, is that earlier there was no set of predefined timeline, sub goals, sub task designed. So कैसा होता था, it used to go be haywire. It used to be like ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये तू कर, ये मैं करता हूँ. But when they actually sat and understood, it was lost. कि कुछ भी नहीं हुआ, track नहीं करते थे, हुआ नहीं हुआ, half होके छोड़ दिया. So if actually clearly defined and written, more than mentors, if they are internally very clear, it will really help them. So I feel setting up a realistic target which can be achieved and can be reviewed day on day basis, this will really help them. Okay, perfect. So we will do one small exercise, but before that, one more super psychological tips I'm going to share with you. For that, I would be needing 1 or 2 sharings. Listen my question very carefully. और ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं उसको कहाँ से connect करूँगा. You would love to hear that. So the question is, जब मैं मेरी ऑफिस में बैठा हूँ या बैठी हूँ और मेरा लैपटॉप चालू है, तो मेरे लैपटॉप में कौन सी चीज मैक्सिमम टाइम पे खुली रहती है? फॉर एग्जाम्पल, कोई बोलेगा मेरा वेब व्हाट्सएप खुला रहता है, कोई बोलेगा मेरा ईमेल बॉक्स का जो आउटलुक है, या मेरा जीमेल का ईमेल आईडी है, कोई बोलेगा मेरा डेस्कटॉप खुला रहता है. मैक्सिमम टाइम पे जब मैं लैपटॉप पे होता हूँ या होती हूँ, उस टाइम पे मेरे स्क्रीन पे मैक्सिमम टाइम कौन सी चीज विजिबल होती है? We'll have a very quick 10-second answers from everybody. आपको समझाना नहीं है, खाली एग्जांपल देके छोड़ देना है. तो सनी, कौन सी एप्लीकेशंस? हाँ, लास्ट में सर आपने क्या बोला? कौन सी एप्लीकेशंस? कौन सी स्क्रीन पे क्या खुला होता है, क्या एक्सेसिबल होता है आपको मैक्सिमम टाइम पे? वर्ड, एक्सेल एंड स्पॉटिफाई पे म्यूजिक चल रहा होता है. टू हैव फोकस. या अनीता? Sir, my mail and my WhatsApp is on. Perfect. Okay, Deep? Web, WhatsApp and email. Perfect. Dusty? Dusty, तो म्यूट पर છે. સર તમે એ જ પૂછ્યું છો ને કે પાછળ બેકગ્રાઉન્ડમાં શું રનિંગ છે? ફ્રન્ટ ઉપર, તારી સ્ક્રીન ઉપર તારું લેપટોપ ઓપન છે કે કમ્પ્યુટર ઓપન છે અને તું કંઈક બીજું બી કરે છે, કંઈ કોક જોડે વાત કરે છે કે કંઈ પણ કરે છે, પણ મેક્સિમમ ટાઈમ તારી સ્ક્રીન ઉપર આ જ ખુલતું હોય છે. આજે તો મેક્સિમમ ટાઈમ ઝૂમ જ હતું, મેં બીજું કંઈ ખાસ કર્યું નોર્મલી આજની નહીં, નોર્મલી બાય એન્ડ લાર્જ યોર ટ્રેન્ડ. મેક્સિમમ ટાઈમ મારા સ્ક્રીન ઉપર મારી એક તો વેબ ખુલ્લું હોય છે, બીકોઝ એના વગર તો ચાલતું જ નથી વેબ વોટ્સએપ, અને બીજું ડિપેન્ડ હું એ દિવસે શું કામ કરું છું, પણ બહુ બધી એક્સેલ શીટ અને that is something મારામાં મારી ડ્રાઈવ મારામાં સૌથી વધારે ખુલ્લી હોય છે. ઓકે, આકાંક્ષા? Web, WhatsApp and email. Okay, perfect. Who else? Shreyas? Discord, Spotify અને C-Line ID. Okay, perfect. Shipra? WhatsApp web and Outlook. Okay. Who else? Divyaraj? Sir, WhatsApp web, Drive and email. Okay. Just કોઈ પણ જાતના સાયકોલોજીકલ બેરિયર રાખ્યા વગર ખાલી ફોર અ મિનિટ ખાલી એટલું વિચારો, વોટ ઇફ આ શીટ ખુલ્લી હોય તો?
Shreyas is laughing. I'm sure That helps. That helps. I'm sure to આ સ્ક્રીન કે બધી બીજી સ્ક્રીન ઉપર કોઈ મૂવી ચાલે છે. સર તમે જે કનેક્ટ કર્યું ને એના ઉપરથી ડાયરી ઓપન હોય સર, એટલે ડાયરીમાં બધા ટાસ્ક લખેલા હોય. Like what I'm saying is, see, my duty is to stimulate whether તમે ગમે ત્યાં શું મેન્ટેન. I am just saying કે આકાંક્ષા any moment आपका लैपटॉप ओपन हो और आपका ये मास्टर एक्शन प्लान सपोज खुला रहता है, फॉर एग्जांपल. So then it will be very easy for us to not miss it. I will tell you one thing. एक काम करना, आज के बाद आपको लाइफ में जो भी सक्सेसफुल बंदा लगता है आपको कि यार ये बंदा मेरे हिसाब से सक्सेसफुल है, उसको जाके खाली एक चीज पूछना कि जब तुम तुम्हारे सिस्टम पे बैठे होते हो तो तुम्हारे स्क्रीन पे सबसे ज्यादा कौन सी टाइम शीट खुली होती है, तो वो आपको बोलेगा उसकी लैंग्वेज में मेरी कंपनी का स्कोर कार्ड. નોર્મલી પયંકભાઈ मतलब લેપટોપ તો ઓછું યુઝ કરું છું, પણ I have whiteboard in the office. So weekly goals કે જે પણ મારા કંપનીના હોય છે ને, the things which are going on, એ બધી ત્યાં લખેલી હોય છે. So every day when I come here, I use that as this is what is going on, this is what we have to do. So એનું રિઝલ્ટ પણ મળે છે ને તમને? It helps. It amazingly helps. And let me tell you one thing. સેશનમાં બહુ એવી ઓછી જગ્યા હશે કે જ્યાં આગળ હું છે ને મારો ફેસિલિટેટર પાવર યુઝ કરીશ. Otherwise, normally we make everything debatable, questionable. We love asking questions. But અમુક વખતે કેવું હોય, ઘણી બધી વસ્તુઓ વર્ષોના રિસર્ચ પછી જે પ્રૂવ કરેલી હોય ને, તો where I always say, તમારી સ્ક્રીન ઉપર જે ફાઇલ ઓપન હોય છે ને, this determines your mindset towards your productivity. Just check it. હા, હવે એની એપ્લિકેશન શું હોઈ શકે છે, then you need to take a call. મતલબ સપોઝ કોકનો વેબ વોટ્સએપ ખુલ્લો છે, એટલે શું તમે મને, if somebody asks me કે Payank, should web WhatsApp not be open? Okay, I am saying if web WhatsApp is your linked with highest pay of activity to produce measurable results of your business, then only have web WhatsApp open. If it is just for a communication, avoid it. If your email, every 5 minutes, 10 minutes, you need to see the email and which is linked with your KRA in case of employees and revenue results in case of businessmen, I am saying always have your email open. But if email is just a made of a communication for managing the stuff, never. Always have that sheet open in your system which elevates you towards financial or maybe your key goals of the company. So I always make that an extra attempt to all my participants or companies where I coach, that nothing doing. Your goal tracking sheet should be the only sheet which should be open. You can manage parallelly web WhatsApp and other things, but never ever have the sheet which matters the most in your professional life, have that sheet open. So that's the last thing from my side. And now what we will do, we will break here for 10 minutes or 15 minutes, and what I want you to do all is ये वीकली गोल ट्रैकिंग शीट एक है ना, हम एक लाइव एक छोटा सा एक एक्सरसाइज करते हैं. जिन लोगों के पास अभी लैपटॉप हो और ये शीट ओपन हो तो आप इसी के अंदर कीजिए, जिसके पास नहीं है तो आप एक डायरी में भी कर सकते हो. और मैं आप सब लोगों से ये अभी एक्सरसाइज कैसे करनी है आपको, तो आपको आपके मेंटोर्स की इधर हेल्प लेके, we are not breaking into the breakout room क्योंकि हम लोग 18-20 लोग ही हैं तो इजीली मैनेजेबल है. मैं चाहता हूं कि आप अपने बिजनेस के लास्ट हफ्ते के ये कॉलम्स फिल करो कि हमने पिछले हफ्ते क्या क्या अच्छी चीजें की, जिसमें मैंने, मेरी टीम ने और एक्सटर्नली क्या क्या अच्छी चीजें हुई, हम लोग अच्छी चीजें क्या कर सकते थे,
नेक्स्ट वीक में हम लोग क्या एक्शंस लेंगे, कौन ये करेगा, और हमारी लर्निंग क्या रही। एक जस्ट एक 10 मिनट 1 मिनट का टाइमलाइन डिफाइन करते हैं। जैसे अभी 1/9 हुई है, 1/25 को ये एक्टिविटी हम जहां पर भी होंगी वहां पर स्टॉप कर देंगे। We will give 16 minutes. So is it clear everybody? If you are clear, put yes into the chat box. Can you please repeat, please? Okay. So the instruction is, ये गोल ट्रैकिंग शीट जो है ना, इसका पहला स्पेस रेपिटेशन हम ड्यूरिंग द सेशन ही करते हैं। ओके, अब लास्ट वीक में आपने क्या प्लान किया था, अगर वीकली प्लान का नंबर है तो आप वहां पर प्लान का नंबर डाल दो, अचीव क्या किया वो लिख दो। फिर लास्ट वीक आपने क्या क्या अच्छी चीजें की, सेम कॉलम। मैं बोलूँ कि ये शीट फिल करना है हमको, 15 मिनट में जितना फील होता है उतना फील करो। 1/25 को हम जहां पर भी होंगे वहां पर से रुक जाएंगे। I want you to getting started is very important. So that getting started मैं आपको during the session करवा रहा हूँ। Hope I have answered your question, Divya. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, please go ahead. Mentors, you can talk to your startups or randomly कोई किसी को भी पूछ के, make it interactive also, then don't mind. Let us not create a chaos, but we can have an interactive one also. If somebody needs assistance, feel free to ask, please.
દિવ્યરાજ ઓપ્શન્સ ઓબ્ઝર્વેશન્સ બહાર આવે છે બરાબર? શું કહો છો સર? saying observations આવે છે પ્રોપર when you feel? હા, એટલે કેવું છે સર, અત્યારે પહેલી વાર કરું છું ને તો થોડુંક વિચારવું પડે છે કે કઈ જગ્યાએ કેવી રીતના મૂકવું એમ પ્રોપર. એટલે અને I have asked you to do in a short time also. This is a 1 hour activity, but I wanted that first, but the thoughts have started coming. હા સર, એટલે ચાલુ જ છે અત્યારે. સર એવું લાગે ને કે વધારે જલ્દી પ્રી પ્લાન કરી લીધું તો અચીવ કરવામાં વધારે ટેન્શન, વધારે ડીલે કરી નાખ્યું તો વસ્તુ ડીલે થઈ જશે. જે પરફેક્ટ ટાઈમ ગોતો છે ને કે એને ક્યાં મૂકવું, ટાસ્ક કરતા વધારે ટાઈમ એમાં જ જાય છે કે ઈ ક્યાં નાખવું એને. એટલે you remember એટલે અત્યારે કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ થતું હશે, કરેક્ટ? હા, અને પહેલા કરું પછી કરું, આજે કરું કાલે કરું. So you remember that one very nice phrase given by Ankit bhai. You remember when you are confused, you got excited. Get excited. Get excited, because it shows that you are on right path. Yes sir. So space repetitively, do it 3 week, 4 week. That will make it streamlined. સર આને YTD MTD ને NTD સાથે ઇન્ટિગ્રેટ કરીને કરી લેવાય, ત્રણ ઓલામાં ડિવાઇડ કરીને. એટલે આ સી બેસિકલી આ બધું અલગ છે જ નહીં, these all are integrated only. ખાલી એટલું છે ગોલ ટ્રેકિંગ જે છે ને આપણે વીકમાં એક વખત કરીએ છીએ, અને આપણું YTD MTD NTD લિસ્ટ છે જે આની સાથે એટલે સી તમે ગોલ ટ્રેકિંગ કરશો ને તો બાય ડિફોલ્ટ તમારું YTD MTD NTD એની લિસ્ટમાં એની લિંકમાં જ બેસશે. એટલે એવી રીતે કે આખા વીક નું કે ભાઈ આખા વીકમાં મારે આ કરવાનું, આ વીક અચીવ થયું, આ કર્યું, આ વીક અચીવ થયું. પછી એ વીક ને તું ડેલી ટાસ્કમાં કેવી રીતે કન્વર્ટ કરીશ? નહીં તો ડેલી ટાસ્કમાં ને એટલે પછી YTD ની જગ્યાએ YTW MTW. યસ, એટલે W સ્ટેન્ડ્સ ફોર વીક. હા, એટલે અચ્છા એવું હવે યાર યુ ગાઈઝ આર ઇનોવેટર્સ. જો તું એટલી સિસ્ટમને મેનેજ કરી શકતો હોય તો કરી શકે, બાકી મેઇન થી these આ જે શીટ છે ને, this is your main goal tracking sheet છે. એટલે આની અંદર છે ને બેસિકલી આપણે ઓર્ગેનાઇઝેશનના ઓબ્ઝર્વેશન્સ અને આપણા પ્રોગ્રેસને ટ્રેક કરવા માટે વી નોર્મલી યુઝ ઇટ. અને વન્સ યુ ડુ ધેટ, ધેન તારા રોજના જે ટાસ્ક જે છે ને એ તું પ્રોપર વેમાં એક્સટ્રેક્ટ કરી શકીશ. કે ભાઈ આ યુઝ કરીને મારું YTD MTD ને NTD એક્સટ્રેક્ટ કરવાનું. એટલે the more you do regular tracking, the quality of your YTD MTD and NTD will get sharper. Because remember, people do the things what they love to do, like to do, easy to do and fast to do. એક વસ્તુ છે કે માસ્ટર એક્શન પ્લાનમાં
વસ્તુ નાખવી એ કેવી રીતે નાખવી, બીકોઝ મને હમણાં જેટલા ટાસ્ક યાદ આવી રહ્યા છે ને, those are like જે મારે કરવાના છે, જે મારા પાર્ટ થી કરવાના છે. હવે માસ્ટર પ્લાનિંગ લિસ્ટમાં વી પ્લાનેટ કે ભાઈ આખા ઓલાથી આપણે શું શું કરવાનું છે આખું, એટલે સ્ટાન્ડર્ડ કોમન ગોલ અચીવ કરવા માટે. તો એ હવે કેવી રીતે ફીલ કરવાનું આમાં? નાખી દે તું કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ આપ, કોઈ એક ટાસ્ક નું આપી દે. સપોઝ કે તારા નાખી દીધા, બરાબર. હવે તું એક એક્ઝામ્પલ આપ મને, તો આપણે એને કહીએ કે ક્યાં ફિટ કરવા. એટલે સર there is a task of, એટલે હું ફ્રીલાન્સિંગ કરું છું એટ સાઇડમાં, તો એના જે ટાસ્ક હોય છે ને, that helps me fund my main business. So it kind of comes into my high pay of activity because it's helping me fund my main business actually. તો હવે એને કેમાં નાખું? ઓકે, સો that means તારો ગોલ ચેન્જ થઈ ગયો ને? હા. ઓકે, so then what you can do, you can improvise with here. કે આ એક જ ગોલ નો એક્શન પ્લાન છે, બરાબર. So what you can do, you can make here insert one more sheet which is called master action plan for my freelancing work. So master action plan about my freelancing work. અને ત્યાં આગળ તું એના પેલા એ કરી નાખે. સમજી ગયો, હા સમજી ગયો, ઠીક છે. એટલે જે માસ્ટર એક્શન પ્લાન છે, ઇટ ઇઝ સ્પેસિફિક ટુ અ પર્ટિક્યુલર गोल. पर्टिकुलर गोल. तो जैसे आकांक्षा, अगर आपके 2-3 गोल है, एक स्टार्टअप आपका ऐसा है जो बिजनेस कर रहा है, दूसरा स्टार्टअप आपका ऐसा है जिसमें आपको फंड लाना है, तो आपका दोनों का मास्टर एक्शन प्लान चेंज हो जाएगा. हाँ, तो लेकिन मैंने एक में ही डाल दिया अभी तो. हाँ, सो गोल अगर चेंज, तो दैट्स व्हाई, बट इधर देखो मास्टर एक्शन प्लान में इधर ऊपर गोल लिखा ही है. ओके, एक गोल के रिलेटेड एक मास्टर. अगर आपका यहाँ पर विन एक्शन प्लान, विन गोल में 2 गोल है, तो आपको मास्टर एक्शन प्लान 2 बना देने का है. ओके, बट वीकली गोल तो मैं एक में ही डाल सकती हूँ सब. वीकली गोल शीट जो आप वहां पर मेंटेन कर रहे हो, वीकली गोल शीट कौन सी? ट्रैकिंग में. तो अभी हम लोग फिल कर रहे हैं ना वीकली गोल ट्रैकर, अभी हम लोग यही फिल कर रहे हैं. ट्रैकर, ये पूरी जो शीट है, यू रिमेम्बर वन थिंग फंडामेंटली, ये पूरी गोल ट्रैकिंग शीट है वो एक गोल की है. इफ यू रिमेम्बर, जब मैंने आपको वर्ड का डॉक्यूमेंट दिया था, तभी भी मैंने बोला था कि हम एक गोल का ये पोस्टमार्टम कर रहे हैं. द मोमेंट यू हैव कोई दूसरा गोल भी है, तो आप सेम वे उसकी एक एक्स्ट्रा ट्रैकिंग शीट. हाँ, आपका टाइम पिक्चर कॉमन हो सकता है. आपका टाइम पिक्चर कॉमन हो सकता है. अगर आपके 2 गोल हैं, तो वीकली गोल ट्रैकर यहाँ पे दूसरा गोल ट्रैकर बना दो. जैसे कि in 3 months we will do 20 lakh invoicing. ये आपका एक गोल ट्रैकिंग हो गया. अब मान लो आपका सेम में दूसरा गोल ऐसा है कि जिसमें कंट्रोल सी, ओके, अब ये है in 3 months we will raise 25 lakh rupee fund. ये आपका गोल हो गया, दूसरा गोल हो गया. तो इसकी ट्रैकिंग शीट आप यहाँ से बनेंगे. प्लान में मान लो नॉट एप्लीकेबल है तो सीधा एक ही फंड में आएगा, या फिर आप इस वीक में फंड में आपका 1 महीने का गोल है, इधर आप मीटिंग इन्वेस्टर्स, 2 नंबर्स, ये जो भी आपका एक होगा वो, तो आपका ये दूसरा गोल का वीकली ट्रैकर आ गया आपका. ओके, तो सर ये वाला सिर्फ मास्टर एक्शन प्लान और वीकली गोल ट्रैकर ये मल्टीपल बनेंगे. हाँ, ये गोल वाइज टाइम पिक्चर तो आप कॉमन दोनों गोल का, जैसे श्रेयस है तो श्रेयस के 2 गोल है, एक उसका एक फ्रीलांसिंग का भी गोल है और एक अपना स्टार्टअप का भी गोल है. तो श्रेयस के टाइम मैनेजमेंट में दोनों हाई पे ऑफ एक्टिविटी है. उसका फ्रीलांसिंग वर्क करके पैसा कमाना इज आल्सो इज हाई पे ऑफ एक्टिविटी. तो टाइम पिक्चर में वो दोनों चीज साथ में डाल सकता है. तो लेकिन ये ऑब्स्टिकल भी वैसे ही होगा, आई थिंक 2 शीट. ऑब्स्टिकल इज आल्सो गोल स्पेसिफिक. आप देखो ऑब्स्टिकल में भी हमने गोल वाइज ही लिखा हुआ है. सो यू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये जो गोल ट्रैकर है वो पर ये पूरी शीट है वो
एक गोल स्पेसिफिक शीट है, आप उसको कस्टमाइज करके ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना हो तो नए गोल का ट्रैकर भी आप इसी में शीट 1 शीट 2 करके डाल सकते हो. हाँ, that is that way you can do. Yeah, that is we can manage in our. સર વિન ગોલ્સ પર જાઓ ને એક વખત. હવે આમાં જે છે રાઇટ ડાઉન ધ બેનિફિટ્સ ઓફ અચીવિંગ, તો ઈ હવે આપણે ઉપર 2-3 ગોલ લેખા હશે અગર, તો નીચે લખવાનું કેના રીતે થી લખવાનું શું છે અહીંયા નીચે? So see, I am saying કે I said it that this is a goal specific activity. So normally normally you hello हाँ आवाज આવે છે. हाँ, okay. So this is a goal specific activity. So you can write down here a one goal and its benefits here. Many a times it happens that your multiple goals have same benefits. You have 2 key goals and benefits are common many a times. There is another goal which is having a different kind of a benefits. So probably in that case you need to add one extra sheet here also. That's why I always say that this is a goal specific activity. You just assume it that this entire sheet has been ideally given you for a one goal only. Now whether you want to manage multiple goal in a one sheet or you want to make a multiple sheet, that is your own comfort. That is your own, you know, how you are more comfortable with that. I always believe I am a kind of a person who loves to handle less amount of files. So I normally prefer एक sheet में ही मैं multiple बना देता हूँ, sheet 1 sheet 2 करके. तो जैसे अगर श्रेयस आपके जैसा प्रॉब्लम मेरे को हुआ होता तो मैं क्या करता, मैं उधर एक काम कर देता, मैं जैसे ये की गोल का एक एक्स्ट्रा शीट बना देता और मैं ऐसा करता इधर, जैसे विन विन गोल है उसकी जगह पे मैंने इधर लिख दिया की गोल स्टार्टअप और यहाँ पर मैं लिख देता की गोल फ्रीलांस इसी के अंदर. अब यहाँ पर मेरा स्टार्टअप का गोल आ जाएगा रेवेन्यू का, चाहे इन्वेस्टमेंट रेज करना हो या मनी प्रोड्यूस करना हो, और मेरा यहाँ फ्रीलांस का गोल आ जाएगा कि भाई मुझे 3 कंपनी में से फ्रीलांसिंग करके महीने का इतना रेवेन्यू प्रोड्यूस करना है. समझिए? एनी नीचे एनो बेनिफिट्स आई जतो आ नीचे एनो बेनिफिट आई. यू कैन कस्टमाइज द वे यू आर कंफर्टेबल विथ. Correct? So I think now any question or we are good to go with now the communication part. Any question we have? I just have one question. That time sheet जो है हमारा timely time sheet of the week, that we can keep a single, right? If there are 2. Absolutely. आप देखो ना, let us assume श्रेयस का एक स्टार्टअप ऐसा है जो पैसा प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा स्टार्टअप ऐसा है जिसमें फंड रेज करना है, ऊपर से उसका तीसरा एक गोल ये भी है कि भाई मुझे तो फ्रीलांसिंग भी करना है. तो श्रेयस क्या अज्यूम करेगा कि मैं 3 कंपनी चला रहा हूं, तो वो अपने 50 घंटे के टाइम मैनेजमेंट को उस तरह से डिवाइड कर देगा कि भाई मेरा फ्रीलांसिंग है तो ये मेरी 2 हाई पे ऑफ एक्टिविटी है, जिस कंपनी में फंड रेज हो चुका है और पैसा प्रोड्यूस करना है उसकी ये 2-3 हाई पे ऑफ एक्टिविटी है, जिस कंपनी में फंड रेज ही नहीं हुआ है उसकी ये 2-3 हाई पे ऑफ एक्टिविटी है, और इन सबको कॉमन टाइम शीट के साथ अटैच कर देगा क्योंकि उसके पास टाइम यूनिवर्सल है. हफ्ते के 60 घंटे ही है, उसमें उसको 10 कंपनी चलानी हो या 1 कंपनी चलानी हो. मास्टर एक्शन प्लान और गोल ट्रैकिंग हम गोल स्पेसिफिक इसलिए रखते हैं क्योंकि उनमें ऑब्जर्वेशन गोल स्पेसिफिक रहेंगे, जबकि टाइम शीट इज अ यूनिवर्सल. होप इट्स करेक्ट. आकांक्षा? Yeah, I got it. Done. आप करो, 1-2 वीक करो. Keep sharing me your challenges or difficulties whatever come across. अभी भी हमारा सेशन में प्रोग्राम खत्म होने में से गुड अमाउंट टाइम लेफ्ट, तो 2-3 हफ्ते हमारा कांस्टेंट शेयरिंग रहेगा. व्हाट आई वांट इज, यू नो, एवरी वीक यू थ्रो सम क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स.
but that will only happen if you manage it. Okay, great. चलो मजा आ गया. 10 स्टेप गोल सेटिंग प्रोसेस में जितना पोस्टमार्टम हो सकता था उतना हमने किया. I hope you would have enjoyed it. And over to you, Ankit bhai. Hello. Payank bhai, hello. Yeah, Sari, bolo. मारे खाली एक बार चेक करूँ चाहिए. I did the exercise, so I'm doing the right way or not. I just want to check. हाँ, एक minute. Just give us one time. We are managing the placements. We are switching each other's places. Yes, sir. तू कैसे समय? Hello. हाँ सर. Yes, sir. I want to check for 2 minutes or 1 minute. We have made an Excel sheet. I just want to check we are doing it on a right way or not. Share करेंगे. हम share screen करो हाँ, yes. So આગળની બંને વસ્તુ કન્વર્ટ કરવાનું બાકી છે. I just last week no I just tried to convert. Is it visible? Yes. Perfect. So my first column I divided in 3 parts: self, team and external. અને એમાં કે વસ્તુ થઈ શકતી હતી થયેલી છે. What thing went well એ લખેલું છે. સેકન્ડ માં પણ સેમ વસ્તુ self, team and external માં what thing might be better. અને actions for next week માં અહીંયા targets લખેલા છે what we have to achieve. અને allocation કરેલું છે roles who is going to do it. Perfect. Right. અને learning માં I was confused. We have to write down the self learning or a team learning કે what, because એમાં ઘણી એવું થતું કે learning ની જે વસ્તુ છે ને એ જ વસ્તુ મારે જે વસ્તુ સારી થઈ શકતી હતી લાસ્ટ વીક માં એ વસ્તુ રિપીટેશન વધારે થઈ રહ્યું હતું. હા, તો વાંધો નથી ને, એમાં શું પ્રોબ્લેમ છે? Perfect. So right direction એમાં કોઈ વસ્તુ બાકી રહી જતી હું તમને લાગે. Okay. Learning ની અંદર લર્નિંગ ની અંદર તે મને એમ કીધું કે સેલ્ફ નું ને પીપલ નું અલગ લખવું છે. તો તને શું લાગે છે સેલ્ફ નું અને પીપલ નું અલગ લખવું જોઈએ? હા, બધા લર્નિંગ અલગ હશે. એબ્સોલ્યુટલી. રાઈટ. અને પ્રોબ્લેમ એવું થતો હતો કે સેલ્ફ માં લર્નિંગ માં જે વસ્તુ લખતો હતો ને એ this were the based on the what was not went well last week. એટલે એ ઘણીવાર રિફ્લેક્ટ થઈને લર્નિંગ માં આવતું હતું. સો ધેટ ઇઝ ઓકે. ઘણીવાર ઇટ્સ એબ્સોલ્યુટલી એ સી આ શીટ જ એવી રીતે બનાવી છે કે સારી વસ્તુ અને જે થવી જોઈએ એ વસ્તુ ચાહે સારી હોય કે ગમે તે હોય એનું રીએન્ફોર્સમેન્ટ થયા કરે. ઓકે, રાઈટ. પરફેક્ટ. So this is very nicely been made. ખાલી મને પહેલું બસ મને પહેલા બે કોલમ જોવા હતા. So અહીંયા I am confused. So end result 500 lakhs by 500 lakhs by first. એ આપણે ઉપર મેં ગોલ લખી દીધું કે this financial year માં that was our target કે 500. પણ અહીં છે ને તારે વીકલી ફિગર લખવાની છે. વીકલી ફિગર લખવાની. So એમાં so અમારા ઓર્ડર્સ વીકલી કન્ફર્મ નથી થતા હોતા. So what I'm saying is that કે see as I said કે પ્રિન્સિપલ ફિલોસોફી નંબર ની જે છે ને આપણે પકડીને રાખીએ અહીંયા. ઓકે. એટલે થાય શું કે સપોઝ આ વીક ની અંદર તારો કોઈ 25 લાખ નો ઓર્ડર સાઇનિંગ માં હશે ને તો તું 25 લાખ લખીશ ત્યાં આગળ. યસ, રાઈટ. માન લો નહીં હોય રાઈટ તો તું ત્યાં એ બ્લોક ખાલી રાખીશ. ઓકે. અને એફર્ટ ગોલમાં છે ને મીટિંગ કસ્ટમર કે પેન્ડિંગ ઇન્ક્વાયરીઝ કે મેકિંગ કોલ ને બધું લખી નાખીશ. પરફેક્ટ. આ તો મેં એડિટ કરવાનું બાકી છે. સી આપણી કોર ફિલોસોફી આપણે ચેન્જ નહીં કરીએ. બિઝનેસ why we do business to make numbers, produce numbers. Right. So first and foremost is number has to be tracked. Let it be 0. 0 is also a number. Yes. Perfect. Correct? But I think this is perfect. I think this is a very nicely been made. I think it's good that you shared with us. Perfect. Thanks a lot. Sir, I have one question here.
Like in this first column, we are also writing our business goals in the diary. So are we can use this only, we can write over here. See, mechanism. See, if you stop, apart from YTD, MTD, and NTD list, suppose if you want to put your all business goals here, you can do that, Akanksha. Okay, and there was also earlier, like there was when we had put this thing, when we put milestones, that time we are saying that okay, this month we will achieve it, and then week wise we are dividing it. So we are have to go that we have to fill for all the weeks, or we have to go like week wise. आई थिंक इसी में आपका माइलस्टोन भी आ जाएगा ना. आपका मेन गोल जो है, सपोज आपका 2 महीने का ये गोल है, अगर आप इसको वीकली ब्रेक करते हो तो वीकली आपका नंबर भी ब्रेक हो जाता है और एफर्ट भी ब्रेक हो जाता है. ओके ओके, हाँ. तो इट कवर्स एवरीथिंग. तो ये हमको वीकली मतलब पहले से भर के रखना है, 10 वीक का है, 15 वीक का, या पहले हम ना ये वीक ऑन वीक रहेगा. ये वीक ऑन वीक रहेगा. आपको ये वीक ऑन प्लान जो है, अब देखो आपको 10 हफ्ते के बाद क्या प्लान करना है वो तो कैसे अभी से आप पता चला. आपको मेन गोल क्लियर है. अब ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते का प्रेडिक्ट करो, 1 हफ्ते का प्लान में लिख दो, 1 हफ्ते के बाद सामने उसका अचीव लिख दो. इस तरह से गोल की ट्रैकिंग कर दो और नेक्स्ट वीक का प्लान कर दो. इसमें आपके 7 डे के बिजनेस गोल भी सारे इसी के अंदर आ जाएंगे. ओके, थैंक यू. Perfect, thank you. If you maintain this sheet, it covers everything except your personal life daily goals. बाकी आपके 7 डे बिजनेस गोल्स भी इसी के अंदर आ जाएंगे ज्यादातर तो. Yeah, great, super. Any question? Super, sure, we are good to go. All right. So I believe every one of us had really enjoyed this part of the session where actual, we come to know where the rubber hits the road, right? And regarding goal tracking and how it can impact your business, how it can impact your attitude, how you can stay in control and command over developing your own self and your business, right? So just tell me one thing, that why the whole exercise, why the entire exercise, why this? Because the mentoring session started post you started the startup. Am I correct? So why this exercise? I think it is going to help us to take decisions with clarity. It is going to help you to take decisions with clarity. Okay. Anyone else? Bridging the distance between knowing what to do and doing what we are supposed to do. Okay, knowing what to do and doing what we are supposed to do. Okay, good. Fair. So before I proceed further, I just would like to ask Drashti that by what time are we expected to conclude this session? Sir, I don't have anything in my mind, but startups, if you have anything, then you can tell. Okay, so let me make, when it is for all, when it is for startups, let me ask a question in a precise manner. Would 2:45 be good or 3 p.m. be better? તમને શું જવાબ જોવે છે? અરે, I said any. Okay, I have another meeting scheduled at 2 Shani. Okay. Yes, that is also high pay activity, so I have to attend it. So that is also a high pay activity. So I really like when you use the word also, because you consider this as a HPA, and we are very happy.
Yeah, so tell me, I mean, until and unless we'll have this, I can't proceed further because I should know. I know when have I started, but I also should know when am I supposed to end. Okay, so Akanksha is saying 3 is fine. Akanksha is saying 3 is fine. Divyaraj, you are also saying 3 is fine? Yeah, yes, sir. Okay, fair. So let's have a unanimous, agreeable and acceptable decision that I'll try and keep it before 3. Would that be good for all of us? Yeah. I'll make sure, I'll not try, I'll make sure that we conclude the session before 3. Would that be good? Okay, super. अब फटाफट से एक एक्टिविटी करना है. अच्छा, वीडियो विल बी अवेलेबल और ओह सनी, ये चीजें मत किया करो. No, I can really appreciate from where you are coming. So that's absolutely there. And before even Drishti answers, let me tell you that she already has declared that on our YouTube channel these videos would be there. So don't worry, right? So what we are going to do is that फटाफट से चैट बॉक्स में आप सब लोगों को अपना एक जो भी पसंदीदा, जो भी फेवरेट गाना है ना, जो भी फेवरेट सॉन्ग, राइट, अगर आपको मैं बोलूं कि यू हैव टू पुट इट टू रिपीट and you have to listen it forever and ever and ever and ever again, which would be that song? वो फटाफट से चैट बॉक्स में लिखो ना यार. Which is that one song that you like the most? Okay, Akanksha, Achyutam, Keshavam. Okay, Teri Diwani, Khudi by the local train. Shreyas Sanghvi, okay. चलो फटाफट लिखो यार. शनि, इतना क्या सोच रहे हो? अभी है तुम्हारे पास 17 मिनट. ये 17 मिनट मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुमसे भी. यस, ओके. सूरज की बाहों में. सुपर सॉन्ग. हाँ, वेरी नाइस चॉइस. चलो फटाफट. स्टैनफोर्ड स्कूल म्यूजिक ट्रैक. ओके. एडवेंचर इज ओके. ब्यूटीफुल. यूं ही चला चल रही. सुपर. धवल पटेल. ओके, ठीक है. ओके, सन इज शाइनिंग. ओके, इसमें सेकंड लाइन ऐसा तो नहीं है सो आर यू? Yes, sir. Okay. 1,000 years. Okay. Super. So I think almost every one of you have kind of written down, right? Am I correct? So we have approximately 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 responses only. And we are 18 of us. I mean, come on, what are we doing? હવે આમાં એવું કઈ કહેતા નહીં કે સર હું આજે જ સેશન અટેન્ડ કરી રહ્યો છું, મારું ફર્સ્ટ સેશન છે એટલે મારું ફેવરિટ સોંગ કયું છે એ મને ખબર નથી. So that can't be the point. You have to write your favorite song. Come on. So we have Achyutam Keshwaram, Teri Diwani, Khudi, Suraj, Stanford, Izza Music, Har. Abhi aaya na, Iktara. Wake Up Sid. Okay. 1,000, Sun is Shining, Yu Hi Chala Chal, Beautiful World. और कौन है भाई? जल्दी. इतनी देर क्यों लग रही है? ठीक है, चलो तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर आप लोग जैसे ये माउस को होवर करोगे ना, तो आपको चैट
दिखाई देगा, उसे डबल क्लिक करोगे तो साइड में चैट बॉक्स भी खुल जाएगा, राइट? खुल जाता है ना? सो यू नो द chronology in which people have answered. तो आपको दिखेगा ना? तो उस क्रोनोलॉजी में आपको उन सॉन्ग्स को बोल के सुनाना है नहीं? यही करना है श्रेयस। जो सॉन्ग है वो आपको गाने नहीं है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू सिंग, आई एम नॉट आस्किंग यू टू सिंग, you have to speak that out, you have to recite the wordings of the song. So sabse pehle Akanksha, can you put on your video and can you recite? But why we can't sing? Pardon? Why we can't sing? Because I am telling you not to sing. Okay, but I don't know some of the songs, so I'll just read out. नहीं, आपने जो लिखा है आपका फेवरेट वही, आपका खुद का ही, सबका नहीं। अच्छा, ओके। हाँ। अच्युतम केशवम राम नारायणम जानकी वल्लभम वासुदेवम। नहीं, मुझे गाना ही पड़ेगा वासुदेवम। क्यों? ओके, ठीक है, होल्ड योर सेल्फ, आई विल कम बैक टू यू। ठीक है, चलो अभी कौन है? दिव्यराज। अरे कम ऑन यार, हंस क्या रहे हो? फटाफट से, फेवरेट सॉन्ग है ना? हाँ वो तो है सर, पर तेरी दीवानी अभी मतलब गाना शुरू हो रहा तो मजा आता है वो गाने में। ऐसे नहीं यार, नहीं, ऐसे नहीं। फेवरेट सॉन्ग है तो बोलना पड़ेगा, बोलो तो सही। कभी कभी लिरिसिस्ट की भी कदर कर लो यार, मैं खुद एक लिरिसिस्ट हूँ। रुको सर, गाना चालू गाया वગર મજા નથી આવતી। પણ નો હાલે, અત્યારે તો હું કહું એમ જ કરવું પડશે। ओके चलो कोई बात नहीं, आप नहीं कर पाए इसका मतलब ये मैं मान रहा हूँ। चलो श्रेयस। खुद ही को खुद से मिलाने चलाए ओ दीवाने, गुजरे है जमाने। हाँ, गूगल ऊपर साइड में ओपन कर ली तो कैसे बाजूની વિન્ડોમાં ના ઇન લાસ્ટ વાળું જે છે ને લાઈન, એટલે મને પેલું કી આમ ટડક કેવું સંભળાણું। અરે સર સ્પેસ अच्छा વાંધો નહીં, આજો સ્પેસ। હા સમજી ગયો મ્યુટ અનમ્યુટ માટે। હા કરો તો એની આગળનું જે છે ખુદ ही को खुद से मिलाने चलायो दीवाने, गुजरे थे ये जमाने। એને આગળનું છે ને કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો છું કેમ કે એને આગળ પછી એકદમ ફાસ્ટ થઈ જાય છે। अच्छा, ओके કઈ વાંધો નહીં। ચલો then we have દીપ પટેલ। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें है सांसों में। फिर नहीं होता। अच्छा સારું, ઓકે ચલો શની। સર આ તો મ્યુઝિક ટ્રેક છે, આ તો એમાં બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક્સ વધારે હોય છે પ્રોડક્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે। હા કઈ વાંધો નહીં, પણ તોય વર્ડિંગ But I have one Bollywood kind of a song which is also બોલવાનું છે ખાલી। હા, આમાં મને શિપ્રા દેખાડી પણ શિપ્રાનો રિસ્પોન્સ ના દેખાડો। સર મારાથી મિસ થઈ ગયો એ વાળો પાર્ટ। હા કઈ વાંધો નહીં, સારું તો when I'll come to you I'll tell you। yeah, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। ना हजी आमा एक मिनट हजी आमा थोड़ू राइम छे। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। नहीं એવું નહીં બોલવાનું છે। જો there can't be an injustice or bias to anybody। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। हाँ, अफसोस ये है कि वो हमसे उखड़ा रहता है। अच्छा वाह, वेरी गुड, क्या बात है सर। ओके देन वी हैव आई बिलीव दृष्टि। Sir, try करें। So it's basically like turn your magic on. To me, she said, everything you want is a dream away.
and we are legends of every day. So that is how. એટલે એમાં એન્ડ હતું સોંગ માં એન્ડ ગાય છે ઈ? ના તો તમે છતાં અચ્છા ચલો કઈ વાંધો નહીં ભલે ભલે કારણ કે મને એવું ખ્યાલ છે કે સોંગ માં એન્ડ નથી એમ થોડું ઘણું જે મ્યુઝિક હું સાંભળું છું એમાં મને ખબર છે કે એ સોંગ માં એન્ડ નથી ચલો કઈ વાંધો નહીં તો આ હર હર ગંગે કોણે લખ્યું છે સર એ બી એ તને ગાવું છે મેં જ લખ્યું હતું અચ્છા બાજુમાં જે છે એને ના પાડી કે મારું નામ ના લેતા સર એમાં છે ને કેવું છે કે સિન્સ ઘરેથી અટેન્ડ કરે છે તો મારી બહેન બી બાજુમાં બેઠા બેઠા એ બી સાંભળતી કરતી હોય છે ઓકે ઓકે હા ધેટ્સ ઓકે નો પ્રોબ્લેમ ઓકે બ્યુટીફુલ વર્લ્ડ Yes, sir. હા What a beautiful world is out there for me now to see it. Beautiful world is out there for me now to know it. Sir, આટલું જ યાદ છે. આટલું જ યાદ છે ઓકે ગાયું હોત તો આનાથી વધારે મેળે આવી જાત મ્યુઝિક સાથે કદાચ આવી ગયો હોત પ્રોબેબલી ઓકે સુપર अच्छा ध्रुव भाई यूं ही चला चल बोलो देखो जिधर भी राहों में फूल पिघलते हैं निगाहों में अच्छा ठंडी छाव है ठंडी गाय हो तो વધારે યાદ આવે अच्छा गाय હોય તો વધારે યાદ ઓકે ચલો અનિશા ક્વિકલી Can't you tell I got news for you? Sun is shining and so are you. And we're gonna be all right. Dry your tears and hold tight. Can't you tell I got news for you? Sun is shining and so are you. Okay, good, very good. So then we have another Sachi. Yes, sir. Hearts beat fast. Colors and promises. How to be brave. How can I love when I am afraid to fall? Watching you stand alone. All of my doubts suddenly go away. Okay. Somehow I remember like. And that's it. Okay. Music. That's okay. So Shipra, what we were doing is કે તમારું favorite song તમારે ગાવાનું નથી માત્ર lyrics બોલવાના છે flat બોલો. Okay. Favorite song Night Changes One Direction. બોલો गाता तो खबर नहीं. Going out tonight changes into something red. Her mother doesn't like that kind of dress. Something that she never had. She's showing off. Driving too fast. Moon is breaking through her head. She's dancing, doesn't even know it yet. Having no regrets. It's all that she really wants. So we are getting older, baby. Now that I think about it lately, doesn't it drive you crazy just how fast the night changes? Super, very good. પણ તમે ઘણું બોલી શક્યા. Let me begin with Shipra only and then ask all of you this question. Shipra, number one is that if you would have been singing this song, then would you have been doing the same thing like what you were doing? And looking up and thinking, if you would have been singing the same song, would you have been doing the same thing? No, I wouldn't. No. You would have enjoyed, your body language would have turned, right? Similarly, if every one of us would have sung the song that we liked the most, there were 3, 4, 5 things must have happened. Number one is that we could have recited it for a longer period than now. Number one. Number two, we could have enjoyed it. Number three, it would have touched our heart. It would have touched others' heart. People would have really loved that experience, which otherwise have turned into a boring, when this will end kind of an activity. Isn't it? Now, that's the single message that I want to give to all of you. कि communication का भी ऐसा ही है.
उसका तरीका है, उसका मूड है, उसकी लय है, उसके सुर है, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक है, उसकी बॉडी लैंग्वेज है। अगर आप उस हिसाब से कम्युनिकेट नहीं करते हो तो you would never realize when the experience which is closest to your heart and most important to your life and business would get converted into the most boring experience. Does this make sense? मैं ये बोलूं सूरज की बाहों में और सूरज की बाहों में ना 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 तारारारारा. Does this make sense? यूं ही चला चल रहा है, यूं ही चला चल रहा है. Does this make sense? Right? So any song you know take, and anything that, so there is a way how communication is to be done. Similarly, in your business communication, in your day-to-day communication also, what you are expected to do is to learn how it is to be presented in terms of your body language, in terms of your facial expressions, in terms of your overall things that you are doing, in terms of creating that surrounding, in terms of transferring the enthusiasm, so on and so forth, in terms of words that you use. Right? Now, just remember, why have I started this session in this manner? Because the person to whom I had committed that, we'll begin the session with your questions, if at all you have, is absent today, is not present today. Dharam Soni, if you remember. Yeah, I told him कि हमरे तमारा questions थी आपने next session ની શરૂઆત કરશું communication. Nevertheless, so let me kind of are you in sync with this? Does this make sense to you as far as communication is concerned? So હવે જ્યારે પણ તમને okay Sunny, I can understand and appreciate. Yeah, so જ્યારે પણ તમને એવું લાગે ત્યારે just think of this exercise. Am I singing or am I reciting the words? Whenever you are doing business communication and whenever you do not find result, અને જ્યારે goal tracking sheet ભરતા હો અને તમને એવું લાગે કે what could have been done better વાળા section માં ઘણી બધી વસ્તુ આવી રહી છે, તો what does that indicates? That you are reciting and you are not singing. If you sing, people will enjoy. Right? હવે એને કમ્યુનિકેશનમાં આપણે ટેકનિકલી સમજીએ, થિયોરિટિકલી સમજીએ અને પ્રેક્ટિકલી પણ સમજીએ. સો લાસ્ટ સેશનનું મારે જો સમરી આપવી હોય તમને તો હું એવું જ આપીશ કે ઇફેક્ટિવ કમ્યુનિકેશન મેન 5-6 વસ્તુઓ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. Number 1 is your timing. Do you remember we discussed lastly in last session that what to speak, how to speak, when to speak, to whom to speak and when to shut up, if you remember these things, right? Now, today, let me tell you this one thing is that number 1 is that when is the timing of your communication makes it effective or ineffective. You are in the mid of something very important, you are engrossed in some very important work, and suddenly I bump into you and I tell you, "Are chal aa karvanu che." What would be your answer? Or what would be your reaction? Right? So definitely that is going to happen. That you might not like it, or you might not respond it the way you even wanted to respond when you are free. So this is one. So timing is very important for effective communication. So always remember timing. Number 2 for effective communication is choice of channel. There is a choice of channel. Choice of channel means how many channels with which we communicate. We can write digitally, we can send messages, right? We can send voice notes, we can call up and have conversation, we can send the message via somebody,
and we can personally go and talk to them. Or we can do an audio visual merge just like this session. We can do a Zoom call. Does this make sense? Now the message which is to be sent via text, if you do a Zoom call for that, it might not be as impactful as it would have been via text. And otherwise is also true. Are you with me? Sir, in this case, can you give an example? Like in what case the text message will make more sense than the in-person meeting? Okay. So let's say you are in a mid of a conversation where you have a huge disagreement with your teammate. He or she is absolutely annoyed, do not want to talk to you, right? And they are about to decide to end the relationship in terms of कि भाई अब मैं नहीं काम करूंगी या करूंगा आकांक्षा के साथ. At that point in time, if you call them, right, you are at their mercy of receiving the call or not receiving the call. If you do a video call, that might not help. But if you put a gentle text, it becomes more effective. Does this make sense? Right? And the same employee, when they are, agreed and convinced with you, and for the first time you are starting a trend, you want to break an ice, you want to take the relationship to next level, and you are doing a video call on their birthday, or you are doing a video call appreciating him on her success. At that point in time, text wouldn't have worked the way the video call would have worked. Yes. You're right, Akanksha? Sure. So I think I have been able to give you both the examples. Yeah. Right. So it is, I leave this thing to your mature and a good choice that, how do you utilize it? Because see, remember, communication, या ये जो सारी activity हम कर रहे हैं, उसमें I always remember the last verse of Bhagavad Gita. उसमें कृष्ण का, मुझे पूरा तो वो श्लोक याद नहीं है, पर एंड में वो ये कहते हैं, उसकी लास्ट लाइन है वो ये है कि यथेच्छसि तथा कुरु. मतलब तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारा जो मैच्योर सेंस है, उसको यूज करके मैंने गीता का सारा ज्ञान, दुनिया का सारा ज्ञान जो मैं जानता था तुमको दे दिया है अर्जुन. अब तुम्हारी मर्जी के हिसाब से तुम इसका इस्तेमाल करो. So ये जो सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं, be it me or Payank sir, I would always say यथेच्छसि तथा कुरु. Right? Have it with you, when to use, how much to use, whether to use indigenously, whether to use a club and amalgamated thing, whether to use multiple things at one go, whether to, with reference to this, create a new thing of your own, just like me and Payank sir have been creating since years and being more and more effective. तो क्या आप करना चाहते हो, आपको डिसाइड करना है. सो नंबर 1 इज टाइमिंग, नंबर 2 इज चॉइस ऑफ चैनल, नंबर 3 इज योर मैसेज स्ट्रक्चर. आप किस तरीके का मैसेज डिवाइस कर रहे हो. रिमेंबर हमने इस पे बहुत बात की थी कि रिसीवर इज ऑलवेज एज अ सेंटर ऑफ कम्युनिकेशन एंड यू हैव टू कीप देयर अंडरस्टैंडिंग, देयर मूड, व्हाट वुड ट्रिगर देम टू डू व्हाट वी वांट देम टू डू. राइट? वो क्या कहने से हो जाएगा. I don't know how many of you understand Gujarati or how many of you do not understand Gujarati, but there are beautiful lines to propose. There are beautiful lines to propose. One poet has written beautiful line, and the poet has written કે હું ક્યાં કહું છું આપને કે આપની હા હોવી જોઈએ. હું ક્યાં કહું છું આપને કે આપની હા હોવી જોઈએ, પણ આપ ના કહો એમાં વ્યથા હોવી જોઈએ. Means I'm not saying that you say yes to me, but when you say no, you should feel pain. And ये line specifically
मैंने यहाँ पर इसलिए शेयर की है कि दिस इज द फीलिंग दैट यू आर सपोज टू क्रिएट, यू आर एक्सपेक्टेड टू क्रिएट इन एवरी ऑफ योर प्रोस्पेक्ट्स माइंड। उसको ना आपको बोलना पड़े ना, उसको दुख होना चाहिए, करे यार मुझे इसको ना बोलना पड़ रहा है। Are you being able to relate to this? Yeah? Okay. So the message structure. Then the style of delivery. Now, style of delivery is not always generally लोग ये मानते हैं कि style of delivery तो verbal में ही होगा ना, style of delivery तो verbal में ही होगा ना, but no, nowadays even you can communicate almost near to exact emotions via using emojis, via creating a message in certain manner. You know, just to give you an example, that at my organization, we have a practice that whenever the employee joins on day one, जिस दिन जितने बजे वो ऑफिस पहुंचता है, वो इंडिया में से कहीं का भी हो और कहीं पर भी उसकी फैमिली रहती हो, जिस दिन वो बंदा या बंदी मेरे ऑफिस में डे 1 पे ज्वाइन करती है ना, उसी दिन उसके घर पे बुके और थैंक यू लेटर जाता है। वो यहाँ ऑफिस ज्वाइन करते हैं और मेटामॉर्फोसिस की ओर से उनको एक थैंक यू लेटर जाता है और एक बुके उनके घर पे पहुंचता है। दैट थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग अस, एंड यू नो आपका जो फैमिली मेंबर है वो अब हमारा भी फैमिली मेंबर है, एंड वी नो दैट जस्ट एज ही कंट्रीब्यूटेड टू योर फैमिली, ही इज गोना मेक आवर फैमिली आल्सो बिग। और उसके साथ एक छोटा सा बुके जाएगा, तो उसके घर पे से फोन आएगा, कहा ये तेरे कंपनी में से कुछ आया है, एंड दे डोंट नो। जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ फीलिंग। और हो सकता है उस दिन मेरी और उनकी बात भी ना हो, मैं कहीं और हूं, वो कहीं और है, but imagine the kind of communication that is happening, the message being conveyed. Are you with me? So this is what I refer to as a delivery style. आप कौन से स्टाइल में उसको डिलीवर करते हो? And last but not the least is the mode. किस मोड में आप उसको, you know, what is the mode that you actually, is it verbal or is it you know, non-verbal, or is it you know, written, or how is it? Is it via somebody? Is it in public? Is it in person, one to one? कैसे करते हो? So ये चीजें हैं जो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाती है। Now obvious question is that आप सब लोगों को ये लग सकता है कि ये सारी चीजें तो आपने बता दी, पर करेंगे कैसे इसको? हाउ डू वी डू दिस? ये जानने के लिए तो बहुत अच्छा है, सुनने के लिए तो जो आपने बोला बहुत ही सही बात है। So now I'm going to tell you 21 points. I'm going to share with you 21 points in a couplet of 3 each. So there will be 7 points, 7 major points, and in all those 7 points there will be 3 each things that you are expected to keep in mind, and I would request each one of you to please stop me whenever you feel I'm going too fast. But I wish that you all should make a note of this. Right? So in my word, in my language, I call it 7C of communication. I call it 7C of communication. कम्युनिकेशन के वो कौन से 7 C हैं जो हमको ध्यान में रखने चाहिए, जिसके वजह से आपका कम्युनिकेशन है वो मोर एंड मोर impactful and effective बनेगा. Right? So are we ready with that? Right? Okay. So पहला C है, first C is completeness. Communication has to be complete. Now, when I say completeness, what does it mean? So उसमें 3 चीजें याद रखो कि अगर इन 3 चीजों को आपने एड्रेस कर दिया है, टच बेस कर दिया है, इंक्लूड कर दिया है, then your communication is complete.
बाई फार। फिर उसके छोटे छोटे न्यूआंसेस हो सकते हैं, बट ये मेजर चीज है। सो सबसे पहला चीज ये है कि गिव द रिक्वायर्ड एंटायर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। अगर आप कुछ किसी को बताने जा रहे हो तो जितनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो पूरी आप दो। इतना देंगे तो चलेगा या नहीं, नहीं सब नहीं बता सकते, कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सो डोंट डू दैट। सो कंप्लीटनेस में सबसे पहला पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है वो है गिव रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन entirety. So information is the first thing. Second, should they have any questions, and motivate them to trigger them to ask questions. So whenever they have a question, always answer those questions. Now when I say answering those questions, उससे आप क्या समझते हो? Maybe ध्रुव और दिशान और जो प्रतीक के नाम से जो there is a person who is attending, if they might want to share, what do we mean or what do you mean by answering a question? Like answering any question, just okay, answering just any question. Okay, what's your view, Sachi? What do we mean by answering a question? Clarifying and communicating what we wish. Okay, clarifying and communicating what they want to know, kind of. Yeah, like what they want to understand and what we think they want to understand. Okay, what we think they want to understand. Super. Okay, what's your take on it, Rajan? What do we mean when we say answering a question? Okay, some issue with the mic. So this is something which is answering a question. मैंने एक question पूछा था, आपने answer दिया. Now see, typically try and understand, right? Satisfying the curiosity, absolutely, very near to that, very near to it, you know. So basically what happens is that किसी ने अगर आपसे प्रश्न पूछा है तो जरूरी नहीं है कि उसका सही जवाब आपको देना है. You have to respond to that question. Like let's say for example, if suddenly श्रेयस या तो दीप सर या तो दिव्यराज या तो आकांक्षा या तो शिप्रा या तो कोई भी आप में से हो, आप मुझे ऐसा कोई सवाल पूछ लेते हो कम्युनिकेशन के ऊपर विच इज वेरी स्पेसिफिक टू योर बिजनेस, कि सर ऐसी सिचुएशन में हमको क्या बोलना है या कैसे आंसर करना है या व्हाट शुड बी आवर माइंडसेट. तो एट दैट टाइम एट लीस्ट आई कैन से दैट immediately there are two options. Immediately I can tell them that I don't know as of now, but let me get back to you within so and so time limit with a satisfactory answer to this. समझ में आ रहा है? So मैंने क्या किया? आंसर किया भी और आंसर दिया नहीं. Right, so one of the part is to respond to it. तो अगर आपको कोई query आती है while you are presenting, at that point in time it is very important that you respond to the question. Sometimes people want you to respond to the question. They do not want always for you to answer the question. Are you with me? ये आपको जितना ज्यादा आप अनुभव करोगे आप इससे कन्विंस होते जाओगे. और थर्ड चीज जो कंप्लीटनेस में आपको ध्यान में रखना है वो ये है, थर्ड चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि अगर टाइम मिलता है या जब भी मौका मिलता है, fill up the brain of your prospect or fill up the brain of receiver with some extra information.
सो सबसे पहले तो जितना जरूरी इंफॉर्मेशन है उतना दे दो. नंबर 2, आंसर ऑल देयर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज. एंड नंबर 3, गिव देम सम मोर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन व्हेनेवर यू फाइंड टाइम. हो सकता है किसी से आप मिले हो और किसी ने उस टाइम पे ना तो डील किया है ना तो आपको ठीक से सुना है, बट कार्ड एक्सचेंज हुए हैं. तो हर हफ्ते में या एक महीने में एक बार या कभी भी ऐसा इंपॉर्टेंट वो चीज हो ना, जस्ट ट्राई एंड स्टे इन कॉन्टैक्ट. गिव देम, पुट देम अ लिंक. सर ये एक अपडेट है which is similar to you, which can impact similarly to your field and my field. So I thought it wise to share with you, as you had given a very open and honest response to when we met first. इस तरीके से एक मेल डाल दो, उसको कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहो कि मैं जो कर रहा हूं उसमें क्या क्या डेवलपमेंट है, और अगर आप मेरे साथ जुड़ जाते हो एज अ क्लाइंट और एनीथिंग, हाउ वुड इट बेनिफिट यू. सो कंप्लीटनेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये पहला सी हुआ. पहले में मैंने बहुत ज्यादा टाइम इसके लिए लिया कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि पहले मैं टाइटल या एक बिगर पॉइंट बोलूंगा, बुलेट पॉइंट, और उसके बाद मैं 3 सब पॉइंट्स बोलूंगा. उसके बाद अब जो बाकी के हैं विल गो अ लिटिल बिट फास्टर, सो दैट नाउ यू नो द स्ट्रक्चर. हाँ जी. तो कंप्लीटनेस में पहला पॉइंट है गिव द एंटायर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन. यस. द सेकंड वन इज शुड दे हैव एनी क्वेश्चन, आंसर. या okay, need not be the correct one but answer it. Yes. Third one क्या है सर exactly? Give them extra information. सर वो तो मतलब extra information in what sense? मतलब extra information in the sense जैसे आपका क्या business है? मेरा diabetic insoles का है. Diabetic insole. अच्छा. So are you aware that by which year India would become world's largest diabetic patient population country? Sir, in the next 2 years. In the next 2 years. अच्छा, क्या आपको ये पता है कि by 2016 it was being said that in 3 years it will become world's largest population having diabetes? It was projected but थोड़ा delay. हाँ, it was projected. हाँ, so ये delay हुआ, ये positive sign है या negative sign है? Positive sign है. तो there must be something happened which has controlled diabetics. चाइना की diabetic population ज्यादा बढ़ी थी अपने से, वही एक चीज हुई थी. No sir, so let me correct you that since 2016 till 2021, you know, पिछले 10 साल मतलब 2006 से 2016 में डायबिटीज के ऊपर जितने इनोवेशन या काम हुआ है ना, उससे तकरीबन 4.5 to 5 टाइम्स ज्यादा काम हुआ है डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए 2016 से 20 के बीच में. लोग अवेयर भी ज्यादा है हाउ टू कैटर टू इट. राइट. सो मैंने ये क्या किया आपके साथ? एडिशनल इंफॉर्मेशन. समझ में आ रहा है? समझ गया. ठीक है. ठीक है. तो उनको सिर्फ यही बोलो कि आवर इंटेंशन इज टू मेक इंडिया डिले बिकमिंग नंबर 1 कंट्री हैविंग डायबिटिक पेशेंट, एंड फॉर दैट आई एम शेयरिंग यू दिस इंफॉर्मेशन. तो मतलब रेलेवेंट होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए. उस पे हम आते हैं, रिलेवेंस पे हम आते हैं. अभी ये 3 चीजें देखो. कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देने का. अच्छा, कुछ भी दे देने मतलब का. पूछ रहा हूँ, मतलब कुछ भी मतलब जैसे आपने मेरे को क्या आपको लगता है कि मैं कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए बोलूंगा? मतलब कुछ भी, मतलब इन दैट सेंस की मतलब टॉपिक से रिलेटेड. हाँ, जैसे अपन ने बोला था कि मतलब नीड नॉट बी करेक्ट, मतलब टॉपिक से रिलेटेड. हाँ, बट तो ये नॉट द टॉपिक एग्जैक्टली. हाँ, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको मैं आंसर करूं? हाँ. ओके. कैन यू होल्ड दिस क्यूरियोसिटी till I come to the 7th step and share you the 3 things of 7th step? है ना? So I think probably मैं specifically इस पे टाइम स्पेंड करूं और आप भी टाइम स्पेंड करो, और हम सब अपने 2-2 मिनट, मतलब जो अभी टोटल हम लोग 18 हैं तो 36 मिनट्स हम लोग इस पे डालें. उससे अच्छा हम इस पे बात करते हैं. सो 7 जब तक कंप्लीट हो गए ना, तब आपको पता चल जाएगा कि ये सारी चीजों को मिला करके फिर वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या था. ठीक है. डज दिस मेक सेंस? ठीक है. शैल वी प्रोसीड? हाँ सर. थैंक यू वेरी मच.
So second C is your conciseness. The message has to be concise. अब concise message है कि नहीं आपका, वो इंश्योर करने के लिए आपको कौन सी 3 चीजें ध्यान में रखनी है? सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि there should not be, wordly, description. बहुत लंबा 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 लिख रहे हैं. We should not start with, when there was the first species, Homo sapiens sapiens, when they came out of ape, they have decided a specific pattern of having food. And then with the evolution, it has been seen that the man has becoming more of the owner or a slave of their own choice. And in today's scenario, they have started eating junk food, just like ape or Homo sapiens sapiens ate whatever they wanted to. And that's how the lifestyle disorders came into picture. One of the lifestyle disorder or disease is diabetes. And we cannot let it spread. So we come up with this. इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है. Does this make sense? इतना लंबा करने की ज़रूरत ही नहीं है. काट 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 काट. Impactful खत्म करो उसको. सो कंसाइज करने के लिए एक तो ये देखो कि हम क्या बहुत ज्यादा वर्डली तो नहीं कर रहे. सी अगर आप गूगल करोगे ना तो आपको पता चलेगा दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट ईमेल्स और मैसेजेस और लेटर्स और इंफॉर्मेशंस या जो भी आपको कम्युनिकेट करना है ना, इट इज नॉट लॉन्गर और नॉट लार्जर देन वन स्क्रीन. नॉर्मल 100 पे रख के एक स्क्रीन पे जितना मैटर आपको दिख सकता है ना, विद प्रॉपर 11, 12 और 13 और 14 फॉन्ट साइज, उससे जितने वर्ड्स आते हैं ना, उससे ज्यादा बड़ा मैसेज अगर आपका है ना, तो वो हो सकता है या तो इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं है या तो आपको कन्वे करना नहीं आता है. दुनिया का कोई भी ऐसा मैसेज नहीं है जो इससे बड़ा कम्युनिकेट करना पड़े. इससे छोटा हो सकता है. और इस पे आप और गूगल में जाओगे तो आपको और इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा. देयर आर प्रिसाइज थिंग्स. लोग कितने वर्ड्स पर मिनट सुन पाते हैं अलग अलग कंट्रीज में, लोग कितने वर्ड्स पर मिनट बोल पाते हैं अलग अलग कंट्रीज में, एक मैसेज कन्वे करने के लिए कितने वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, ये सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. आर यू विथ मी? डज दिस मेक सेंस? अब यहां मैं 10 उदाहरण दे सकता था, मैंने नहीं दिए. आई केप्ट द कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन कंसाइज्ड. आई गिव यू पॉइंट्स, जिनको जानना होगा वो सर्च करेंगे एंड देन दे विल वैल्यू दिस इंफॉर्मेशन. आर यू विथ मी? ठीक है, ओके. उसके बाद है इट हैज टू बी रिलेवेंट. कंसाइज तभी है जब वो रिलेवेंट है. अब जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो रिलेवेंट होना बहुत जरूरी है. दुनिया भर की बातें करने के बाद फिर अगर मैं पूछूं कि अच्छा बिजनेस में क्या चल रहा है, या कंसाइसनेस में सेकंड है तो फिर थर्ड वन है. सो हाँ, મને હતું જ. સો જેટલા પણ C છે ને એ બુલેટ પોઈન્ટ્સ છે. 7C એટલે હું તમને સાથે સાથ C કહી દઉં પહેલા, ચલો, એટલે કોઈ કન્ફ્યુઝન ના રહે. બરાબર? પહેલું C છે કમ્પ્લીટનેસ, સેકન્ડ છે કન્સાઇસનેસ, થર્ડ છે કન્સિડરેશન, ફોર્થ છે કરેક્ટનેસ, ફિફ્થ છે ક્લેરિટી. અત્યારે તમે લખી નહીં શકો, લખી શકો તો બહુ સરસ. એના પછી છે કર્ટસી અને લાસ્ટ છે કોન્ક્રીટનેસ. બરાબર? આ 7 છે. I have spoken it in not any particular order, પણ આ 7 C છે. એ સાતેયમાં હું તમને 3 પોઈન્ટ કહીશ. અત્યારે આપણે કન્સાઇસનેસ ના સેકન્ડ પોઈન્ટ ઉપર છીએ, which is relevance. Right? દીપભાઈ, are you with me now? Okay, super. અને ત્રીજું પોઈન્ટ છે બને ત્યાં સુધી લેસ રિપીટેટિવ રાખો. જો તમારે કન્સાઇઝ કમ્યુનિકેશન કરવું હોય ને તો બને એટલું લેસ રિપીટેટિવ રાખો, એટલે ઓટોમેટિકલી કન્સાઇઝ થઈ જશે. સો નંબર 1, વર્ડલી બહુ લાંબુ, ડિસ્ક્રિમિનેશન ડિસ્ક્રિપ્ટિવ બહુ ના કરો. સેકન્ડ, રિલેવન્ટ રાખો. અને થર્ડ થિંગ ઇઝ ધેટ
બને એટલું ઓછું રિપીટેશન્સ કરો. Are you with me? Okay. So then the third point. Then the third point is consideration. Now, when genuinely you want to consider, हाँ आकांक्षा आ गया सत्य की. है ना, थक गया होगा, उसने खाना भी शायद नहीं खाया होगा, फटाफट भाग के ड्यूटी खत्म करके आया. देखो कितना कितना सब कुछ कन्वे करता है ना चेहरा. और यही चेहरा, यही एक्सप्रेशंस लेकर के हम लोग प्रेजेंट करने जाते हैं और फिर कहते हैं कि यार उसको कैसे पता चल गया कि मेरी माली हालत ठीक नहीं है. तो पता चली जाएगा ना, हम चेहरे पे लिख के जाते हैं कि सर प्लीज पैसे दे दो. राइट. Okay, coming back to the third, which is consideration, right? So consideration, अगर आपको genuinely consideration दिखाना है in your communication, तो ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है. सबसे पहली चीज आपको ध्यान में ये रखनी है कि I, me या we जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करके try and use more of you. I repeat, I, me और we जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करके, स्पेसिफिकली जब आप प्रेजेंट कर रहे हो, स्पेसिफिकली आप हायर अथॉरिटीज के साथ बात कर रहे हो, स्पेसिफिकली जब आप डिसीजन मेकर्स से बात कर रहे हो, स्पेसिफिकली जब आप इन्वेस्टर्स के साथ बात कर रहे हो, स्पेसिफिकली आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ जब बात कर रहे हो, स्पेसिफिकली जब आप यू नो इवन मेंटर्स के साथ बात कर रहे हो, यूज मोर ऑफ यू सो दैट दे वुड नो that you are being considerate, you are always considering them first. Does this make sense? Yeah. Okay, so that's first thing. Second is that always talk about benefits to them, and that would in turn create the interest. Always talk about benefits, so that would in turn create interest. And third is that in this part, when you want to exhibit this part, consideration agar aap dikhana chahte ho, always present to them positive and pleasant fact. Positive and pleasant fact. Right? जैसे कि नंबर 1 डायबिटिक कंट्री में इंडिया को हम पीछे धकेल रहे हैं. This is a positive, pleasant fact. Right? ये वर्डिंग्स या अगर आप कोई ऐसे ही सुनाई देगा तो रेस में हम किसी को पहला नंबर पे नहीं आने देना चाह रहे हैं, इट्स नॉट अ गुड थिंग ना. बट इसमें वो ना आए यही सब चाहते हैं. आर यू विथ मी? ओके, सो ये तीन चीजें आपको जाननी है कंसिडरेशन के लिए. अच्छा, उसके बाद है कॉन्क्रीटनेस. How would you be very concrete? Like, so first thing आपको जो उसमें देखना है वो ये है कि आपके facts and figures बहुत ही specific होने चाहिए. जैसे कि हम लोग हर बार सेशन की शुरुआत करते हैं with 7-day victory और 3-day victory, और हर बार हमको कोई ना कोई एक बंदा तो हमारी टीम का मिल ही जाता है जो हमें into bracket or in a particular क्या बोलते हैं span percentage achievement सुनाते हैं. प्रोफेशनल मेरा 40 से 45% अचीव हुआ है और पर्सनल जो है वो ऑलमोस्ट 90% अचीव हुआ है. अब मुझे कोई प्लीज ये समझा सकता है कि 40 से 45% मतलब क्या? 40.001, 40.002, 44.99999 मैं क्या समझू? और ऑलमोस्ट 90% मतलब क्या? वो है 19, बट मैं इतना पॉजिटिव हूं कि इस 19 को एक दिन 90 करके रहूंगा या करके रहूंगी. तो मेरे हिसाब से तो अगर आप देखो तो वो ऑलमोस्ट 90% ही है. डज दिस मेक सेंस? इतना बोलने के बाद हम पिछले ये 9वां सेशन है. 8 times we have started the sessions with
sharing your dream, I mean achievement. और उसके बाद भी you know our mode of communication is approximate, in between so and so. अरे क्यों? प्रिसाइसली कैलकुलेट करो ना कितना परसेंटेज होता है, एज सिंपल एज दैट. और अगर किसी को नहीं समझ में आता है, आकांक्षा का ऐप खरीद लो, वो परसेंटेज निकाल के दे देगा. सो सी, आई हैव क्रिएटेड लॉट मेनी कस्टमर्स फॉर यू आकांक्षा. नाउ इट्स अप टू यू टू सेल. ठीक है, ओके. सो facts and figures have to be very specific. You cannot forge, or you cannot play around, or you can falter around while you are presenting numbers or figures or facts. Because believe you me, आप जिनके सामने भी प्रेजेंट कर रहे हो ना, वो सब खाए खेले हुए लोग हैं. चुटकी में पकड़ लेंगे कि आप उन्हें क्या, मतलब किस रास्ते पे ले जाना चाहते हो. They will make you feel that they are going on a tour with you, but ultimately when you will land, you will understand that you have landed in their plane via their route on their destination. तो ये हमेशा याद रखना. ऐसा अनुभव कुछ कुछ लोगों को हो चुका होगा, जिनको नहीं हुआ है उनको होगा. राइट? ओके, सो ये होना जरूरी है, फैक्ट्स एंड फिगर्स. सेकेंड, अच्छा, वर्ब्स कितने लोगों को मालूम है? व्हाट इज वर्ब्स? इंग्लिश में ग्रामर में वर्ब्स पढ़े ना? हाँ, दृष्टि बताओ, व्हाट आर वर्ब्स? It's अनम्यूट. hello, sir. Basically, sorry. It's verbs are basically expressions. I would say Expressions. Some expressive words. Like shouting. Okay. Some Super. And what are action verbs? अभी सर सच्ची बोलो, अरे लैंग्वेज पता नहीं है तो कम्युनिकेशन कैसे करोगे? the definition. I don't even remember the definition. If રાજન, ક્રિયાપદ, तो તમે ક્રિયાપદની डेफिनेशन को राजन. ये महामंत्री आपसे नतमस्तक विनती कर रहा है राजन कि कृपया बताएं क्रियापद क्या होता है. Rajan, if you might want to go unmute, or you might want to type into chat. So basically my point is, पहला तो ये जे क्रिया दर्शावे, सुभान अल्लाह, जे क्रिया दर्शावे એ ક્રિયાપદ. એમાં શું સર, આવા તો સવાલ પૂછાતા હશે. But what I am trying to share with all of you is that, number one, find the definition of action verbs immediately after this session, and try and use more of action verbs in your communication. That would make it more concrete. I would make sure it reaches you intact. I would see to it that you get the sample in so and so time. We don't mind doing a demo, right? What are action verbs? An action verb is a verb that describes an action, like run, jump, click. Superb. Thank you. ठीक है? So वैसे तो सबको पता है, ये लोग सब मेरी टांग खींच रहे थे, तो I know, I do understand that, but that's okay. आज हमने पूरा थोड़ा enjoyment वाला ही सेशन शुरू किया था. ठीक है? So use more and more of action verbs if you want to make your communication more concrete. And the third thing that you should know is that, आपको डिस्क्रिप्शन जो है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उनके दिमाग में एक पूरा इमेज बिल्ड हो. So your description should help them to build an image. प्रोडक्ट का की ब्रांड का? हाँ जी. Build an image of the product, of the brand, or of the person who is conveying. मतलब हम. हाँ, at that point in time आप जो कर रहे हो, अगर आप उनको प्रोडक्ट बेच रहे हो तो प्रोडक्ट का,
अगर आप उनको ब्रांड बेच रहे हो तो ब्रांड का, अगर आप खुद को बेच रहे हो उनको तो खुद का। Does this make sense? Yeah? Okay. अब अगले पे चले, क्लैरिटी पे, राइट? सो क्लैरिटी इज योर फिफ्थ सी। एंड क्लैरिटी में एक तो सबसे पहले आपको एकदम ही प्रिसाइज होना पड़ेगा, as precise as you can. Whenever you create your communication or prepare for your communication, you have to be absolutely precise. Second thing ये है कि ऐसी लैंग्वेज या इस तरीके से कम्युनिकेट करो कि उनको फेमिलियर लगे। मैं एग्जैगरेटेड मैनर में आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसको आप अपने बिजनेस के हिसाब से मॉड्यूलेट करके समझ सकते हो। लाइक मैं किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहा हूं कि भाई तूने साइकिल चलाई अपनी जिंदगी में? बोलेगा हाँ मैंने चलाई है। अच्छा भाई टू व्हीलर चलाया? बोले हाँ चलाया है। टू व्हीलर में विद गियर चलाया विदाउट गियर? बोले दोनों चलाया। यार क्या बात कर रहे हैं। अच्छा कोई हाई एंड टू व्हीलर चलाया? बोले हाँ चलाया है। ओह वेरी गुड। डिस्क ब्रेक वाले चलाए हैं? बोले हाँ चलाया है। वेरी गुड। अच्छा तो फिर फोर व्हीलर? बोले हाँ चलाया है ना। अच्छा विद गियर की वो ऑटो गियर शिफ्ट वाला चला है? बोले दोनों चलाए हैं। उसमें हाई एंड? बोले हाँ वो भी। सो इन शॉर्ट आई कैन से कि आपने बहुत अच्छे से यू नो हाउ टू ड्राइव अ व्हीकल, राइट? ओके चल आजा हम लोग एयरपोर्ट पे चलते हैं। आई वांट यू टू फ्लाई अ प्लेन। If I wouldn't have prelude him with this conversation और सीधा खड़ा कर दिया होता प्लेन के सामने कि अभी आज से तू प्लेन चलाएगा, और दूसरा है कि मैंने उसके साथ पहले ये बात की है फिर उसको बोला है कि भैया ये भी एक व्हीकल ही है ना, डोंट वरी देयर आर इंस्ट्रक्शंस, देयर इज अ co-pilot who will instruct you, you just have to sit on a pilot seat। और धीरे धीरे जैसे तुम कार सीखने जाते थे तब आप चलाते थे और सिखाने वाला बाजू में बैठता था, उसके बाद लाइसेंस लेने के लिए गए तो खुद ही चलाया, उस तरीके से प्लेन भी उड़ाना आ जाएगा। डज दिस मेक सेंस? आप समझ पा रहे हो? सो उस तरीके से आपको उसको ये लगना चाहिए कि हाँ ये फैमिलियर बातें कर रहा है, जो भी बात कर रहे हैं फैमिलियर बात कर रहे हैं। आर यू विथ मी? अच्छा एक डिस्क्लेमर या एक इंफॉर्मेशन मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। I pray to God that the situation that we are going through changes or becomes a little bit more in favorable to us. We are game, me and Payank sir, both of us are game to have one-to-one with almost all of you, right? And when we'll do that one-to-one, which has been already communicated to mentors. So when we do that one-to-one with you and your mentor, तब क्या होगा कि अभी मैं है ना जनरलाइज जो बात कर रहा हूं ना, we'll convert it to specific, specifically customized to your startup, specifically customized to your product, और थोड़ा बहुत स्पेसिफिक तो हम आज भी अभी भी काम करने वाले हैं, राइट? क्योंकि मेरे पास अभी भी तकरीबन 20 मिनट है, तो वो 20 मिनट मुझसे कोई नहीं छीन सकता है ना। मैंने बोला था 3 बजे से पहले खत्म कर दूंगा, तो है ना। ओके गुड। सो उसके बाद जो है वो है लास्ट वाला, विच इज आपके जो सेंटेंसेस और पैराग्राफ आप जो बनाते हो कम्युनिकेशन में, अगर आपको क्लैरिटी अच्छी रखनी है तो इट हैज टू बी इफेक्टिव। मतलब ज्यादा लंबे नहीं, ज्यादा छोटे नहीं। डोंट गिव टू मच इंफॉर्मेशन, राइट? डोंट मिक्स टू डिफरेंट पॉइंट्स इन वन। मतलब इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा है और उसमें 4 अलग अलग चीजों के बारे में बात कर ली। डोंट डू दैट, राइट? उसके बजाय 4 पैरा कर दो या तो बुलेट पॉइंट्स कर दो। Are you being able to understand? एक होता है आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का पूरा पैराग्राफ लिखते हो विच इज अ हाफ पेज, और एक है कि उसी प्रोडक्ट का प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो आप, मे बी हाफ पेज से थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, बट 6 पॉइंट्स लिख रहे हो आप। सो होगा क्या? देयर इज अ डेफिनेट स्टार्ट इन द माइंड ऑफ द रीडर एंड देयर इज अ डेफिनेट एंड ऑफ अ पॉइंट इन अ रीडर।
Our product is not only helping you to fill up the air in the tires, but it also prevent you to go on the go, and you need not to check the pressure in between. You do not to stop the car. Also, what you can do is that even if it is punctured, it will automatically fill up the air, and this is everything of this is going to happen while you are driving. So if you want to keep your tires filled with air, please keep on driving your car. ये कोई ऐसा हमारे बीच में स्टार्टअप है, आपको पता है ना? तो समझ में आ रहा है कि क्या हुआ पूरा सब उसको सब. सो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हाइल वी आर क्रिएटिंग दिस. तो हमारे सेंटेंसेस और पैराग्राफ बहुत ही प्रॉपरली होने चाहिए. उसके बाद है वी हैव टू बी कर्चियस. कर्टसी दिखाना बहुत जरूरी है. उसमें सबसे पहले पॉइंट में 3 टी याद रखो. कर्चियस या कर्टसी के पहले पॉइंट में 3 टी याद रखो. वी हैव टू बी ऑलवेज tactful, we have to be always tactful, we have to be always thoughtful, and we have to be always thankful. While we are communicating, always be tactful, thoughtful, and thankful. ठीक है? उसके बाद है कि whenever you get a chance and opportunity during the conversation, do not forget to show respect. And third is be non-discriminatory in your communication. किसी लोगों को ये ऐसे लोगों के लिए है या इनके ऐसे लोगों के लिए नहीं है, ये नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, इस तरीके के कम्युनिकेशन से दूर रहे. Are you with me? Huh? Acha, now can I request each and every one of you to kind of take your chair or yourself about 2.5 feet away from the camera. 2.5 feet away from the camera. कर दिया सबने? हाँ. So अगर उसका एक मेजर ये है, आप उतने दूर होने चाहिए कैमरा से कि अगर आप सामने हाथ ऐसे कर रहे हो जैसे मैंने किया है, तो वो स्क्रीन से तकरीबन 4-5 इंच दूर रहने चाहिए. करो तो सब. हाँ, रहे. वेरी गुड. और ऊपर दिखने चाहिए हाथ. जैसे मेरा चेहरा ढक गया है ना मेरे हाथ से, ये रहा मैं, ये गायब हो गया. ऐसे करो. वेरी गुड. अब ये हाथों को थोड़ा सा ऐसे दूर करो, ऐसे दूर करो. अब मुट्ठी, you know, just like Superman. It's a bird, no, it's a plane, it's a Superman. ऐसा करो. अब घुमाओ राइट, घुमाओ. वेरी गुड, सुपर, वेरी नाइस. अब रिवर्स, राइट. सो ये आपने बहुत अच्छा किया. अरे सत्य की आप नहीं कर रहे हो. सो नाउ यू हैव टू टैप योर बैक. सो टैप, वेल डन बोलो. ऐसे कोनी थोड़ा ऊपर आना चाहिए, उस तरीके से. टैप योर बैक, वेल डन. हाँ. अब हाथों को यही रखो और रोटेट योर नेक 360 डिग्री ऐसे, वन साइड. हाँ. अब रिवर्स. सुपर्ब. नाउ क्लैप फॉर योरसेल्फ. वेरी गुड, वेरी नाइस. क्लैप फॉर योरसेल्फ. दिखाओ अभी कैसा महसूस हो रहा है. थोड़ा सा वापस आ गए, रिलैक्स हुए. देखो एक चीज हम सबको कभी नहीं भूलनी चाहिए, वो ये है that we must respect each other as human being. हम सब इंसान हैं, राइट. गला सबका सूखता है, सबको ड्यू पीना होता है, मैं समझ सकता हूं. पर इतने टाइम के लिए इस तरीके से बैठना, I literally salute each one of you, the kind of dedication you guys are showing. We are all humans. It's not easy. आप ना पानी पी रहे हो, ना ब्रेक मांग रहे हो, ना कुछ कर रहे हो. हाँ, आपस में और प्राइवेट में चैटिंग हो रहा है कुछ लोगों के सामने, और साथ में बहुत कंटिन्यूअसली हो रहा है. वो मेरे को पता भी चल रहा है, उसके मजे भी लिए जा रहे हैं. बट एंजॉय, वो तो अच्छी चीज है, वो करना चाहिए, राइट. बट ये थोड़ा. सो आज से मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब भी हमारे सेशंस हों, उस टाइम पे इफ यू आर इंटरेस्टेड
you will remain invested. तो उस टाइम पे अगर ऐसा आपको लगता है तो खड़ा होकर के ऐसा करके सेशन अटेंड अगर आप कर रहे होंगे तो हम आपको नहीं पूछेंगे कि क्यों खड़े हो, बैठे क्यों नहीं. Because one thing as an entrepreneur that you are supposed to, or you are expected to remove out of your brain, that I told in earlier sessions also, that now you are an entrepreneur, and entrepreneurship is a mindset. Now you're no more a student, at least not in these sessions, at least not when you are doing your professional activities. तो आप इस सेशन में एज अ स्टूडेंट, हाँ लर्नर हो सकते हो. लर्नर तो मैं भी हूँ, पयंक भाई भी हैं, सब लोग लर्नर हैं जो इस सेशन में प्रेजेंट है, और इस सेशन के बाद भी हम तो लर्नर रहने वाले हैं. बट आप स्टूडेंट नहीं हो, सो स्टॉप बिहेविंग लाइक अ स्टूडेंट, राइट? एंजॉय एंड ग्रास्प एज मच एज यू कैन. समझ में आ रहा है? अगर 2:45 बजे या 3 बजे आपको ऐसा हो रहा है ना, हाश खत्म हुआ, तो वो हम सब की हार है. We have all cumulatively failed, and I don't want that to happen. Are you with me? Are you with me? Okay. So अब चलते हैं लास्ट वाला. 6 हो गए ना, पक्का ना? Okay. So 7th one है करेक्टनेस. करेक्टनेस को कैसे आप इंश्योर करोगे? सो सबसे पहले है कि एक तो आपका जो लैंग्वेज है ना, वो राइट लेवल का लैंग्वेज होना चाहिए. इफ यू रिमेम्बर, मेरे लास्ट वाले सेशन में मैंने आकांक्षा से बोला था कि जिस तरीके से हम माई के साथ बात कर सकते हैं या आई के साथ बात कर सकते हैं, वैसे बाई के साथ बात नहीं कर सकते, एंड वाइस वर्सा. Right? So wherever you are presenting, you have to be absolutely conscious about it, that what level of language, what type of language you should use. किस भाषा में बात कर रहे हो? आप अपने दोस्तों के साथ खड़े और जो स्लैंग यूज करते हो, वो स्लैंग आप यहाँ यूज नहीं कर सकते when you are presenting your business to somebody. Does this make sense? तो एक तो ये चीज है. दूसरा, फैक्ट्स एंड फिगर्स के वर्डिंग्स में भी ध्यान रखो. फैक्ट्स एंड फिगर्स के वर्डिंग्स जिस तरीके से आप करते हो टू मेक इट मोर करेक्ट, उसमें भी ध्यान रखो, राइट? एंड थर्ड चीज ये है कि ऑलवेज यूज एक्सेप्टेबल राइटिंग मैकेनिज्म. अब ये क्या है? ये कुछ नया ही फंडा लेके आ गया है अंकित भाई. एक्सेप्टेबल राइटिंग मैकेनिज्म इज means, कोई कुछ बोल रहा है? Sir, can you repeat? Acceptable writing mechanism. So acceptable writing mechanism मतलब HAVE have ही लिखना है, HV नहीं लिखना है. GIVE give ही लिखना है, GV नहीं लिखना है. GOODMORNING गुड मॉर्निंग ही लिखना है, GM नहीं लिखना है. Does this make sense? Right? और ऐसे बहुत सारी चीजें. So जो जनरली एक्सेप्टेबल राइटिंग मैकेनिज्म है, उसी को, कोई स्लैंग या कोई शॉर्टकट या कोई स्पेशल टर्मिनोलॉजी या वर्डिंग्स हमको यूज नहीं करना है. तो ये 7 C अगर आप इस पे महारत हासिल कर लेते हो, इस पे अगर आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपका शॉर्टर प्रेजेंटेशन है या लॉन्गर प्रेजेंटेशन है या कुछ भी है, तो उसमें वो ज्यादा इफेक्ट या इम्पैक्ट आ जाएगी. अब मुझे आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट कम्युनिकेट करने हैं अगले 8 मिनट में. In next 7 to 8 minutes, I'm going to share with you only 2 points. And if you understand these 2 points, or when you understand these 2 points, your life as an entrepreneur will change. I commit to you that. So number 1 is that I would like to share with you a survey that has been done by Gallup for 25 years across startups, across businesses, across MNCs, across organizations, across country, in different parts of the globe. This survey was done by Gallup.
and the tenure was 25 years. And the survey was only on one question: what an organization communicates. What a company communicates. कंपनी क्या कम्युनिकेट करती है, भले वो वन मैन आर्मी हो, भले ही वो मल्टीपल लोगों की हो, थाउजेंड्स ऑफ लोगों की हो, पर उसे आइडियली वो क्या कम्युनिकेट करना चाहिए. एनी ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द थिंग्स दैट दे शुड कम्युनिकेट. तो उसके उनको 4 आंसर्स मिले. एंड लेट मी टेल यू, ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इतना क्रिटिकल है. आपको आई एम श्योर आज तक, पहले तो आप यू मस्ट हैव नेवर कम अक्रॉस दिस, और ये ढूंढने से भी बहुत आसानी से नहीं मिलेगा, इतना क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है. सो नंबर 1, एनी ऑर्गेनाइजेशन, what they communicate is, they communicate accuracy. They communicate accuracy, how accurate they are. And accuracy की हम जब बात करते हैं तो it involves credibility, trust, love and passion. Are you with me? So पहली चीज एज एन ऑर्गेनाइजेशन, आपका ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है? हम ही है, राइट? सो हमको एक्यूरेसी कम्युनिकेट करना है. सर नंबर 1, वी हैव टू बी एक्यूरेट. अगर ये बोला है तो ये करना पड़ेगा. अगर क्लाइंट ने कुछ प्रॉमिस किया है तो वो प्रॉमिस निभाए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है. हाँ, अगर उनको अलग से बिहेव करना है तो अलग बात है, पर जेंटली हम रिमाइंड तो कर ही देंगे कि आपने ये कमेंट किया था. सो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू विद इन दिस टाइमलाइन. इज इट गोइंग टू हैपन or is it not going to happen? Or what are we doing on that? At least give me updates. Are you with me? बिना हिचकिचाए. So you can be that accurate. So सबसे पहला एज एन ऑर्गेनाइजेशन, आपके बिहेवियर में, आपके एक्शंस में, आपके माइंडसेट में, आपके एटीट्यूड में क्या कम्युनिकेट होना चाहिए? एक्यूरेसी. नंबर 2, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, what you should communicate is availability. Now availability does not mean that किसी ने फोन कर दिया और अगर आप अभी भी मिडिल ऑफ द सेशन हो तो अभी भी उठा रहे हो, उठा लिया. नहीं यार, मेरे को तो उठाना ही पड़ेगा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है, ओके. उसके बाद है थर्ड इज पार्टनरशिप. Any organization should communicate partnership. Now what do I mean by partnership? Always make your client or prospect feel that they are the master contributor of your business success and thank them. And second is that always show up. जहां पर भी जरूरत है उनके सामने जाकर के बात करो. हम यहाँ ऐसी जगह स्टक हो गए, क्या करें आप बताओ? Because you have trusted us, because you are more experienced than us, because you are using our product, tell us how we can overcome this problem. कितने लोगों ने गुरु पिक्चर देखी है? देखी है ना? अच्छा, दृष्टि, उसमें वो सीन देखा है आपने जहां खुद अभिषेक बच्चन जाकर के पूछता है, बनना चाहते हो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी? उसके बाद बोलता है, बनना चाहते हो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी? पता है? एंड दिस कम्स एज एन इंटरवल, एंड व्हेन यू सी एट द ऑडियंस, द नंबर ऑफ staff members have increased multifold when he asks, बनना चाहते हो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी? तो वो क्या कर रहा है? Is considering their internal client as a partner. Are you with me? Right? So partnership. And last but not the least, as an organization, you should come across to all your prospect and everybody with whom you are dealing as an advisor. एक सलाहकार है ना, वो कभी गलत एडवाइस, गलत सलाह नहीं देता है, चाहे वो उसके खुद के बेनिफिट में हो या ना हो. अगर कस्टमर को ये ट्रस्ट आ गया ना कि भाई भले ही वो मैथ की एप्लीकेशन बनाती है, पर मेरे को अगर कांजीवरम साड़ी खरीदनी है तो मुझे आकांक्षा को ही फोन करना पड़ेगा. अगर उसको नहीं पता होगा तो वो मना करेगी, बट अगर पता होगा तो वो बहुत ही बेस्ट जगह ही बताएगी. या भले ही वो
मतलब कोई भी बिजनेस में हो, पर मैं उनसे कुछ भी पूछ सकता हूं एंड आई विल गेट अ राइट फीडबैक एंड एडवाइस फ्रॉम देम। जिस दिन ये ट्रस्ट आपने अपने कस्टमर को दे दिया ना, उस दिन आपको बेचना नहीं पड़ेगा, यू हैव टू हेल्प देम बाय। आर यू विथ मी? Is the session becoming interesting and meaningful? If yes, type yes in the chat box quickly. ओके, काफी सारे आए हैं, 5 6 7 सुपर 8 9। अरे वाह, सब जग रहे हैं, वाह। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, सो अब मैं ये एक चीज पूछना चाहता हूं, 256 हो रहा है। मैंने आपको 2 एक्टिविटीज कमिट की थी और 2 इंफॉर्मेशन कमिट किया था। पहला था वो गैलप का सर्वे रिजल्ट जो मैंने अभी कम्युनिकेट कर दिया। दूसरा वाला जो मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूं ना, वो डायरेक्टली स्पेसिफिक टू योर ओन बिजनेस है, बट इट माइट टेक अबाउट 10-15 मिनट्स। इफ यू परमिट वी डू दैट। व्हाट शुड वी डू? शैल वी गो अहेड? श्रेयस की ओर से यस आ रहा है, दिव्यराज की ओर से ओके, सुपर सुपर। सत्यकी की ओर से यस आ गया, सुपर। आकांक्षा टाइप कर रही है, वाई पे उंगली गई है, ओके ठीक है। ओके ठीक है। सो ये बाय द वे फ्रेंड्स है ये कम्युनिकेशन का सेशन, बट रिमेंबर मैंने जो अभी किया उसे डोर नोब क्लोज कहते हैं। मैंने जो अभी किया उसे डोर नोब क्लोज कहते हैं, राइट? आपको लगा अरे 3 बजे तो खत्म ही होने वाला है ना, 2 मिनट पहले मैंने 15 मिनट और मांग लिया आपके। यस नो, राइट? अच्छा, बट आई मेक श्योर दैट आई विल मेक द बेस्ट 15 मिनट्स ऑफ योर इन कमिंग 15 मिनट्स। सो ये 15 मिनट में हम लोग ये एक्सरसाइज करने वाले हैं कि आप लोग अलग अलग जगह पे प्रेजेंटेशंस करने वाले हो, जिसमें कभी कभी आपको 30 सेकेंड मिलेंगे, कभी कभी आपको 1 मिनट मिलेगा, कभी कभी आपको 5 मिनट मिलेंगे, कभी कभी आपको 7 मिनट मिलेंगे, कभी कभी आपको 10 मिनट मिलेंगे, कभी आपको आधा घंटा मिलेगा, कभी कभी देयर विल बी नो टाइम लिमिट। पर क्या आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो? अगर मैं आज आपको कहूं अभी कि चलो यार एक ब्रेक ले लेते हैं और 4 से 5 कोई भी एक बंदा 1 घंटे के लिए कंटिन्यूअसली अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोलेगा, क्या आप रेडी हो? क्या आपको रेडी होना चाहिए? The answer has to be yes, right? तो उसकी शुरुआत हम अभी से करते हैं। शुरुआत कैसे करेंगे? हम लोग ऐसे शुरुआत करते हैं कि आपको 30 सेकेंड्स और 1 मिनट प्रिसाइसली ऑन बाय द वॉच, 30 सेकेंड्स और 1 मिनट में अगर आपको आपकी कंपनी के बारे में, आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके स्टार्टअप के बारे में बोलना है, तो आप कैसे बोलोगे? उसका स्क्रिप्ट अभी हम रेडी करेंगे एंड आई वांट एवरीवन ऑफ यू टू शेयर इट, राइट? सो हम लोग 2 मॉडल प्रिपेयर करेंगे। अगर 30 सेकेंड्स में आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोलना है और 1 मिनट के लिए अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोलना है। Now let me give you structure. 30 सेकेंड्स में आप बहुत ज्यादा कुछ तो बोल नहीं पाओगे, तो उसको इफेक्टिव 30 सेकेंड्स बनाने के लिए 2-3 टिप्स दे रहा हूं। पहला टिप ये है कि यू कैन शेयर द इम्पैक्ट दैट यू हैव क्रिएटेड with your product or service, a large impact that you have created or you can create, right? वो 30 सेकंड में सिर्फ वही बताना है आपको, right? Just to give you an example, we have decided, okay, so let's say I am Ankit Jodhipura and we have decided that by 2023 the road accident that happens because of the tire burst, we personally are going to ensure that it going to go reduced by at least 35 to 40%. And to do that, or how is it going to happen, please contact us via Boogiesoft or so and so and so and so. 30 सेकंड में आपने बोल दिया क्या कर,
राइट। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, दूसरा एग्जाम्पल ये, सो पहला ये कि सबसे बड़ा इंपैक्ट आप क्या क्रिएट करने वाले हो, वो इंपैक्ट को इंक्लूड कर लो, एंड देन अपने कंपनी का नाम बोल के एक क्वेश्चन या एक एंकर छोड़ दो जिससे सामने वाला पूछने के लिए मजबूर हो जाए कि ये आप कैसे करते हो, मुझे इसके बारे में और जानना है। आर यू विथ मी? सो दैट इज वन वे ऑफ क्रिएटिंग योर 30 सेकेंड्स। मैं दो वे बताता हूं, दोनों में से किसी भी एक वे में आप कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल बट दीज टू आर गोना बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर यू। सो दूसरा जो है ना वो ये है कि दुनिया का कोई अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई ऐसा फैक्ट ले लो एंड बिगिन विथ डिड यू नो करके वो फैक्ट बोलो कि भाई ऐसा 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 है। And to overcome that, this is the most probable solution. We are into this. Kindly contact us. समझ में आया? पहला मैंने क्या बोला, सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या आप ला सकते हो उससे करो बात, और उसके बाद उस अपने ऑर्गेनाइजेशन पे ले आओ। Like by 2023, we have taken a mission that road accident being caused by tire burst, we personally are going to ensure that that reduces by 35 to 40%, and to do that we have so and so product. Kindly contact us for demonstration or one-to-one meeting. समझ में आया? Right? अब fact की बात करता हूं। How can you pick up a fact and create your 30 seconds? So did you know that globally India is the only country which has been considered as the largest population who are strongest in the mental mathematics? We want to retain that, and we want to obsolete all the calculators from at least India. And to be able to do that, we have an application, and people will learn mathematics just by playing games. So contact us. एंड ये जो मैंने बोला असल में फैक्ट है। वर्ल्ड ओवर मेंटल मैथमेटिक्स में इंडियंस आर कंसिडर्ड टू बी दी बेस्ट। जैसे ही आप इंडिया के बाहर जाते हो ना, लोगों को 8 4 32 बोलने के लिए भी कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। डज दिस मेक सेंस? तो अभी एग्जाम में हमारी हालत हो जाती है 8 4 32 वो भी कैलकुलेटर पे। आई नो। सो अभी मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं, विच इज almost what 6 times the 30 seconds. दो में से एक टाइप को सिलेक्ट करके आपको अपने 30 सेकेंड्स बनाने हैं क्विकली। अभी के अभी अपने बिजनेस के बारे में लिखो 30 सेकेंड्स, और उसके बाद हम सबसे शेयर करेंगे, एंड आई विल गिव यू माय टिप्स एंड इफ इट ऑल एनीथिंग व्हिच इज टू बी एडेड टू दैट। क्विकली 30 सेकेंड्स बनाओ। Okay, in a minute from now I am going to stop you. तो उस हिसाब से आप लिखने का स्पीड बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। In a minute from now I am going to stop you.
Okay, so I believe everybody is almost ready, and shall we begin? दिव्यराज, आपका हो गया है? Yes, sir. हाँ, so shall we begin with you, Divyaraj? Okay, sir. Did you know every year in just Gujarat there are 2,000 cattle dies due to wild animal attack? So we do have a product to solve this. Please do contact us. हाँ, ओके, सो दिव्यराज, एक दो तीन चीजें, एक तो ये है कि ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा सो दैट यू कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली. ओके, राइट? अभी आपने लिखा है तो ब्रेक्स आ रहे हैं बहुत. डिड यू नो दैट ओनली इन गुजरात देयर आर कैटल्स हु डाइज, राइट? तो वो सामने वाला राह देख रहा है, अच्छा अभी कब आएगा नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, कब आएगा नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, राइट? अच्छा, सेकेंडली, merely by saying that we have a product to resolve that, ये तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है ना. जो भी प्रोडक्ट बना रहा है, did you know that aeroplane needs a special fuel, we have a product for that. उसमें भी मैं we have a product for that बोल सकता हूँ, right? Did you know that diabetes is a deadly disease, we have a product for that. उसमें भी मैं we have a product for that बोल सकता हूँ. So you have to be extra specific कि आपके प्रोडक्ट से क्या इंपैक्ट आता है वो कैटल डिजीज में. ओके, एंड किस तरीके के डिजीजेस को आप या तो ट्रैक करते हो या तो आप उसको क्योर करते हो. सर ये डेथ, मतलब जो वाइल्ड एनिमल की वजह से डेथ हो रही है, उसके लिए प्रोडक्ट है. हाँ, so, आप जो बोल रहे हो, it's like very specific. No. So it is like animal killing an animal, right? हाँ. तो अब क्या, अब उसके क्या, आपकी क्या प्रोडक्ट है? फेंस गार्ड. हाँ, ठीक है. और वो जो जमीन के नीचे भी डिटेक्ट कर लेता है? नो सर, वाइल्ड एनिमल जो लाइक लायंस है, टाइगर है, जो फार्म के अंदर आके मार देते हैं, वो उससे रोकता है, मतलब इलेक्ट्रिक फेंसिंग लाइक दैट. अच्छा, इलेक्ट्रिक फेंसिंग है आपका. yes, अच्छा, ठीक है. ओके, सो आप पहले तो ये आंकड़े निकालो कि कितने इस तरीके से जो बोलते हैं शिकार हुए, मतलब जो हंटिंग कार्निवोरस एनिमल्स है उसके वजह से कितने कैटल्स या कितनों की डेथ हुई. ओके, डिड यू नो दैट दिस मेनी नंबर ऑफ काउज और कैटल्स they lose their life only because of this attack? Okay, right? Yes, sir. उसके बाद एक क्वेश्चन खड़ा करो. What if I tell you that we have something that can prevent the animal to attack your cattle? If you would like to know more, please contact us. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay. चलो. Who's next? I'll go. Okay, Shreyas. So India is the number 2 in world diabetic population, and there are about 2 crore patients who suffer from foot ulcer. And by 2025, we aim to bring that number down by 30%. And we at Fistech Labs have a solution for that, and we want to partner with you to bring that mission to life. So contact us to know more. Okay, super. So ये आपने almost परोसी हुई थाली को अपनी बना लिया है. Very good. But I want your creativity to come out. अगर मैं आपकी जगह होता श्रेयस, तो मैं कुछ ऐसे बोलता कि इंडिया बीइंग नंबर 2 डायबिटिक, there is another fact is that wherever you have in your any body part, ulcers are bad. And we want to give you happiness out of by getting rid of this. So उसके बाद में उसको, so ये मैं immediate कर रहा हूँ. but अगर हम बैठेंगे तो we can more impactful, more concise, सारे 7 C को implement करके हम ऐसा 30 seconds बना सकते हैं जो innovative भी लगे और सामने वाले को ऐसा एक enthusiasm transfer हो, एक उसको anchor मिले कि ये पूछना चाहेगा कि हाँ आप ऐसा क्या करते हो श्रेयस, right? हाँ सर, इससे ना वाली जो 30 सेकंड वाली पेज है ना, इससे मेरे स्लाइड में मेरे को है ना 3 स्लाइड रिडंडेंट फील होने लगी है.
ये एक इमीडिएटली ये 30 सेकंड के उससे मेरे को 3 स्लाइड रिडंडेंट फील हो गई मेरे पीपीटी में। होगा ही। सुपर। ओके, हु विल गो नेक्स्ट? अच्छा, मैं इनवाइट करूं क्या? ओके, चलो ध्रुव, आप 30 सेकंड सुनाओ अपने क्विकली। Let me just. So we are developing industrial grade respirators which are usable, economically improved and cost effective, which has the potential to increase the occupational health of your beloved workers. We are in respirators. सुपर। ध्रुव, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं शायद ऐसे बोलता कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अगर आप सांस ले रहे हो तो आप जिंदा हो, और उन्हीं सांसों को निरंतर चलाने के लिए एक छोटी सी पहल हमने की है। वी आर सो एंड सो रेस्पिरेटर्स, टू नो मोर डू कॉन्टैक्ट अस। डज दिस मेक सेंस ध्रुव? वेरी मच। या अब इसको और इफेक्टिव बनाओ। और देखो, एक चीज आप याद रखो, जितने क्रिटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उतना क्रिटिकली वो इमोशंस से जुड़े हुए होते हैं लोगों के साथ। ऐसे ही इस पेंडेमिक सिचुएशन से पहले अगर किसी को बोला होता तो कुछ किसी को फर्क नहीं पड़ता था। अभी खाली इतना बोलो ICU, यस, उसको कुछ और ही ICU समझ में। अच्छा, ICU में है? अरे मैं कह रहा हूं ICU। समझ में आ रहा है? बिकॉज इट इज सो स्ट्रांगली अटैच्ड एज ऑफ नाउ विद द इमोशंस। पॉजिटिव आ गया, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया, ICU में डाल देना पड़ा। अभी वेंटिलेटर पे डालेंगे, फिर कल को चिता पे डालेंगे, खत्म हो गई कहानी। आर यू विथ मी? सो जितने क्रिटिकल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, उसका उतना ही स्ट्रॉन्ग एंड क्रिटिकल इमोशंस है। उसके साथ जोड़ना मत भूलो, राइट? ओके, चलो अभी कौन है जो कि स्टार्टअप है और जो बोल सकते हैं? ओके, राजन, द क्रीक रीजन ऑफ कच्छ इज द मेजर कॉज ऑफ, क्या है, कंसर्न फॉर, अरे चला गया, is a major cause of concern for the armed forces due to the uncertain nature of the terrain, along with the sensitivity because of the proximity to the international border. भाई ये 30 seconds में बोल सकोगे राजन? आपने लिखा बहुत ही अच्छा है। So you guess, don't guess यार, be sure, it's your business. We want you to earn money. We want you to change your lifestyle and standard. या तो इस पे थोड़ा सा एनसी, एक चीज मैं आप सब लोगों को बहुत दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज 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 फ्रेंड्स, नेवर टेक योर सेल्फ और योर बिजनेस फॉर ग्रांटेड। You are gems of this country. You are the chosen one who are going to make a difference to the society. And that's why whosoever is not a startup and still here in this Zoom call, they respect you. Right? Okay. So एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि ये भी है, राजन आप थोड़ा सा इसको फनी वे में भी कर सकते हो कि क्रिकेट मैच भी इंडिया ना हारे ऐसा हम चाहते हैं, तो लड़ाई कैसे हार जाए यार? छोटा सा क्रिकेट मैच भी अगर है, वो भी इंडिया ना हारे ऐसा हर इंडियन चाहता है, लड़ाई कैसे हार जाए यार? तो इसी वजह से दिस जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल। ऐसे आप अपने हिसाब से बहुत सारे क्रिएट, सी आपके पास ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड में 4 या 5 या 6 लाइन होती है बोलने के लिए। अगर आप उसको अच्छे से बोलना चाहते हो, ठीक से, जिससे कम्युनिकेशन हो सके, तो उन 5 लाइन का आप सबसे अच्छा क्या यूज कर सकते हो, वो सोचो, ठीक है? ओके, बट राजन, आई मस्ट अप्रिशिएट
that the fact that you brought in is ultimate fact. So you've already done your homework, and my compliments to you on that. Super. Chaliye, Akanksha, I think you are the only one left now who's a startup. Most welcome, Rajan. Yeah. I'll start. Normally, you must have observed that students and children, they are more engaged in movies and games rather than their study. And according to a research paper by Harvard Gardner, there are 7 intelligences which cater to learning, which is musical, kinesthetic, and logical, writing, and audio. And our game caters to most of the intelligences, and you can download. Our prototype is for mathematics standard 10, which also includes creative lesson plans for teachers to make their classrooms more lively and engaging. Super, super. So ये आकांक्षा ये बहुत ही बढ़िया था, बट अगर मैं आपकी जगह होता तो सबसे पहले तो मैं ना नॉर्मली से शुरुआत नहीं करता. Okay. Because when you start speaking, your conversation starter अगर normally है तो it will not grab your attention. But if I start with, did you know that there is a guy called Harvard Gardner who said, you know, एक फोर्स है, did you know, क्या आपको पता है कि एक बंदा है जिसने ये बोला है. एंड फिर मैं इतना डिस्क्रिप्टिव मैनर में जाता ही नहीं. अच्छा. मैं सीधा यही बोलता, did you know that Harvard Gardner has said that 7 signs or 7 things that impacts the kids learning and so, and we have something which impacts most of the these things out of this 7, you know. So मैं अब दूसरा आपने क्या किया, आपने टीचर के क्लासरूम को इंटरेक्टिव बनाने वाला भी इसी 30 सेकंड में बोल दिया, बच्चों की लर्निंग के लिए भी इसी 30 सेकंड में बोल दिया, आपका ऐप मैथमेटिक्स का है वो भी इसी 30 सेकंड में बोल दिया. मैं आपको कहूंगा ये तीनों को मेन सेंटर में रख के 30 सेकंड्स बनाओ. लेकिन सर मेरा जो ऐप आपने 30 सेकंड्स ही दिया मुझे. हाँ, मेरे ऐप में दे रहा हूँ चीज है ना, तो फिर मैं कैसे, उसमें तो कम होना चाहिए ना, आपने तो ज्यादा बोल दिया. मैं वही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बच्चों के लिए एक 30 सेकंड बनाओ, टीचर्स के लिए 30 सेकंड बनाओ, एंड स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए 30 सेकंड्स बनाओ. लेकिन वो तीनों एक में ही है ना, एक ही एप्लीकेशन. अब वो तो सब एक में ही है ना, तो दुनिया एक ही है ना. नहीं, लेकिन मुझे पिच करना है तो मुझे अब ये प्रेजेंट करना है व्हाट वी आर ऑफरिंग, राइट. हाँ, पर आप क्या पिच जनरलाइज करोगे कि स्पेसिफिक लोगों से पिच करोगे? Because when we are meeting the teachers, we can tell. पर आपको 30 सेकंड ही मिलने वाले हैं ना. आप, हाँ, अगर यही चीज आप 1 मिनट के प्रेजेंटेशन में या 5 मिनट के प्रेजेंटेशन में बोलते कि पहला पॉइंट हाउ इट हेल्प्स चिल्ड्रन, दूसरा पॉइंट हाउ इट हेल्प्स टीचर, थर्ड अबाउट द एप्लीकेशन, तो उसमें 5 मिनट दोगे तो आप जस्टिफाई भी कर पाओगे. ये तो आप ही को प्रेशर रहेगा कि इतने फीचर्स तो मुझे 30 सेकंड में क्रिएट करने ही है. And that pressure only made you speak कि सर आपने मुझे सिर्फ 30 सेकंड ही दिए थे. Are you being able to relate to it? I am being able to relate, but I am not able to understand how then I should go ahead. Meaning, if I get an opportunity, what should I include and not include? हाँ, वो एक तो चीज ये है कि वो हम जब 1-to-1 करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे. However, you know, आप ऐसे भी कह सकते हो कि a survey says that given a choice, 89% of the children of India would choose to opt out to learn mathematics. The only reason is that learning maths is not interesting. We make it interesting and we ensure that your child will learn mathematics while playing. If you want to know how, contact us. इसमें आपने कुछ और नहीं बोला है, सिर्फ बच्चों के लिए बोला है. फैक्ट भी आ गया. Does this make sense? Yes. This अब मुझे इतने सारे स्टार्टअप्स का कैसे पता है? मैं तो सबके 30 सेकंड्स बोल रहा हूँ. क्योंकि आपने वो किया होगा NOPP. नहीं, NOPP नहीं. This is just experienced. This is just experience. You have to train your brain to do it. राइट. सो ये मैंने आपको 30 सेकेंड्स दिए. आप 30 सेकेंड से अगर 1 मिनट में जाते हो तो फर्क क्या पड़ता है ये मैं आपको बता रहा हूँ. अगले
4 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 3 to 4 minutes, राइट? सो अगर 30 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर जाते हो, देन ओनली इंक्रीज योर कंटेंट बाय 1.5 times. 1.5 गुना बनाओ, दुगना कंटेंट मत बनाओ, राइट? और बाकी जो टाइम आपको मिलता है ना 1 मिनट में, उसमें क्लाइंट के लिए कुछ ऐसा क्वेश्चन रेडी करो कि वो बोलने पे मजबूर हो जाए, कुछ ना कुछ बोलने पे मजबूर हो जाए। समझ में आ रहा है? हाँ, मेरे टूथपेस्ट में नमक है क्या? आपके याद है? समझ में आ रहा है? हाँ, ओके। सो 1 मिनट में 2 चीजें ध्यान रखो, कंटेंट को दुगना मत करो, 1.5 गुना बढ़ाओ, यही तरीका यूज करो, और प्लस एक क्वेश्चन या एक ट्रिगर ऐड करो, तो वो आपका 1 मिनट का प्रेजेंटेशन बन जाएगा। When you make a 5-minute presentation, always be prepared and be ready to have specific points. मैं आपको कहूंगा, अगर 5 मिनट का प्रेजेंटेशन आपको करने को मिलता है ना, then do not share more than 3 to maximum 4 points which are the USP, unique selling points or unique features of your organization. आमतौर पर हम क्या गलती करते हैं, 5 है ना, सबको 1-1 मिनट दूंगी या दूंगा, 5 पॉइंट तो मैं आराम से बोल दूंगी। नो, 3 या मैक्सिमम 4 पॉइंट, बिकॉज आप वेलकम, थैंक यू, ये भी करना है हमको, इन बिटवीन थोड़ा आपको टाइम भी चाहिए। 3 या 4 पॉइंट को बट बहुत ही प्रिसाइसली उसको कवर करो, एंड उसके बाद सी प्रिपेयर फॉर 4 to 5 points, प्रेजेंट 3 to 4 points, and then बाकी का जो टाइम बचता है, you can say that I am open for any question and queries. अगर वो नहीं पूछते हैं, then tell them if you don't have a question, I've already prepared another 1 or 2 information that I think would be helpful for us to come to a common consensus. करके एक और पॉइंट रख दो। समझ में आ रहा है? Are you with me? So 5 पॉइंट रेडी करो, 3 प्रेजेंट करो, डेप्थ में प्रेजेंट करो, उसके बाद क्वेश्चन पूछो और चुप हो जाओ। अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो 4था पॉइंट, अगर उसके बाद भी टाइम मिल जाता है तो 5वां पॉइंट। Are you with me? Sir, I just had one doubt, sir. Yeah, Satyaki. Can we start, as you just said, no? Can we just start with a question to them? Like when you were just speaking, like if I'm just meeting any of the clients, right? As you said, this was really nice. As you said, the 30 seconds. But can you at time start, like suppose if I'm having a digital lab, right? So like if I just start, okay, sir, good morning, sir. So like in this school, do you use any of the digital platforms, or are you using any of the apps? So can I start off with like this, or should I be like, just 30 second speech? हाँ, अगर 30 seconds है ना, तो क्वेश्चन मत पूछो। Okay, yeah, because आप 4 या 5 या 10 सेकंड में क्वेश्चन पूछोगे और बाकी की 20 सेकंड आपको मिलेगी ही नहीं फिर। राइट, ओके सर। राइट, अगर आपको लंबा प्रेजेंटेशन मिला है और तब भी अगर आपको क्वेश्चन से शुरू करना है, तो क्या आप यूज करते हो, ऐसा नहीं पूछना चाहिए। हमको ये पूछना चाहिए कि क्या ऐसी कुछ चीज हमको यूज करने को मिले जिससे स्कूल की एफिशिएंसी बढ़े, टीचर्स ज्यादा एंगेजिंग क्लासरूम क्रिएट कर सकें, और बच्चे सामने से अपने मम्मी पापा को बोले कि मुझे तो इसी स्कूल में जाना है। अगर ऐसी कुछ चीज मिलती है तो क्या आपको लगता है हमको इस स्कूल में यूज करनी चाहिए? राइट, That should be the correct question. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? है ना? So ये सारी चीजें हैं और इसमें आपको बहुत काम करना पड़ेगा। Let me give you a promise and a commitment कि मैं और पयंक सर we are all here available for you. हम लोग ये सेशन 12वां सेशन खत्म होने के साथ ही विविध भारती की तरह ओके टाटा बाय बाय करके निकलने वाले नहीं है। हाँ, आप हमको प्राइवेट रेडियो चैनल की तरह ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, फोन पे फॉलो कर सकते हो। आप हमारे साथ कांटेक्ट में रह सकते हो, एंड वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू कंट्रीब्यूट टू योर सक्सेस जस्ट लाइक एवरी अदर मेंटर। सो एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूं, हम जब नेक्स्ट टाइम मिले तब तक प्रिसाइसली 30 सेकेंड सब बनाएंगे अपनी, 1 मिनट का प्रेजेंटेशन अपना बनाएंगे। गुड मॉर्निंग दृष्टि,
30 सेकेंड्स बनाएंगे, 1 मिनट का स्क्रिप्ट बनाएंगे, और अगर हो सके तो 5 मिनट में कौन से 3 पॉइंट वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए शेयर करना चाहेंगे वो बताएंगे, राइट? एंड व्हाट आर द टॉप 5 पॉइंट्स? तो 3 याद है ना, 5 मिनट में 3 पॉइंट शेयर करना और 5 के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो प्रिपरेशन वाले कौन से 5 पॉइंट होंगे, आउट ऑफ विच कौन से 3 आप शेयर करना चाहोगे, राइट? सिर्फ ये 3 चीजें करनी है। 30 सेकेंड्स एक बार फिर से अच्छी बनानी है, 1 मिनट अच्छा बनाना है, स्क्रिप्ट बनाना है, और 5 मिनट के लिए पॉइंट्स। दैट्स इट। I hope I am not expecting too much out of you people. You will be able to schedule this in your next week? Yes? Okay. So, okay, we have a presentation on 23rd this month. Can I request you review my presentation? Rajan, Drashti, ये question आया है मुझे personally that can you review? So, what's your take on it? How can we help, Rajan? It's on 23rd. Rajan, time communicate हुआ है? Any communicate? Sir, if possible and convenient for you, tomorrow evening, if you can, we can have a short 20-30 minutes interaction and we can just pitch it to you. Because sir, અમે અહીંયા 4 જણ છી, હું, રાજન, દિવ્યરાજ અને ધ્રુવભાઈ, અમે 4 જણ છી, ચારે ચાર એક સાથે એક જ જગ્યાએ પ્રેઝન્ટ કરવા જાય છી, અને ગઈકાલે ચારે ચારની બુક ગંધી ધોવાણી છે. સમજી ગયો, હું સમજી ગયો. એટલે તમે બધા ચાલુ ગાડીએ બેહી ગયા, બાકીના ત્રણ. બહુ ઉસ્તાદ છો આળવ, કાંઈ વાંધો નહીં. ઓકે, સો 22nd ના 22nd એટલે કાલે ને બપોર પછી થઈ શકે સર? તમારું કઈ રીતે? બપોર પછી થઈ શકે, 3 o'clock પછી. Fair enough. So let's do. Never let an opportunity go, Rajan. तुम यार इंद्रासन को एकदम से हिला रहे हो. हमको लग रहा है कि नेक्स्ट स्टार्टअप प्रोग्राम में फैकल्टी हम नहीं होंगे, राजन होगा. Okay, just kidding. But yeah, so what you can do is you and Drashti and your mentor, whosoever is your mentor, you can decide among yourself. And Drashti is a great communicator, so she will let us know as to when on 22nd after 3 we are supposed to meet over the Zoom call. We'll be happy to contribute. Okay? Okay. I'll get back to you, sir. Please, no issues. Okay, अब लास्ट एक चीज मैं कहना चाहता हूं बिफोर वी एंड दिस. मुझे सिर्फ 2 नंबर्स फटाफट से टाइप करके दो ना कि बिफोर दीज 2 सेशन व्हाट वाज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट कम्युनिकेशन ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10. बिफोर दिस सेशन, ये जो 2 सेशन कम्युनिकेशन के हमने लिए ना, इसके पहले कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट में ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 व्हाट वाज योर अंडरस्टैंडिंग, एंड आफ्टर दिस 2 सेशंस व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट कम्युनिकेशन ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10. सो एक नंबर स्लैश दूसरा नंबर या कॉमा दूसरा नंबर. पहले 5 था, अभी 7.5 हो गया. पहले 4 था, अभी 8 हो गया. सुपर. किसी ने और भी लिखा है, क्या लिखा है? 6 था, 8 हो गया है. ओके, I'm waiting. देखो, जल्दी अगर जूम कॉल एंड करना है तो जल्दी रिस्पॉन्ड करो. ओके, 6 था, ध्रुव बोल रहे हैं 8 हो गया है. वेरी गुड. एंड बिलीव यू मी गाइज, ऑल क्रेडिट गोज टू यू, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, इस तरीके से इतना लंबा बैठना इज नॉट अ जोक. एंड ये तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है विदाउट प्रैक्टिस. जस्ट इमेजिन, अगर आप इसको 2-3 महीना प्रैक्टिस कर लोगे जो भी आपने सीखा है, तो आप कहां से कहां पहुंच जाओगे. 5 का 8, 4 से 7.5. पयंक सर सबको बोल रहे हैं सैल्यूट टू ऑल पार्टिसिपेंट्स. एग्जैक्टली राइट. So I hope even today, just like every session, you have enjoyed and you have specific takeaways from this session as well.
तो यहाँ पे हम लोग हमारा सेशन दृष्टि विथ योर परमिशन हम लोग कंक्लूड करते हैं एंड वील अपडेट यू ऑन द सेकंड दिस थिंग। या दृष्टि बोलो, आपने अनम्यूट किया, मुझे लगा कुछ बोलना चाहते हो। ओके ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग बैक फॉर सो लॉन्ग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।